Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. 24 ನಿಮಿಷ Hello. Welcome to King Sports. 6 ಓವರಿಗೆ Subscribe to 1 the ನಿಮಿಷ channel and ಗ್ರೇಸ್ press ಟೈಮ್ the ಅಂತ bell icon for ಕೊಡಲಾಗುವುದು. recent updates. ಸೊ 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರ್ ಅನ್ನು Hello. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. Welcome to ದಯವಿಟ್ಟು King ಗಮನಿಸಬೇಕು. Sports. ಎರಡು ತಂಡದ Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Number 2. I Subscribe request to the opening channel. batsman, please go for bat immediately. Hello. OFC ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. NFC ಕರೆಕ್ಷನ್. NFC ತಂಡದ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ NFC ಬಜ್ಪೆ ಅದರಲ್ಲಿ D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ NFC ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. NFC ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. D2 ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So that I request the extra player of Ulaibetu. So Riaz will go into start the proceedings of
for the day number 2 of this prestigious cricket tournament, and Nazim is the batter, will going to face his first delivery, and Fayaz is the batter, will going to be the non-striker. So time is exactly 10:42. The time which is noted 10:42. The first ball is a wide call by umpire. So once again the bowler back to his bowling mark from the far end, right arm round the wicket to Nazim. Nazim this time, oh, lovely delivery, beautifully bowled, but unfortunately ball is going towards backside, almost in the declared area. After hitting his legs, ball deflected from the leg, and leg by call by umpire. 2 extras to start with, and umpire asking for a new ball. I request volunteers, please give that new ball. Thank you. So 2 on the board without loss of any wicket. The bowler Riaz getting some extra pace after getting a wide ball for the first ball. First ball is as a wide. The second ball is right on the money, right on the target. It creates a problem for Nizam. Right arm round the wicket. Riaz away from us. Bowls going for the big shot. Excellent work behind the stump. And the lovely piece of work there from Rafiq behind the stump. And it's a one more, the very good wicket keeper, the batter. As far as the present cricket is concerned, it's not so easy so to collect the ball when ball is going outside the line of leg stump. It's so easy for the wicket keeper to gather the ball when ball is outside the line of off stump. But when it's outside the line of leg stump, I think it's a very good collection behind the stump by Rafiq, and there is no chance at all for any run. Score remains on 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Again Riaz away from us, right arm over wicket, going for the big shot, got inside edge of the bat, going for a run, but they're going against, seeing the fielder is very close to the fielder at short fine leg division, so there no question of any run. Good comeback here by Riaz, and the bowler batsman Nazim little bit struggling. Of course, I know that is a power play overs. He wanted to get a big shot, but Riaz is not settling the batter for the big shot by bowling some very tidy line and length. Deep wideish long on, long off, straight long off the fielders in the deep for the batter Nazim. Riaz again bowling away from us, right arm round the wicket balls. Again, they're going to be a wide. This is the second wide of this over. With that extra scoreboard Namuzan to 3 on the board out of 3, 3 extras. All the runs are in the extras. 2 wides and 1 leg buys. 3 without loss of any wicket here in over number first in progress. Riaz once again back to his body mark. Pass umpire Iqbal, and at the square leg Nasir Bajal. Beautifully bowled, perfect one, absolutely great line in the day. And Nazim again struggling. Whenever the bowler bowls a good line, Nazim is struggling. He's not really understand what kind of line. Might be is not getting that the line properly to hit the ball. The little bit moment of the feet where he was standing, tried to hit the ball, and the scoreboard is remains on 3 without loss of any wicket here in over number first in progress. Riaz again now bowling away from us, round the wicket delivers. Again going for the mighty shot, again without coming to the line of the delivery. He's just attempting the blind shot and pays the penalty for that. And now his partner Fayaz is walking towards the middle. Need to be, when your partner is not getting the ball from the bat, need to say something about it. Why you're looking for the big shot? If you're not able to hit the ball, you can get the single. You can push the ball here and there. I will go into deal with the remaining deliveries. And a little bit presence of mind is so important for the batters. Of course, you're in a power play over. Of course, it requires some big shot. But when bowlers bowling good line, they need to change your technique and strategy. And here is again Riaz. Balls beautifully bowled. That's again appeal for leg before wicket. Ball pitched outside the line of leg stump. Rightly so, umpire Iqbal. You know exactly ball going to hit the middle stump. But the fact that is bowling round the wicket, and then ball almost pitched a little bit outside the line of leg stump, and rightly so, umpire says no. Leg by given. 4 runs came from that over. Tidy over there from Riaz. The kind of over which is required from opening bowler. Absolutely fantastic over there from Riaz. Excluding that 2 wide balls, is bowled great line and line. And all the runs came in the form of extras. 2 wides and 2 leg buys.
That shows the Ria's line and length is maintained and the kind of over which is required. I request once again the fielding team. We are already mentioned about 25 minutes. You need to complete your 5 overs quota. And our scorer and statistician will go into note each and everything. You took 5 minutes for 1 hour, 10:42, which is time you have started. Now with the 10:47, and please make it fast because 4 minutes, which is for 1 hour. So bowler Rashid will go into ball the second and last over of the power play, and the batter Nazim. Again the problem continues here. Again the ball deflected from the leg, so that leg by call by umpire. Morning exercise here for Nasir Bajal. So just lifting his legs and getting some exercise, giving the decision towards our scorer. Leg by, and scoreboard is 6-5 on the board. Fayaz is on strike. Beautifully balled again around the legs. Good collection there from again from Rafiq behind the stump. So good in collecting the ball outside the run flag stump. Again, it's a very difficult delivery to gather the ball. And again, the bowler bowling from the this time again going for the sweep shot of arted a field there from bowler. No, exactly that ball pitched outside the run flag stump. Opportunity is so less when you're bowling around the wicket, along the carpet. The first impact of the line is outside the line of leg stump. That's why umpire not interested. This time tries that one again, finds a gap, but protection is given in the deep mid-wicket region, so that Fayaz has to settle for the single. First run came from the bat and of opening batters after taking 1 over 4 deliveries. They took taken for that first run from the bat. That shows the accuracy of line and length from the bowler. Beautifully ball. Look at the line and the pace. Outstanding. The ball is not really getting actual balls are skidding in the ground and along the carpet. That ball is bowled very nicely. Again, wicketkeeper behind the stump. Outstanding work. Wide call by umpire. Again, the wicketkeeper Rafiq is looking so good today behind the stump. In just a blink of eyes, he completes the job. But here is umpire. A little margin for error for the bowler to bowl that outside the line of leg stump, and rightly so. Umpire, no hesitation at all to call the wide. Extras really helping the opposition team. Its scoreboard is 7 on the board for the loss without loss of any wicket. Fayaz and Nazim are the two batters for NFC Bajpayee to get some good start, but so far I think it's a slow start from these two opening batters. Right arm round the wicket balls. This one tries that one right in the gap between bowler and mid-off. Protection is there in the deep long off region, so batter have to settle for the single. With that single, scoreboard numbers on to 8 on the board. 2 overs completed after completion of over number 2. Searching for the right track. You two, because NFC are searching for the right track, and they got only 8 on the board. This is a better over actually, as far as the time which is taken for that over, only 3 minutes, and very quickly that bowler is completed it that over. Rashid, within 3 minutes they complete it, and altogether they taken 8 minutes for 2 overs, and that means they are on a time. Now both the batsmen are walking, I don't know for what, and batters, please note that, please don't waste the time, go quickly. Water break only the time of fall of wickets. You don't go without the permission of umpire. Please note that. Please make it past Diamond Ali. Batters now Rajesh Bega. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Riaz to ball this second over and is outstanding in this first over. Just 4 runs conceded and 1-2 leg by and 2 wides. That means leg by will not go into the account, but certainly the wide will go into the account of bowler
And a short fine leg, short square leg, short mid off, short mid on, in fact. Deep mid wicket, deep long on. Long off is there, deep extra cover. Backward point, short mid off, short fine leg. After this match, second match will be played between match number 2, Jolly Friends Bajal versus NWC Karavali Pade. So that I request both the teams please report here immediately to sign the official chart. The first ball right on the money, just like what he did in the previous over, and the same kind of line, and is creating the problem for Nazim. Nazim so far played a lot of dotted deliveries, and number of dotted deliveries faced is 9, and only 1 run which is scored. And here is a bowler again, Riaz. Right arm round the wicket, passes umpire Iqbal. Second time. Balls. Again, wicketkeeper behind the stump, so good. But umpire, no hesitation to call that wide, rightly so. With that extra scoreboard, Namuzan to 9 on the board. This is the one area what Riaz need to be a little bit work out. It was the previous over, he bowled 2 wide deliveries. But this time also 1 wide. Right arm round the wicket to Nazim. Balled him, cleaned him up. This is the result of frustration. And nowhere near the pitch of the delivery, isn't it? What kind of shot is trying for? Ball on the middle stump, across the line of the delivery. Try to swing that one, misses it completely. Even the change of bat will not really work out here for Nazim. And more than the change of bat, need to change the technique is so important. Changing your technique is so important. Every time looking for the big shot without seeing the line of the ball, and he just faced the penalty for the struggled innings. This comes to an end of Nizam, and he scored only 1 run out of 11 balls. That means he's consumed almost 2 overs, and it's always going to be disaster when you are playing a 6 overs format of a game. You're wasting 11 deliveries, means it's a huge loss for a batting team. And the recovery time is still there for the batsmen of NFC, and wait and see how well they will going to come bounce back as the new batter Shahif came into middle, takes a fresh guard from umpire. Riaz will go into ball the next delivery. Successful bowler for the side of team D2M boys, Ulai Bittu. Around the wicket, again the bowler with a short run up. Right arm. Balls again, nicely balled. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Right on the money, right on the target. Almost in the mid leg stump. And batsman quite interestingly, quite difficultly, he faced Sahif to face that ball, which is on the midland leg stump, but managed to get the single for that with the single scoreboard. Namuzan to 10 on the board. I request the batsmen, so every time having a word, we are waiting a time. Riaz again. Bowls to Fayaz. This time nicely swept that one right between the fielder and they will running hard for the second, and they made it quite easily in the end. Good placement there from Fayaz. And Fayaz unfortunately didn't got enough strike in the last 2 overs. His partner is getting most of the strikes. This time he swept the ball. I think it's a very good technique to play the deliveries which is bowled by Riaz along the carpet and round the wicket in operation. Sweeping the ball is very important rather than going for the big shots. And scoreboard is 12 on the board. Over number 3 in progress. Riaz again bowling with a short run up. Right arm round the wicket delivers to Fayaz. Fayaz this time clever cricket. Once he wanted to play the reverse sweep, and quickly realizing that the bowler bowling outside the line of leg stump, so he just went with the stroke, just like a left-hand batsman steering the ball down to third man region. And warning number 1 is been given to Riaz by umpire Iqbal, because he's coming right in front of umpire. That was a protected area, the danger zone. As far as the cricketing word is concerned, the danger zone need not come after delivering the ball. Again, just say to the hands of fielder, but they run very quickly, and so that they managed to complete the single. One more single as a total. One more over which is completed. After completion of over number 3, searching for the right track, struggling in the middle, and NFC Bajipes managed to score 14 on the board. 14 for the loss of 1 wicket. Time is exactly 10:56. That means 14 minutes which is taken for 3 overs, and they need to complete your another 3 overs within 10 minutes.
11 minutes you need to complete. Please note that. You need to make it very quickly. Fielding team ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. 3 overs completed and before the next over going to start, it's over to Mr. Gopi to take over the microphone, my friend. And good morning, Gopi, and bright sunny morning, just like what we had yesterday. The same weather condition, but compared to the last day, I think the high voltage matches, the main teams which is participated, but here is a local team now. But still, I think is a very good day for cricket, and of all the teams will go into fight. Very healthy fight we are expecting from all the teams. The day number 2. And it's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. Indeed, thank you. वेरी गुड मॉर्निंग सतीश और सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, इस YFC ट्रॉफी 2023 सीजन 2 श्रृंखला का दूसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और इस वक्त परीक्षार्थ समय बीतता हुआ इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर NFC बचपे के। और जहाँ तक सवाल है 2M उलाई बेट्टू के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, तो यहाँ पर चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। सिर्फ 14 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता है। हालांकि एकमात्र विकेट जरूर गिरा निजाम के नाजीम के रूप में, लेकिन सिर्फ 14 रन पहले 3 ओवर में बनाने में सफल रहे हैं बल्लेबाज NFC बचपे के। और 3 ओवर में बचे हुए 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन उन्हें बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना दिया। गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए D2 उलाई बेट्टू के नौफल। फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए और वापस अपने स्थान पर लौटते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, जमीन के सहारे आई, गेंद को हल्के से पुश किया रक्षात्मक तरीके से। जब तक फॉलो थ्रू में गेंदबाज अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर NFC बचपे। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद टॉप एज, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर बेहतर फील्डिंग, रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो काफी धीमा, नॉन स्ट्राइकर रन पर पहुंचता हुआ। और इससे पहले बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। अपने पैरों के जरिए बेहतर तरीके से गेंद को रोका था इस वक्त फील्डर ने स्लिप डाउन क्षेत्र पर और एकमात्र रन बल्लेबाज इस गेंद पर प्राप्त करते हुए 19 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को बॉडी के स्टंप्स को कवर करने के बाद शॉट्स को लेकर दिशा में 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। स्टिल द बैट्समैन ऑफ NFC बचपे 11 इस वक्त बच चुके हैं, 18 मिनट यहाँ पर बीत चुके हैं। 7 मिनट बाकी है बचे हुए 2 ओवर से पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ गेंदबाजों से कि बचे हुए 7 मिनट के अंदर अपने बचे हुए 2 ओवर को पूर्ण करें। It's 20 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. 2 overs left in overall calculation in their innings.
ನಿನ್ನೆ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರ ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರ ಪರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It's 20 for the loss of 1 wicket. 4 overs completed, 2 overs remaining in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. The next match, Jolly Friends Bajal will takes over NWC Karavali Bittapade. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box and हनीफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ एनएफसी बजपे की बारी में. डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन. इस वक्त डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग. इस वक्त जो 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर गली से लिमिट ऑफ, से लिमिट ऑन और शॉट फाइन लगे इस वक्त तैनात. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर ठीक स्टंप्स के अति निकट इस वक्त खड़े हुए अब बैठ चुके हैं. और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट कॉट इज आउटसाइड ऑफ द बैट. गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ वो बदल सके. 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 1 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद फयाज और सईफ कुछ हद तक रक्षात्मक तरीके का खेल यहाँ पर अपनाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था. इन्हें तो ऊपर था विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. बेहतर कलेक्शन, क्लीन पिकअप और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद. गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. गेंद और बल्ले बैट का कोई संपर्क नहीं है और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. रन से अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए. जहाँ तक सवाल है चौके और छक्कों का, तो कोशिश इस वक्त जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज चौके और छक्के लगाने की, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है. और तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप कर दिया. इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई. गेंद वहां पर नेट पर टकराने के बाद थोड़ी सी मिस फील्ड होकर दोबारा वही फील्डर द्वारा फील्ड हो. बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा, फलस्वरूप बल्लेबाज के पास मौका 1 ज्यादा रन इस वक्त चुराने का. तो स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर. इट्स 25 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. और हनीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद अच्छी गेंद थी, जमीन के साथ है, स्लिप मिड ऑन की दिशा में रन आउट का खतरा इस बीच और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. फयाज इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. गेंद को खेला था जरूर लेकिन ठीक तरह से खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल. स्लिप मिड ऑन फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और बल्लेबाज ने रन से चुराने की जोखिम उठाई. भुगतान उन्होंने करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद और इसी के साथ 25 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है इस वक्त एनएफसी बजपे का. अगला मैच, द नेक्स्ट मैच, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, जॉली फ्रेंड्स बजाल विल टेक्स ओवर एनडब्ल्यूसी करावली बित्तपादे. एंड because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट के थ्रो करे. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन. दोनों आरंभकार को खोने के बाद 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 5 overs completed. It's 26 for the loss of 2 wickets scored by NFC Bajpe. And batted first against D2M Ulaibetu in the first match of the second day of YFC Trophy Season 2 2023.
और जहां तक सवाल है अंतिम ओवर का, तो अंतिम ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए रशीद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ एनएफसी बजपे की पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर रशीद इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद थी और बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द स्टार्ट ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची जब तक उनकी पारी में शेष। और इस बीच गेंदबाज रशीद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए पैरों पर गेंद टकराई और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ लेग बाय। और इस लेग बाय के रन के साथ the scoreboard is now moving up to 29 for the loss of 2 wicket in the over number 6 and the last in progress in their innings। और फिर से एक बार गेंदबाज रशीद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद खूबसूरती के साथ एक बार फिर से गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एकमात्र रन फिर से प्राप्त करते हुए बल्लेबाज और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनके पारी में बाकी। और रशीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार लेग स्टंप उखड़ कर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा लेग स्टंप के ऊपर जो गिल्ली था वो इस वक्त उखड़ कर गिर चुकी है और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। बिल्कुल जमीन के सहारे राउंड द विकेट गेंद को फेंकी थी अलोंग द कार्पेट, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बल्ले और पैर को वंचित करते हुए सीधे जा टकराए लेग स्टंप पर, गिल्ली बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिर चुका है तफसीर के रूप में। और 0 पर तफसीर आउट होकर पेविलियन वापस। तीसरा विकेट इस वक्त तीसरा विकेट का पतन हो चुका है 30 रनों के ऊपर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 2 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स। तो यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ सुमंत, द नंबर 5 बैट्समैन इज नॉट कम्स आउट टू द मिडिल फॉर एनएफसी बजपे। और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रशीद सुमंत के लिए अगली गेंद। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट पॉइंट, ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर रशीद इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, स्वीपर गेंद तक फील्ड करते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन और उनके निर्धारित ओवर 6 ओवर जो कि समाप्त हो चुके हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स एनएफसी बजपे managed to score 33 runs on the board for losing 3 wickets. Just 3 wickets they lost and they scored 33 runs in the stipulated 6 overs and now they set a victory target of 34 for D2M Ulaibetu. 34 D2M Ulaibetu have to score with the required run rate of exactly 5.67 runs per over. The required run rate for them 5.67 and with the help of 10 wicket they have to score for victory. The present equation shows for them and let's see can they read the target or not. 34 the target in 6 overs for them with the help of 10 wickets they have to score and their innings now going to start with an adjusted ball. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब D2M उलाईबेट्टू की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. Welcome back for the innings of D2M Betu. Of course, a very good bowling performance for NFC from D2M Betu to restrict NFC Bajpe for 33 runs and is set a target of 34 to win this match. And at last, I think NFC managed to bounce back with some clever cricket, especially Shaif is getting some runs for his team, 11 out of 12 deliveries. And even I think some contribution from Fayaz as well, scored 8 valuable runs out of 9 deliveries, and altogether they managed to get 33 runs, which is a total, one can say that is a fighting total, and you can fight with this total if bowls well, fields well. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. The starting time once umpire will going to give the decision. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ U2 D2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. D2M Betu, please send your extra players towards commentary box. Naushir is in strikers end and Rafiq is in on strikers end. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ NWC ಕರಾವಳಿ ಬಿತ್ತಪಾದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, it's going to be a big one. It's going to be a big one. I think it's gone all the way. Even the fielder in the deep long out of confusion tried his level best to clear that, to pull the ball inside the boundary, but ball just defeating that fielder. Outstanding cricketing stroke there from the batsman Naushir. The first ball he faced is clearing the boundary line. Magnificent strike. That was effortlessly played, isn't it? It's not so easy to take that kind of cricketing stroke, especially in this cricket ground. Getting a 6 has been outstanding performance, and just using the pace of the ball and picking that one right from the spot, lofted that one straight over that of the bowler for a huge 6. Again, a good comeback here by the bowler. Rifaz in the negation, a ball along the carpet and a little bit outside the leg stump, but the previous one is a flighted delivery on the slot. The batsman lofted that one brilliantly. Absolutely glorious shot there from the batter. Again, he tried to repeat that one, making a little bit room to play the shot. Inside out cricketing stroke, what now say is tried for, but again the bowler, good comeback, and Rifaz straight away is learned from the mistake. He just learned from the mistake, and he got good ball around his legs. Again outside, and again nicely driven down to square leg region, defeats the infield ball, running down to deep backward square leg region. Mid wicket fielder need to cut it off, and before the fielder, mid wicket fielder to run across this right to field the ball. Ample time for batter Naushir to get a couple of runs here, and with that couple of runs, scored Namozan to 8 on the board. The intention is very clear there from Naushir. You know exactly, it's a power play is on, only 2 fielders outside the circle, so that why can't give some aggressive strokes in this particular over. So far he's succeeded to get 8 runs of this over. This time outside the run of off stump, and going to be a wide at the last moment. Iqbal seeing the line of the delivery which is going further away. The full toss outside the run off stump. The batsman Naushir judged that one very well, seeing that ball is going far outside the run off stump. One more addition to total addition of that single scoreboard. Namozan to 9 on the board for the loss.
without loss of any wicket. Outside the run of stump, going to be one more wide. Highly indisciplined bowling performance here from Rifaz, because they're not depending a big total. Just depending 33 runs means you need to be very strict with your line and length. They needed to have a very good start from the bowling. If you concede some runs in the first over, it's very difficult for you to save the match. So far, it's a good going here. 10 on the board for D2 Ulaibetu. One more single to Naushir, going for the drive but got outside edge of the bat. Picked up a single. With that single, scored numbers on to 11 on the board for the without loss of any wicket. As I said earlier, both the batters, the left and right combination for the team Ulaibetu, the bowlers of NFC Bajpayee, they need to bowl some good line, strong line and length. But so far, I think the runs are coming very freely. And for D2 Ulaibetu. Rafiq facing his first delivery. One more fantastic, very experienced campaigner. The very good left-hand batters, especially the useful opening batters. And more than 15 years of experience in cricket. And wait and see how we'll go into bat. His first ball. And right arm around the wicket balls. Again, that ball is going to be one more wide. Good judgment there by the batter Rafiq, and Rifaz a little bit struggling to get his line and length. It's outside the run of off time. Ball is getting some deviation, extra turn. Because of the turn, ball is going away. And rightly so, batter not interested to play the stroke and left. That's a lovely shot, just up and over, down to deep cover point region. Fielder chasing the ball. Will the ball going to win the race? No, the fielder winning the race against that ball. Just a couple of yards before the boundary line, the fielder managed to cut it off. But here is both the batters running hard and complete that couple of runs. So fantastic over for team D2 boys Ulaibetu, and they scored 14 valuable runs in one first over, and that means a flying start here for the team D2 boys Ulaibetu. 33 to get 14 runs scored. That means another 19 runs required, 20 runs required in fact, to win the match in the remaining 5 overs. Sumanta will go into ball from the commentary box, and right arm over the wicket ball to Naushir. Naushir is batting on 9 with the alpha of 1-6. So starts with the wide. It's a problem continues here. Just like I mentioned about little margin for error. You can't do the mistakes when you're depending a small total. It's 15 on the board. 15. Sumant again. Wow, step that one straight to the hands of long off fielder. Now she is checking the stroke in the last moment, not giving any power behind the stroke, and just chip that one half-hearted stroke. He can clear the ground boundary line if he able to hit the ball just like what he did in the previous over. And is just half-hearted chip, costing a wicket here of D2 boys. Ulaibetu D2 boys lost their first wicket. Naushir, after scoring 9 runs, is back in the pavilion. But I think he did the job for his team, getting some runs which is really required here.
And the scoreboard is now stays on 15 for the loss of 1 wicket. So Karthik is a new batsman. Of course, Karthik is one more popular name as far as the cricket is concerned, not only from Kerala, Kasaragod district, but even in the South Kent district also is a very popular, is a very good cricketer, is a little master, but very clever cricketer, the intelligent cricketer. Karthik is came into middle. He will go into face his first delivery. Sumant, successful bowler, right arm over the wicket. This time, Trivan beautifully down to deep backward square leg region, between the mid wicket and deep backward square leg. Good piece of fielding there by the fielder. What could be a certain boundary? Because of excellent piece of fielding by the fielder at mid wicket. He just cut it off when the ball is going towards the boundary line, and inches before the boundary line, he managed to stop that one. And Karthik got a couple of runs here. Even Karthik's intention is very clear. You know exactly the playing that last over of the power play is a very safe stroke to play down at mid wicket and square leg, and picked up a valuable couple of runs with that couple of runs scored. Namuzan to 17 on the board for the loss of 1 wicket. The over number second in progress. Sumant will go into ball. I request the fielding team, please make it fast. And some long on fielder going towards a mid wicket region now. And there's a long off is there. Long off and deep mid wicket, straight long off. And again, Karthik will go into ball another delivery. Now, long on coming. There is no fielder in the offside region. Very interesting field. There is no fielder in the deep in the offside region. Karthik will go into face next delivery. Bowler, Sumant. Right arm over the wicket to Karthik. This time Karthik going for the reverse stroke, but I don't know what kind of appeal is going on. For what is the appeal is going on behind the stump and from the bowler, because nothing much has happened in that particular delivery. Batsman going for the reverse sweep, missing it completely and missing everything. The bat, pad, everything is missed out. But just an excitement rather than the confidence I feel there from a wicketkeeper as well as the bowler. Again, Sumant bowls to Karthik. Karthik this time going for the big shot. But this is wide. But this time Rafiq is so confident that it's always going to be his call. When ball is going towards behind, is always a non-striker's call, and that's why Rafiq is so confident he will going to complete that run. Couple of runs, and with that couple of runs, Kobo Namuzan to 19 on the board. 14 more runs, 15 more runs required for the victory. And the bowler is changing his angle, is bowling round the wicket to the left-hand batter Karthik, left-hand batter Rafiq, and there is a square leg mid-wicket, deep wide mid-wicket, and deep long on. Short third man backward point, short cover point, short extra cover mid-off. Again the bowler bowls round the wicket to Rafiq. Rafiq, that ball is almost passing between his legs. Rafiq, extra turn, the deviation here for the bowler, and good piece of bowling here from Sumant in that occasion along the carpet, and try to bring the ball from the outside the line of off stump into the batter, and he bowled a little bit leg cutter, but an in cutter for the left hand batter. This time going for the drive, top edge. Luckily that ball didn't carry to the field. So good piece of bowling there from Sumant. Is good comeback. And but still, I think they're a driver's seat. It's just the second over is in progress, and they got runs what they really wanted in this 2 overs, 19 already in the board. And again, Sumant bowling with a short arm, right arm round the wicket to the left-hand batter Rafiq. Rafiq drives that one nicely down to deep long on region. Protection is there in the deep long on, so that batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard numbers on to 20. Over number 2 completed. After completion of over number 2, chasing 34 to win this match due to looking in commanding position, and now they are 20, means 14 more runs required for the victory. 14 more runs required for the victory to win this match.
in remaining 4 overs. 24 deliveries and 14 runs required for the victory. And badly required one or two very good overs for team NFC to win this match. Bajpay, they need to bowl one or two good overs, some wicket taking deliveries, which is badly required. But so far, but you two are looking in a so commanding position. So third over will going to start from the commentary box end. There is the left-hand batsman is on strike. Short square leg, short mid on. There is a short third man, cover point, extra cover. Mid off inside the ring. The mid off going back to deep long off. So if the bowler is able to get a hat trick, then he will going to get a 500 rupees, which is announced by Sajid of Shark Boys. I request a bowler, please start the over. Already we have a lot of time we have taken for 2 overs. 11 minutes for 2 overs. Aziz bowling round the wicket to the left hand batter Rafiq is a striker. Will go into face. Again, going for the drive, got outside edge of the bat, and no question of any run. Aziz starts well with the delivery, which is outside and off stump, which is offered, of course, but Rafiq fails to make enough bat onto that. Going for the drive, got outside edge of the bat, and ball running down to short third man region, and there is no question of any run. This time again, lovely delivery. Again, Rafiq tried to steer that one on the offside region by doing that. The bat, which is almost in a straight angle, isn't it? When you wanted to steer that one, need to be a little bit, you need to bend a little bit, and your bat should be very close to the ground level so that you can steer the ball towards offside region. And this time, I think Rafiq has got a two mind whether go for the drive and going for the steer. By doing that, he is missing it completely. Shakir once again, Shakil announced 500 rupees of Shark Boys for this man to get the hat trick. The more than the hat trick, I think they needed one vital breakthrough if they wanted to back into this game. Aziz again bowling right arm around the wicket to the left hand batter Rafiq, and again round the wicket. This time reverse sweep, but again the lack of placement. Straight to the hands of short third man. 3 back-to-back dotted deliveries in this over there from Aziz. But nothing much worry about that dotted delivery. So far they got a very good runs on the board. And Rafiq is a kind of batsman, is a very cool and calm customer. Never bothered about how many dot deliveries he faced. He know exactly the condition of the game. Coming down the track, using his feet this time. Nicely driven down to deep long on. And little fumble there from the fielder, but they are not taking any risk at all. And with that single score, now moves on to 21. First run of this over, Aziz. After all, 2-3 dotted deliveries, first run which is came from the bat. And Rafiq is out of the strike. Rafiq is a multi-talented player. Not only is a very good cricketer, but he was a very good Kannada commentator as well. And more than anything else, he is a very good social worker. And that was really good to see some players. They are multi-talented. Not only they are engaged in cricket, but even it is good to see that the social work is very important. And Rafiq is the one is considered as one of the top wicketkeeper batsmen in the South Kent district, and got a experience of playing for some big teams. Especially his home team is a Divin Star Shanti Angadi. He represents. I request 2 captains, jolly friends Bajal as well as captain of NWC Karavali Bitpade to report here immediately to sign the official chart. Again, bowler bowls. Driven, lack of placement again. Good piece of fielding there by the mid-on fielder. Excellent over there from Aziz. Just a single run, the kind of over which is required for team
NFC Bajpay there, and after completion of over number 3, it's 21 on the board. Another 13 more runs required from 3 overs. 18 ball, 13 runs required for the victory. Still, I think U2, D2M Ulaibetu are in a driver's seat of winning this match, but everybody knows that it's a 21, 21, 21, 21. ಗೊತ್ತಾಣತೆ 21 ಓಕೆ 13 ರನ್ ಆಯರಂಡು 3 ಓವರ್. So before the next over going to start, it's the time for a change in commentary box as well. And 13 to get Gopi, and now 18 balls. Looks like D2 are looking in a commanding position, but Aziz is a man who really bowled well in the previous over, so that a little bit opportunities is created for NFC Bajpay to get back into this game. But I think the slow overing rate here from a fielding team, fielding team ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಬೇಡ, ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಗೋಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I request the captains of Jolly Friends Bajal and NWC Karavali Bitpade to please report to the stage immediately for toss. So fourth over starts. धन्यवाद सतीश. और 3 ओवर में इस वक्त चाहिए 13 रन विजय के लिए. 18 गेंदों पर पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप करना चाह रफीक ने. नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. इट्स 22 for the loss of 1 wicket now at the start of the 4th over. In fact 17 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए. डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त एनएफसी बजपे की गेंदबाजों को यहां पर कम बैक करने के लिए. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके और शॉर्ट फाइनल फील्डर के हाथों में गेंद. नॉन स्ट्राइकर रेट पर खतरा, लेकिन यहां पर अब अंपायर ने इशारा किया है थर्ड अंपायर की ओर. तो देखने वाली बात यह है कि जब वहां पर थ्रो पहुंचा था, विकेटें उखाड़े गए थे, तब कार्तिक का बल्ला बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं. तो तृतीय अंपायर यहां पर देखते हैं क्या निर्धार लेते हैं परिशीलन न करने के बाद. तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, जॉली फ्रेंड्स बजाल का मुकाबला होगा एनडब्ल्यूसी करावली बित्तपादे के बीच में. और इसलिए मैं दोनों टीमों के सदस्यों से दरख्वास्त, निवेदन, रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहें. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. तो उसके बाद तीसरा मैच खेला जाएगा यंग फ्रेंड्स अमेमार और एनएफसी अंगरागुंडी के बीच में. और पहले दौर का चौथा और अंतिम मैच खेला जाएगा नजर 9th ब्लॉक और दूसरे टीम के बीच में, बजाल टीम के बीच में. और देखते हैं, नॉट आउट इज द डिसीजन एंड ही सर्वाइव्ड. 1 रन सिग्नल 23 नाउ. 23 रन बन चुके हैं और कुल मिलाकर रन अब बनाने होने 11 और गेंदे बाकी हैं 16. तो रफीक एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं. इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद का सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्कूप किया. इस वक्त गेंद नेट पर टकराती हुई गली क्षेत्र पर 1 रन इस बीच मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर. इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4th इन प्रोग्रेस. तो 10 रन और चाहिए विजय के लिए और गेंदे बाकी हैं 15.
तो डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त कमबैक करने के लिए गेंदबाजों को, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी, ये गेंद कार्तिक के लिए, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर और लेग बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज सुमंत और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रफीक के लिए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूके पूरी तरह और इसी के साथ यहां पर रफीक का विकेट गिर चुका है। He just gone for a mighty one this time but not succeeded. The ball kept at the last moment, passed between his bat and pad and stuck to his leg stump. The bells are disturbed and that is the wicket number 2. So a struggling innings came to an end from Rafiq and a second wicket lost for D2M Ulaibetu. It's 25 for 2 in the over number 4 in progress. Last ball remaining in this over. तो नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। 25 for the loss of 2 wicket. 9 more runs now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. 13 गेंदें बाकी हैं, 9 रन चाहिए विजय के लिए और यहाँ पर एक कमबैक करने का सही वक्त है एनएफसी बचपे के गेंदबाजों को। इस मोड़ पर वो अगर चंद डॉट गेंदे और विकेटें, चंद डॉट गेंदे फेंकते हैं और चंद विकेटें उखाड़ते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर इस मैच में वापस आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है D2M उलाईबेट्टू का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए रन्स हर गेंद पर। तो देखते हैं आने वाले गेंदों में क्या होता है। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि सुमंत इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, वहां पर बेहतर फील्डिंग सिली मिड ऑफ पर फील्डर द्वारा। और इससे पहले की गेंद को वो लौटाए नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed. It's 26 for the loss of 2 wicket and still 8 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 20 overs with the required run rate of exactly 4 runs per over. तो कृपया मैं निवेदन करता हूं कि फील्डिंग साइड से कि मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच इमीडिएटली। आई रिक्वेस्ट द फील्डिंग साइड। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 के नाम पर। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए अजीज और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज, जो कि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं और 8 रन चाहिए 12 गेंदों में। 8 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 20 डिलीवरीज। और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अजीज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करते हुए पहली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद किस वक्त कट करना चाहता, बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बेहतर गेंदबाजी। इसी तरीके की चंद और डॉट गेंदों की जरूरत इस वक्त कमबैक करने के लिए गेंदबाजों को। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 11 गेंदें बाकी है, 8 रन चाहिए। 8 रिक्वायर्ड ऑफ 11 डिलीवरीज। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और अजीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, टॉप एज, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, स्वयं गेंदबाज गेंद तक
पहुंचे हैं और यहाँ पर देखना यह है कि नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची थी और विकेट कीपर दौड़ कर रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। कार्तिक दौड़ा स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई बल्लेबाज नहीं, दोनों बल्लेबाज एक छोड़ पर स्ट्राइकर एंड पर। आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त विकेट कीपर करते हुए और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। रियाज कार्तिक माफ कीजिए आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और धीरे धीरे तख्ता इस वक्त पलटता हुआ। 8 रन चाहिए, अब गेंदें बाकी है 10। 8 runs required in remaining 10 balls. The tide is now slowly turning. चंद और गेंदे, चंद और डॉट गेंदे कहना पड़ेगा एनएफसी बचपे को इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकते हैं और यहाँ पर नए बल्लेबाज के रूप में असरार नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त गेंदबाज को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए एनएफसी बचपे के कि किस सतर्क लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। असरार नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अजीज की गेंदों का। 10 गेंद बाकी, 8 रन चाहिए विजय के लिए। यह गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया, मिड विकेट पर क्लीन कलेक्शन, बेहतर फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। हालांकि गेंद फुल टॉस जरूर थी इस गेंद, लेकिन इस गेंद का भरपूर फायदा उठाने में सफल। गेंद को इस वक्त उछाल तो जरूर दिया था, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, वहां पर एक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए क्लीन कलेक्शन सीमा रेखा के अंदर उन्होंने गेंद को रोका। एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 7 टू गेट नाउ in remaining 9 deliveries. What a match is now going on here. और अजीज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। इसी तरीके का खेल इस वक्त दिखाना है बल्लेबाजों को। पहले ही भांप लिया था कि फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात है, रक्षात्मक तरीके से बल्ले और पैर के साथ लाते हुए विकेट को ढकेल दिया शॉर्ट कवर पर और तेजी के साथ 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छा रिस्पॉन्स नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा आता हुआ 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। 8 गेंदें बाकी, 6 रन चाहिए विजय के लिए। मैच में संघर्ष अभी भी जारी। अजीज दाहिने हाथ ओवर द विकेट रियाज के लिए। इस बार ये गेंद, इस बार उछाला, गेंद हवा में, पॉइंट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहता, थोड़ी सी उछाल अंतिम क्षण में गेंद ज्यादा ली, टॉप एज पर टकराई और आखिरकार पॉइंट फील्डर ने एक आसान सा कैच शॉर्ट पॉइंट पर लपका और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से होता है, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और आसान सा कैच इस वक्त लपकते हुए फील्डर शॉर्ट पॉइंट पर और इसी के साथ 28 रनों के योग पर चौथा विकेट गिर चुका। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नाउ 6 रिक्वायर्ड एंड 7 बॉल्स रिमेनिंग। द टाइड इज नाउ टर्निंग। पहले ओवर में जब 14 रन न बटोरे थे D2M उलाईबेट्टू के बल्लेबाजों ने, तब ऐसा लग रहा था D2M उलाईबेट्टू के बल्लेबाज आसानी के साथ 34 रनों के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर से एक बेहतर कमबैक करते हुए एनएफसी बचपे के गेंदबाजों ने शिकंजा कसा और आखिरकार यहां पर बाद के 3-4 ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। फलस्वरूप मैच इस वक्त बराबरी पर आकर रुक चुका है। तो 7 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 6 और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है राशिद इस वक्त और वो इस वक्त सामना करेंगे अजीज की ओवर की आखिरी गेंद का। और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई ठीक उसी तरह का क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ताइना तो द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को स्वीप करना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, रन आउट का खतरा हो सकता है स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तेजी के साथ विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा थ्रो को रिसीव करने के बाद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 29 for 4, 5 to get from last over, that means in 6 deliveries। और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है।
आज का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ। 6 गेंदे 5 रन। कृपया मैं निवेदन करता हूं कि मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। प्लीज कंटिन्यू द मैच इमीडिएटली। तो जब मैच शुरू हुआ था 11:16 हो चुके थे, अब 11:47 बन चुके। 31 minutes already you have taken to complete your 5 overs and now still last over remaining, and I request once again all the players please continue the match. तो 32 minutes already passed to bowl a 5 overs, first 5 overs of their innings, और अंतिम ओवर का खेल बाकी। 6 गेंदे बाकी है, 5 रन चाहिए विजय के लिए। और इस बीच पानी का ग्रहण खिलाड़ी इस वक्त करते हुए खेल, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और देखते हैं इस मैच निर्धारित ओवर कौन यहां पर गेंदबाजी करते हैं। और काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त दिया जा रहा है। So 5 runs required of last over and the ball is taken by the bowler. कमर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और कप्तान है, और देखना यह है कि कप्तान की भांति वो अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। इस वक्त मैच निर्धारित ओवर लेकर तैयार, और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए बल्लेबाज रशीद। कुछ बातचीत इस वक्त चलती हुई, और अंतिम ओवर लेकर कमर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। तो अंतिम 3 ओवर में सिर्फ 7 या 8 रन प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज, और फलस्वरूप अपनी टीम को बराबरी पर लाकर रुका चुके हैं इस मैच में। और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। 5 रिक्वायर्ड ऑफ 60 overs, that means in last over. And match deciding over starts. Left arm round the wicket. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन आउट, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट मिड विकेट पर। रन लेने की हड़बड़ाहट यहां पर बल्लेबाजों ने दिखाई, भुगतान उन्हें करना पड़ा, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। व्हाट अ ड्रामेटिकल ट्विस्ट इन दिस मैच। तो निस्संदेह यहां पर पहले ओवर में 14 रन बनाने के बाद बिल्कुल एक तरफा मैच यह लग रहा था, लेकिन उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया, और मैच अंतिम ओवर में अब बराबरी पर आकर रुक चुका है। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी पिछले 4 ओवर में एनएफसी बचपे के गेंदबाजों ने की है, और उस सफलता के सिलसिले को उन्हें इस अंतिम ओवर में भी बरकरार रखना है। किफायती बॉलिंग का, किफायती गेंदबाजी का, अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो। और जहां तक सवाल है इस वक्त D2 या मुलाई बेट्टू का, तो 5 गेंदों पर 5 रन बनाने और हर गेंद पर रन्स बनाना इस वक्त उनके लिए जरूरी बन चुका है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। कमर, नए बल्लेबाज फारूक, द मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 7 बैट्समैन। 5 नीडेड ऑफ 5 डिलीवरीज, और कमर एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तो कमर के लिए यहां पर एक इनाम घोषित किया गया। अगर वो मैच को जिताते तो 1000 रुपए नगद पुरस्कार नौशाद इनकी ओर से दिया जाएगा गेंदबाज कमर को। ये गेंद ड्राइव किया, मिडल पर मिसफील्ड, हड़बड़ाहट में मिसफील्ड करते हुए इस वक्त, वरना निस्संदेह यहां पर रन आउट हो सकता था नॉट स्ट्राइक रेट पर। तो 1 रन इस वक्त मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब यहां पर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। 4 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। What a fantastic match is now going on here. The pressure is now building up on both sides. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी, और कमर इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अंतिम 4 गेंद लेकर, यानी इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस वक्त
दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए कमर की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर कमर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह चुके, इस बार विकेट कीपर विकेट चटका चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर इकबाल इस वक्त उन पर कोई प्रभाव नहीं, तो यहां पर फील्डर जश्न मनाते हुए तो अंपायर इस वक्त बढ़ चुके हैं स्क्वायर लेग अंपायर की ओर और देखते हैं वो क्या इस वक्त फैसला करते हैं। तो यहां पर बातचीत जारी है, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है और अब तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो देखना यह है कि बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था नहीं, तो तृतीय अंपायर इस वक्त देखते हुए यहां पर नॉट आउट द डिसीजन केम और यहां पर डॉट गेंद गिर चुका है। 3 गेंदें बाकी और 4 रन चाहिए विजय के लिए। अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन हो चुका है D2M उलाइबेट्टू के लिए। तो यहां पर 3 गेंदें बाकी है, 4 रन चाहिए। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Sorry, 3 balls remaining and 4 runs needed for victory. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त बल्लेबाज अपना बल्ला बैट बदलने के बाद इस वक्त अपने स्ट्राइक रेंज की ओर पहुंचते हुए पिछला गेंद वो डॉट कर चुके हैं और देखना ही है कि इस गेंद पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। 4 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी और इस वक्त गेंदबाज कमर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फारूक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो यहाँ पर कुछ बातचीत अंपायर और खिलाड़ियों के बीच में चलती हुई और बातचीत इस वक्त जारी। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा। इफ द मैच एंडेड इन टाई विनर्स विल डिसाइडेड बाय टॉस। तो बातचीत इस वक्त जारी। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಬಚ್ಪೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ. So 3 balls remaining, 4 runs required and कमर कम्स अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट फारूक के लिए और यह गेंद कमर की, इस बार यह गेंद उछालना चाहा चूके एक बार फिर से इस वक्त विकेट उड़ाया था जरूर, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर यहां पर मौजूद हैं और डॉट गेंद यहां पर फेंकी गई है। तो 2 लगातार डॉट गेंदें इस वक्त बल्लेबाज फारूक खेल चुके हैं और यहां पर अब स्ट्रेट अवे कहना पड़ेगा दबाव, द प्रेशर इज ऑन बैट्समैन। लगातार 2 गेंदें इस वक्त डॉट पे खेल चुके हैं इस वक्त फारूक। 2 गेंदों में बनाने हैं 4 रन और निस्संदेह इस वक्त गेंदबाज से ज्यादा दबाव प्रेशर इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर। देखना यह है कि अगली गेंद पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। क्या वो लंबे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हैं, क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं सिंगल्स लेकर, देखना पड़ेगा अगली गेंद पर। 2 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए। 3 for tie, 4 for win and 2 balls remaining. If the match ended in a tie, winners will decided by toss.
And the second last ball of the match is now coming up. और गेंदबाज कमर इस वक्त फारूक के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त कमर की गेंद को इस वक्त खेलना चाहे लक्ष्य से बाहर वाइड का इशारा. अब 2 गेंदें रन से चाहिए 3. इस बार दिशाहीन गेंद फेंकी थी और बल्लेबाज फारूक ने देखा कि गेंद लेग से बाहर की ओर निकल रही है, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया और गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में. लेग से बाहर की ओर गेंद निकली. 2 गेंदें बाकी हैं, 3 रन चाहिए. 3 to get from 2 balls. 2 for tie, 3 for win. 2 balls remaining in their innings. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. बाएं हाथ इस वक्त राउंड द विकेट. ये गेंद ड्राइव करना चाहा, मिड ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा. बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं. अब अंतिम गेंद पर चाहिए 2 रन. 1 for tie and 2 for win. और एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहां पर किया जाएगा. तो अंतिम गेंद पर विजय अगर दर्ज करना है तो एनएफसी बचपे के गेंदबाज कमर को यह गेंद डॉट करनी होगी. और जहां तक मैच में अगर विजय दर्ज करना है तो अंतिम गेंद पर 2 रन बल्लेबाज को बटोरने होंगे जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है असरार. अगर 1 रन अंतिम गेंद पर बनाते हैं तो मैच टाई होगा और अगर मैच टाई होगा तो विजेता को टॉस के जरिए निर्धारित किया जाएगा. तो एक बेहतरीन मैच. What a fantastic match is now progressing here. दोनों बल्लेबाज इस वक्त बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और कुल मिलाकर 1 घंटा और 17 मिनट इस मैच में बीत चुका है. 1 hour 17 minutes passed in this match. The match deciding ball comes. The pressure building up on both sides. Here we go. Last ball, 2 runs. Here we go. This time, driven that one. Turn to long ball. In fact, they completed one. Oh, fumble there, and they come back for the second. They come back for the second. वहां पर कुछ पत्थर पर टकराने के बाद गेंद काफी उछाल ली, ठीक तरह से गेंद को जज नहीं कर पाया लॉन्ग ऑन फील्डर और गेंद उनको बीट करती हुई निकल गई इस वक्त सीमा रेखा की तरफ. तो अंतिम गेंद पर रोमांचक विजय D2M उलाइबेट 2 दर्ज कर चुका है एनएफसी बचपे के खिलाफ और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में वो प्रवेश प्राप्त कर चुका है. अगला मैच जॉली फ्रेंड्स बजाल विल टेक्स ओवर एनएफसी करावली बित्तपादे एंड दैट मैच स्टार्ट्स विद जस्ट शॉर्ट व्हाइल एंड विल बी बैक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ अंग्रेजी में जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. The man of the match, which goes to is a man who batted very well with 1-6, has scored 9 runs. Naushir, ದಯಮಾಡಿ ನೌಶೀರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನೌಶೀರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So welcome back for the match number 2 of this prestigious cricket tournament, YFC Trophy 2023 Season 2. And YFC Bajal Nanthoor organizing such a wonderful cricket tournament in association with the Little Kingdom Phones, Bahrain. So after winning the toss, captain of Jolly Friends Bajal elected to field first. Time will be noted now. 25 minutes ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12-5 the time and 12:30 you need to complete your 5 overs quota. First ball nicely driven by Mansoor down to deep long on region. Naufal lead progression and if that single Naufal is off the mark and even their team is also open their account NWC Karawali Bittapadi. So now Mansoor, next ball is outside the run of off time. Farooq bowled far away outside the run of off time, going to be a wide. The first extra for the innings of team NWC, and scoreboard is 2 on the board without loss of any wicket. Right arm over the wicket balls. Farooq again, good one. This time the chance of run out in the non-strikers and is gone. Oh my goodness, Mansoor is just jogging. I'm just really saying he's just jogging. He can run quickly to make that complete that run, but unfortunately he's finding himself short of case. He's not happy with his partner. The wicket number, the first which is back into pavilion. It's a 2 for the loss of 1 wicket. And the over number first in progress. A disappointment finish here for Mansoor. Facing his first delivery, ball is deflected from the leg. His partner wanted a single, and the Mansoor is the man. Is back into pavilion in the form of run out. The very good start here for Jolly Friends Bajal. Jolly Friends Bajal. They are the runner of Netravati Trophy 2023, the tournament which is played earlier in this particular cricket ground. And Mansoor who organized that cricket tournament, and Jolly Friends are qualified for the final, and they came into final and defeated by NM Cricketers Mangalore in the final. Outside the non-black stamp, going to be a wide, and with that 1+1 they're going to be a bonus run here for the team NWC. 4 on the board for the loss of 1 wicket. Bright sunny morning
The time is exactly 12 past 5. It's afternoon. It's not a morning. And it's very hot. Absolutely very hot. And just really, it's one a horrible condition out here. Is outside the leg stump. Going to be a perfect delivery. Well within the reach of the batsman and the batsman Prashant. Just watching the ball which is going a little bit around his legs, and wicketkeeper behind the stump in a fraction completes the job, and there is no chance at all for any run. Of course, Jolly Friends have won the match Netravati Trophy when it's 7 required from 1 ball. Then Tazuddin in the evening, last match of the day, Tazuddin hits a 6 and makes the match tight. And again outside the unflagged stump and going for the quick single. And the white call by umpire again, 1+1. It's absolutely disappointment here from Farooq. 1+1. A lot of runs which is conceded in the form of extras in this over. 6 without loss of any wicket. 6 for the loss of 1 wicket. All we can see, there's more than the bat. It's all runs which is came from 5 runs which is came from extra. Just 3 balls and 6 runs conceded. Right arm over the wicket, balls. Dries that one. Bowler's back dry. Bowler on his follow through. Farooq fields the ball. And just spreading his left hand towards the line of the ball, stopping the speed of that ball stroke. There is no chance at all for any run. Farooq again. Back to his bowling mark. Right arm over the wicket to the right-hander batsman. This time Naufal drives that one. Lack of placement. Straight to the hands of mid-wicket. Fumble from the fielder. So that the batter managed to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 7 in the over number first in progress. Farooq again. Away from us, right arm. Over the wicket balls. Again, the batsman drives that one. Prashant, not quite intended. He almost drags that one from outside the line of off stump. And warning number 1 has been given to the batter as he was running in danger zone in the pitch. So that Iqbal giving one warning for the batter. So first over completed, prolonged over, and after the completion of first over, it's 8 on the board for the loss of one wicket. NWC Karawali against team Jolly Friends Bajal. The local team, the playing their first match, and second over going to start from the commentary box. And Kiran brought into attack. It's a man who really played a very good game of cricket for his team in the Netravati Trophy 2023. Got a hat-trick and won the Best Bowler Award. But that tournament he represented for Red Wings Kunjat Bail. Now he's representing for Jolly Friends. And he's now playing for the opposite team. Of course, they played against each other. Now he's playing for Jolly Friends. That's the cricket, isn't it? And that's what you create. There is nothing called the opposition when you are coming to the cricket. The friendship is very important, and rather than the opposition. Of course, Red Wings, which is not taking part in this tournament, so that Jolly Friends asking Kiran to come and perform in their team, and Kiran performing very well so far. 2 balls, 1 runs. Kiran is a very quality bowler, and especially useful bowler in the power play overs, as he bowls left arm, right arm retribution over the wicket to Naufal. Naufal going for the big drive, not quite getting that one from the middle of the bat, inside edge of the bat, down to short fine leg division, so that Naufal managed to cross off for a single. With that single, scoreboard numbers on to 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Kiran away from us. Right arm over the wicket to Prashant. Prashant lofted handsomely, and he got a distance. Ball is landing just in front of our commentary box. Just picking that line and then so quickly and hammering it down to deep long out region. Nothing much wrong with the line of the Delhi. Just I want to see it in a replay. Look at that one in replay. The line is outside the line of off time. The batsman picking that one right from the middle of the bat. Prashant lofted over down to deep long on for a maximum, and the ball just landing in front of our commentary box. And a fantastic struck there from Prashant, and scoreboard jumps into 16 for the loss of 1 wicket
Kiran, little bit expensive as one delivery which is might be little bit short pitch outside enough of time, but perfect struck there from Prashant, and he played it very well from the middle of the bat. And here is again Kiran, right arm over the wicket balls, slower one, change of pace, driven that one firmly down deep long of region. Protection has been given. Mubir the fielder and the deep long of the experienced campaigner will go into field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 17 for the loss of one wicket. So those who are late tuned to your mobile and switched on your mobile for this particular tournament of IFC Trophy 2023. Welcome back for this tournament, and King Sports having a live telecast of cricket tournament. Absolutely fantastic live telecast. It's a very quality live coverage there from King Sports, and one of the most leading YouTube channel as far as the cricket is concerned. So completion of over number 2. It's 17 for the loss of one wicket. Very good going here for the team, and 12:05 they started, now 12:13, and that means they taken 1 minute extra. The 9 minutes taken for 2 overs, and in that wide which is involved, as Mubir will go into start his fresh over, and the experienced campaigner for the side, and wait and see how Mubir will go into ball here. And tall man, a very experienced campaigner, a very clever economical bowler for the side, will go into start. So proceeding for start from him at the third over to the right-hander batter Prashant. Prashant is looking so good after hitting 1-6. He's batting on 7, and along with him Naufal is batting on 3. He starts with a Spectra wide, and Spectra wide in the sense is going to be a wide, the extra run, and I need to re-ball that one. Scoreboard is 18 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Mubir not really getting the line in the first ball itself. Is almost missing his line. Bowled a big wide down the leg stump, outside the non-flex stump. Again bowler balls, right arm over the wicket balls. Again nicely turns that one to square leg region. Again the line is outside the line of leg stump. It's going to be a direct hit, but batsman is safe. That's why umpire Arif doesn't want to waste the time here, because you know exactly the batsman is safe. Looking at the body language of wicketkeeper and the batsman, looks like is no question of asking for the third umpire. And with the naked eye you can judge that of course the technology which is improved in the last 3-4 years, but before that the only umpires giving that the run out decision, and everybody expecting that one. But this time nowadays everyone is forcing the umpires to give for the third umpire. It's not a good sign, because umpires always, they're coming to the field after a lot of effort, isn't it? After getting a lot of knowledges, it's not so easy, and to come and appreciating one of the most difficult job as far as cricket is concerned. The umpiring is so difficult job, so you need to respect the umpire's job, each and every players. This is the first priority from the players, that respect is always needed for the umpires. Again outside the line of leg stump, by call by umpire. Wicketkeeper behind the stump misses it completely, so that batsman completed a single. 20 on the board for the loss of 1 wicket. Mubir not really getting that as usual. His line and length is usually his balls almost around the middle end of stump, but today his line is going a little bit outside the leg stump every time, and now his balls to Prashant again. Just why talking about his line is outside the non-black stump, but this time is well within the reach of the batsman. Quicker one, faster one, fantastic collection there from the wicketkeeper behind the stump, and now it's called a wide. Umpire taking his own time, maybe he's thinking about whether the bat and pad or which is involved, but batsman says no, nothing is involved, so that umpire Iqbal called it wide. Again that ball going to be one more wide. It's not a good sign here from Mubir. He's been really struggling to get his line and length. Maybe he's looking for some extra pace in his bowling. By doing that, he's not looking towards his line, what he's looking for. That's all happening when you're if you see that Mubir's bowling, when you are bowling, releasing the ball, he is just looking towards the ground. The eyesight is of course toward the ground. When you are looking towards the ground,
then you are missing the line. Where to ball, where to pitch. Now I think is that's the I think is a learn from the mistake. Now is just the very straight, the head which is very straight, seeing the line, not seeing the ground, and balled outside the line of off stump, and one more dotted delivery. 22 for the loss of one wicket in the over number 3 in progress. And it's always going to be key if you see the over cricket, when the coaches will always coaching you for the fast bowlers, need to be head need to be straight, and the eyesight need to be where to pitch the ball. And if you're not seeing the line which you need to bowl, then always it's a chance of bowling a wide deliveries. But some bowlers who can be the bowlers who are never looks the striker's end, and of course as, one of the best example is Foul Adams, Chinaman bowler from South Africa. He's not looking towards batsman, because the way that he's turning his hand and turning his head almost into the left of uh, Shivil Kaushik, I think one more bowler who was represented for IPL, represented for Gujarat, and he's the same kind of bowler. And Sadiq NM, who's hit 2 6s against his bowling in MPL. And still remember, it's going to be a chance here for the run out, and is back into pavilion. Run out taken place. Look at that one in a replay. Driven firmly, lack of placement, good piece of fielding there by the fielder. Presence of mind, seeing the opportunity in the non-striker's end. And unfortunately, Naufal is a batter, is so far out of his crease, so that easy decision for the umpire. So one more wicket is back into pavilion. It's a 22 for the loss of 2 wicket. Then coming back to that, there's some different kind of bowlers who never looks in front, but is looking towards ground or into left, and we are talking about Shivil Kaushik, and the bowler one who took a wicket of Yuvraj Singh in IPL, and the same bowler which is punished by our local boy Sadiq NM in MPL, hitting 2 6s, and that shows our underarm cricketer is absolutely even they're dominating in overarm cricket as well. Again, first ball, next ball, driven down to third, driven but not quite able to get that one from the middle of the bat. Prashant is a man who picked up a single, then with that single scoreboard now moves on to 23 on the board. 23 for the loss of 2 wicket. (23) for the loss of 2 wicket. Outside the line of half time, nicely guiding it down the third man region for a single. It's a 24 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. So 3 completed. After completion of 3 overs, it's a 24 for the loss of 2 wicket. And that's a run rate is exactly 8 runs per over. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And NWC are looking in a good position. And wait and see how well they're going to get some good score in the remaining 3 overs. And the time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you very much. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और चौथे ओवर की दूसरी गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त रुक चुका है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
25 रन माफ कीजिए, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची वाइड स्लॉग ऑन के दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, स्कूप किया इस वक्त, रनआउट का खतरा, निशाना टकरा चुका है और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। He just gone for a brisky single this time, not succeeded, and because of that he lost his wicket. तो एक और विकेट गिर चुका है। Third wicket is now backing to pavilion. It's 26 for the loss of 3 wickets. तीनों विकेटें जो गिर चुके हैं रनआउट के रूप में गिर चुके हैं और इस वक्त बित्तुपादे, इस वक्त एनडब्ल्यूसी करावली बित्तुपादे 26 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है चौथे ओवर में। The next match, Young Friends Ammemar will takes over NFC Angaragundi, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस वक्त तैयार अगली गेंद लेकर, यह गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 27 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर उस उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद का पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ थ्रो पहुंचा और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और इस वजह से वो बच चुके हैं और 1 रन भी उनके खाते में जुड़ चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 4th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। तो बेहतर ओवर रहा और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन की गति अच्छी खासी, 3 विकेट खोने के बावजूद इस वक्त एनडब्ल्यूसी करावली बित्तुपादे जोड़ चुका है। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखना है कि इन बचे हुए 2 ओवर में बित्तुपादे के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो दोपहर का वक्त लगभग 12:24 यहां पर बच चुके हैं और धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ता नजर आता हुआ। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा मैदान ऐसा बजाल नंतूर का, जहां पर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2023-2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है वाईएफसी बजाल नंतूर मैंगलोर ने इन एसोसिएशन विद लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन, इनके सहयोग से जनाब जब्बार इनके सारथ्य में यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए ये गेंद इस बीच गेंद को खेला था शॉर्ट कवर पर, तेजी के साथ 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद के बैक लेग पर टकराई और अंपायर इकबाल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई, उन्हें आउट घोषित करने में सही निर्णय और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज नौशद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 30 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है यहां पर एनडब्ल्यूसी करावली बित्तुपादे। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस चैनल का लाइव इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो इस वक्त बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो आज का
दूसरा मैच इस श्रृंखला के दूसरे दिन का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर जॉली फ्रेंड्स बजाल और NWC करावली बित्तोपादे के बीच में इस वक्त संघर्ष जारी है। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछालना चाहा, इस बीच जोरदार अपील कॉट बिहाइंड, एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। He just gone for a mighty one this time. He's got a big nick on that at the last moment, and wicketkeeper behind the stumps made no mistake. तो विकेट कट बिहाइंड द विकेट पहले ही गेंद पर सीआब के रूप में गिर चुका है, गोल्डन डक के रूप में 0 पर। और अब बित्तोपादे पहली बार उनकी पारी में इस मैच में कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। कुल मिलाकर 30 रनों के ऊपर 5वां विकेट खो चुका है। It's 30 for the loss of 5 wickets. तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और बल्लेबाज का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाज का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में और इस बार अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं, वरना लगातार तीसरा विकेट गिर सकता था 3 गेंदों में। और यहाँ पर विकेट गिरते गिरते बचा और कुल मिलाकर स्कोर रुक चुका है इस वक्त 30 रनों पर। 4 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया हल्के से पहला स्वीप शॉट को लेकर दिशा में, नॉन सेकंड बल्लेबाज द्वारा अच्छा रेस्पॉन्स। फलस्वरूप दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ कुल स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर कुल मिलाकर। और इस बीच जहां तक सवाल है अंतिम गेंद का, तो देखते हैं इस अंतिम गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज करते हैं। और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी बित्तोपादे क्रिकेटर्स की पारी में। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद पैरों पर टकराई, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लाइन के बाहर टिप्पा गई, अपील को सही तरीके से अंपायर इकबाल ने नकार दिया और 1 रन का इजाफा, लेग बाई का इशारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। एक बेहतर ओवर अगर जॉली फ्रेंड्स बजाल के पॉइंट ऑफ व्यू ने दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 रन बल्लेबाज गेंदबाज ने प्रदान किए और 5 ओवर के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी, द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स एंड लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग इन दिस रिमाइनिंग लास्ट ओवर। तो इस वक्त अंतिम ओवर बाकी और खिलाड़ी जो कि पानी इस वक्त ग्रहण करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। दोपहर का वक्त बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और सूरज लगभग आसमान की बुलंदियों को छू चुका है इस वक्त, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। दोपहर के 12:30 इस वक्त बज चुके हैं और यहाँ पर संघर्ष जारी है। तो अंतिम ओवर का खेल बाकी, पानी ग्रहण करने के बाद खिलाड़ी वापिस अपने अपने स्थानों पर लौटते हुए, अपनी अपनी जगह पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। फारूक गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त बित्तोपादे क्रिकेटर्स की पारी में। आज सोमवार वर्किंग डे होने के बावजूद काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद इस वक्त मैच का मुआयना करते हैं और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ के गेंदबाज फारूक का, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टॉप मेड बाय द बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू एंड finally there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 33 now for the loss of 5 wicket in the over number last
इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार तैनात ओवर द विकेट ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एक रन मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते हैं इस बीच लेकिन नहीं मिलेगा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पर लपकते हुए तेजी के साथ फील्डर एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज आखिरकार संतुष्ट हो चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर इट्स 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6th and the last in progress in their innings. 3 balls left in overall calculation in their innings. 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और फारूक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक रोकना चाहा निशाना नहीं ओवर थ्रो और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और रन के लिए दौड़ पड़े थे और विकेट कीपर तुरंत गेंद को फील्ड करने के बाद नॉन स्ट्राइकर पर निशाना दागा था लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ अपना छोड़ वो बदल सके अगर निशाना स्टम्प्सों पर टकराता थ्रो स्टम्प्सों पर टकराता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी लेकिन यहाँ पर थ्रो थोड़ा सा वाइडर निकला और इस वजह से बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ सुरक्षित बदल चुके हैं 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स 2 balls now left in their innings 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर रन पर और ओवर थ्रो और तीसरा रन बल्लेबाज को मिल सकता था लेकिन दूसरा रन के पूरा करने के बाद बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे और इस बीच रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर रन पर 1 shot only 1 run declared 36 for 5 last ball now remaining in their innings ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು इलियास नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर तैयार फारूक द स्कोर बोर्ड is at 36 for the loss of 6 wickets the last ball of their innings is now coming up फारूक सबक के लिए अंतिम गेंद ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा अपील जरूर और इसी के साथ विकेट गिर चुका है कुछ सोच विचार करने के बाद लेग बिफोर विकेट घोषित किया और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप and NWC Karawali Bittupade finished with 36 for the loss of 7 wickets in the stipulated 5 overs 6 overs in fact and they set a victory target of 37 for Jolly Friends Bajal so Jolly Friends Bajal have to score 37 runs in 6 overs with the required rate of exactly 6.17 runs per over they have to score for victory the required run rate for them and their innings now going to start within just a short while ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ 2 ಓವರ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಒಳಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ So 37 the target and their innings now going to start and let's see what will happen in their innings और इस पहले की उनकी पारी की शुरुआत हो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब जॉली फ्रेंड्स बजाल की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी धन्यवाद थैंक यू
ಅಲ್ಲಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ MMR ಹಾಗೂ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. Ashok and Tanzim are the opening batters came into middle. Jolly friends. Of course, 30. The target is 37, and 37 is going to be a target. And wait and see how well they will going to get this total. It's a fighting total on the board. Once again, a low-scoring game. The first match also fantastic match, the match of the tournament, which is ended with the nail batting finish. And at last the team due to Ulaibe to manage to win the match. Now it's going to be one more good match. Jolly Friends Bajal versus NWC Karawali. And here is the first ball. Now Fall will go into starts the proceedings, and Ashok will be the striker. The time which is noted here, the time is exactly, it's 12 past 38 the first ball, and nicely reverse sweeping that one down to third man for a single. So first ball was a single, and now it's second ball. Now Fall, right arm around the wicket to Tanzim. Tanzim facing his first ball. This time nicely bowled. One more fantastic delivery indeed. Tanzim is the one who's won the Best Batsman Award in the Netravati Trophy 2023. Safwan, correction. Safwan is the one who's won the here again batsman looks like it's going to be a wide here, and one more wide. Scoreboard is moves on to 2 on the board without loss of any wicket. They need to restrict all the extras if they wanted to win the match. NWC Karawali Bittapade, because 37 the total where you need to be a little bit option to ball the wide and no balls again outside the Wrexham wicketkeeper fails to collect the ball, and at the same time the batsman cross off for a single in the form of a bye. So with that bye, scoreboard numbers on to 3 without loss of any wicket in the over number, the first in progress. Little bit misjudgment there from Tanzim. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batsman little bit shuffled across the line of the delivery, so that rightly so umpire not really able to read that well. Again this time inside out, lovely shot gone towards the deep cow point region. Fielder chasing the ball. Will they going to win the race? Yes, he does, but not the fielder winning the race, but the ball which is winning the race against the fieldsman. Nice looking inside out cricketing. So just look at that one, making room to play the shot, beautifully executed, and you know exactly there's no protection has been given the deep long, and look at the fielder there just chasing the ball just like the cat chasing a mouse, and but at last the ball winning the race against the fieldsman, and ball is hitting that advertisement board apple fly, and very important boundary for the team Jolly Friends, and the 7 on the board without loss of any wicket. Ashok has got a fantastic boundary for his team. Again, frustration and the pressure straight away to the bowler. They're going for the extra run, chance of run out in the non-strikers, and a throw which is not up to the mark, otherwise going to be a disaster. 1+1, 2 runs which is added to total. Much required runs coming here for the team Jolly Friends, and score jumps into 9 on the board without loss of any wicket. Now umpire Iqbal is walking towards umpire Arif. Maybe the suspicious bowling action they're looking for, because as per the rules and regulation of underarm cricket is concerned, that bending your
elbow will not be allowed. That what might be the Iqbal is asking Arif to watch the bowling action of the bowler. Is cannot do that, and of course maybe that warning has been given for the bowler. I request the two teams captain please report here for the toss. White signaled, and 9 on the board. 2 whites, 1+1. Young friends ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Nicely executed there by Tanzim. Just allow the ball to coming into his bat, then play the horizontal bat, switch it down to third man region for a single. With that single, Skubad Namuzan to 10 on the board without loss of any wicket. It's a kind of start which is required for Jolly Friends. Both the opening batters, Ashok and Tanzim, the managed to produce in this first over. Right, over the wicket, absolutely spectacular. Oh, he wanted to run! He wanted to run! Tanzim is struggling! Tanzim is struggling and he's just survived! That throw which is not up to the mark. No one there to collect the throw. Even bowler just watching. Just look at the bowler is on and follow through. This is a job of bowler to come to the non-strikers, and look at the laziness of the bowler. Is not coming to the wicket, and even that mid-on fielder have to come towards the wicket, but he is also very late to react at one. What could be a certain wicket in the form of run-out? Nothing wrong with the fielder, but something wrong with the bowler and the mid-off fielder. They are not really able to come into the non-strikers, and that's why the batsman has struggled here. So 20, a little bit correction, the fielder has struggled here to get the run-out. The fantastic over comes in India for Jolly Friends. They got the run what they really wanted, and the 11 runs which came from that over, and now it's a long way to go for to win this match. 11 which is deducted from 37. That means they have to get another 26 runs to win this match. Just look at that one in the monitor screen. The 31 repercussion 30 which is a ball remaining, the 31 is a ball remaining, and 26 runs which is required. The first over is in progress, a long over, the big over which is not completed. There's a one ball remaining in this over, and 31 balls remaining and 26 runs required for the wicket, victory. Right number on the wicket. This time looks like the wicket keeper behind the celebrating is gone. Ashok is gone. Tried to flick that one. It's not a wicket taking delivery. It's not a wicket taking delivery because the ball pitched outside the leg stump. But Ashok wanted to flick that one instead of hitting the ball. Just look at it, how far that was outside the leg stump. He tried to flick that one off his legs, going to the top edge, and ball is ballooning up in the air, and wicketkeeper behind the stump did the rest. First wicket is back into pavilion. Jolly Friends have lost a huge wicket, and it's the right time for the fielding team NWC Karawali Bittabade to back into this game. So new batsman in is the hero of this particular cricket ground, and the cricket lovers never going to miss that name, which is a Tazuddin. Of course, someone looks like when there's a Tazuddin, the name which is very popular, the KFC Kodikal Tazuddin. It's not a Tazuddin of KFC Kodikal. It's a Tazuddin of Jolly Friends, and the hero of this cricket ground. And the people will going to remember his name for a long time because of his one hit. Oh, what a shot! That was a magnificent, absolutely glorious shot there from Tanzim here. But unfortunately, in this particular cricket ground, he will going to get a single. Oh my goodness, can you believe this? This is the second time I'm watching that kind of cricketing stroke in the yesterday's match. Imtiaz of Torpedoes Khana hitting that similar kind of cricketing stroke towards a deep find against square leg region. It's a mighty stroke, fantastic stroke, but unfortunately we're going to get single for that. With that single, Skoban Namazan to 12 on the board for the loss of one wicket, without loss of course, one wicket, and over number second is in progress. Siaz balls round the wicket, going to be a one delivery which is well within the reach of the batter. Tamzin wanted to swing once again, but he missed it completely, and there is no chance at all for any run. Score remains on 12 on the board for the loss of one wicket. Siab right arm bowls exam. Tanzim managed to get that right from the middle of the bat, just closing his the face of his bat and diverting that one down to third man region by playing switch it with that single. Skoban Namuzan to 13 on the board for the loss of one wicket in the over number second in progress. Siab
Balls to Tazuddin. Tazuddin drives that one. Of course, he wanted to hit the ball. Tazuddin is a very good striker of the ball. He really not bother about whether he's playing his first ball or the second ball. It's not matter, but it only matter that you want to hit the ball pretty hard. And one more single is added to total. With that single scoreboard numbers on to 14 on the board, without for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So far, Siab has been looking good, very good in this over as far as the line and length is concerned. This time again, Tanzim nicely turns that one onto square aggression. The rotation of strike is so important, and Tanzim is the man who is very good in it. He's just rotating the strike very well, not wasting a single delivery. Scoreboard numbers on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. 22 more runs required for the victory. Tazuddin drives just between the two fielders. Ball running down to deep cover point. I don't think the fielder will going to get that. The ball running down to deep cover point boundary for 4 runs. Absolutely imperious cover right there from the batter Tazuddin. Just look at that one. Little bit with his offered and drives that one. You know exactly the cover point and the backward point between that X and that one for 4. I request two teams captain of Young Friends Ammemar as well as NFC Angaragundi. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. So, the first ball going for the run, chance of run out in the strikers, and now umpire referring for the third umpire. Arif Jokate now not really has got the evidence to give the decision in a naked eye, so that he never want to take any risk in that equation. Very close one, so that he asking for the third umpire to give the decision. Will it going to be out or not? Or always going to be touch and go sometime.
It's always going to be touch and go for the third umpire to decide whether going to be out or not. It's always going to be a difficult one. But the technicians of King Sports definitely is a very master of giving every kind of angles which is need to be provided, and he is the one. Just wait and watch, wait and watch. Is going to be a touch and go. We need to be see that some part of bat need to be inside the line. The some part of the on the line is always going to be out. But if you want to do safe, need to be some part of your bat inside the line. What is the cricket rules and regulation will going to mention here. But now umpire will going to see umpire Nasir Bajal. Nasir Bajal will go in to give the decision. Now umpire, after examining a lot of angles, it's a not out is the call from umpire Nasir Bajal. And batsman is safe at the last moment because a throw a little bit high or a little bit wide. That's why batsman managed to drag his bat. It's so important, isn't it? It's a batsman who did a right job by dragging his bat in the right time, and he managed to survive from the run out. Ali Ammemar ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನಿಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಂತದ ಬರೋಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಟಾಸ್ಗೆ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಲವ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಫ್ರಮ್ Tanzim looking pretty good today as is connecting the ball very well and good execution actually. The very good technique is implemented to get some rotation of strike here. 15 runs be required for the victory in remaining 21 deliveries. Total score is 22 for the loss of 1 wicket. Oh, fantastic piece of bowling. Wicket keeper behind the stump. He knows that he's left the ball, but he's just appealing for. But maybe the ball is very close to the stumps, isn't it? That's why he's so excited. That ball is not really far away from the stumps. A quicker one there from the bowler Rizwan, and one more dotted delivery. Rizwan trying his level best to get the wicket for this team. This time lofted right in the gap. No, not at the gap. It's a fielder there in the long off region. Little bit correction and extra cover region. Takes a comfortable catch. Once it looks like the batsman hoisting it over, it might ball is landed between long off and extra cover, but ball just landed into the hands of extra cover. Ishaq, the fieldsman, just look at that one in a replay, and a very good judgment because once it looks like ball going to land it safely between the two fielders, but Ishaq is a fieldsman. He got a very good run from deep cow point to deep extra cover region to complete that catch. The huge wicket now for the team, the opposition team, NWC. They're now slowly thinking about the victory, and now still they have to get another 15 runs to win this match, and remaining 19 deliveries. The match is evenly balanced because the new batsman coming to the middle here. Whenever the new batsman coming to the middle, the right opportunity for the fielding team to tighten up the screws. Tighten up the screws in the sense bowling some dotted deliveries, bowling some wicket taking delivery. Definitely will going to provide the opportunity for team NWC to back into this game. The Bitapade, Karawali Bitapade, NWC is trying their level best to get back into this game. So new batsman in after the dismissal of Tanzim. It's a Naufal. Naushad, lit correction. Naushad there is a batter will going to face his first delivery, and Rizwan has got a very important breakthrough. Bowling right arm round the wicket to the right hand batsman now. This time a sweep shot comes into play, and they got a single for that. Prashant, the fieldsman there in the short fine leg region to collect that one, returns that one. Ample time for both the batters to complete the single, and with that single score moves on to 23 on the board. 23 for the loss of 2 wicket, and last 18 balls remaining. They have to get 14 runs to win this match. 18 ball, 14 runs.
and the match is definitely going to be very interesting. And for that interesting 3 overs, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. And Gopi, outstanding match is progressing here. Today is looks like the day is a very different day. Yesterday is most of the teams, most of the matches which is on-sided. It's not that much of excitement. But today, the day number 1, day number 2, the first match is so excited. Even the second match is looking towards inching towards a nail-biting finish. But both the teams has got an opportunity to win this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त कल उतना कुछ खास दिलचस्पी नहीं देखने को मिली थी मैच में, लेकिन आज जो मैचेस हुए, पहला मैच जो कि अंतिम गेंद पर समाप्त हुआ था और ये मैच भी लगभग एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 18 गेंदें बाकी हैं और रन्स के चाहिए 14, 14 टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। और इस वक्त दोनों टीमों के बीच संघर्ष इस वक्त जारी है। जॉली फ्रेंड्स को इस वक्त बनाना 14 रन 18 गेंदों पर। और इस बीच ओवर की अगली गेंद माफी कीजिए, पहली गेंद लेकर लंबे कद के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, वाइड का इशारा इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए। और इस मोड़ पर वाइड फेंकना तोहफे उपहार के रूप में रन से देने के बराबर होगा। यहाँ पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करना चाहता, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, आउट ऑफ बैट्समैन्स रीच। और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉल की दिशा में, रन आउट का खतरा, काफी हाई थ्रो और इस बार इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। काफी ऊंचा थ्रो इस वक्त पहुंचा था, लेकिन उस थ्रो को ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए उछलते हुए गेंद को इस वक्त कलेक्ट किया। देखिए किस तरीके से कलेक्ट किया गया था और यहां पर विकेट उखाड़े गए, तो शायद काफी नजदीकी मामला यहां पर हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉल और देखते हैं यहां पर अंपायर, तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। ही इज गॉन, He fell just short of out of his crease। और यहां पर जोखिम भरा रन उठाने के प्रयास में बल्लेबाज अपना विकेट गंवाकर पेविलियन वापस लौटते हुए और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। स्कोरबोर्ड रुक चुका है 24 रनों पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 37 द टारगेट, 13 more runs now they have to score for victory in remaining 17 balls। और लक्ष्य कुछ ज्यादा कठिन नहीं, सेंसिबल क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है इस वक्त बित्तुपादे के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार है यहां पर बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए। और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है। इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर स्ट्राइकर एंड पर वो मौजूद, अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए स्क्वायर लेग पर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सियाब, नए बल्लेबाज सफवान इस वक्त जिनका आगमन हो चुका है सामना करने के लिए तैयार सियाब की गेंदों का। सियाब फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। सफान का खाता खुल चुका है और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5, इनफैक्ट 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया और गेंद की लाइन से अपने बल्ले को उन्होंने अलग तो जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और गेंद उनके बल्ले को वंचित करके निकल चुकी थी शॉर्ट फाइन लेग पर। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और इस वक्त कोई रन नहीं मिलेगा। 1 डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है। 16 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए इस वक्त 12 और फिर 15 गेंदें बाकी, माफ कीजिए। ये गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर फीडर के दाईं ओर से गेंद निकली, मुश्किल सा मौका जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो रोकने में सफल। और 1 रन का इजाफा, 26 रन बन चुके, 11 रन चाहिए, 14 गेंदें बाकी, 14 balls to go, 11 runs more now they have to score for victory। The equal battle is now on। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर टॉप एज और इट्स गॉन। आई थिंक इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री।
हालांकि लेग स्टंप से बाहर गेंद में इस वक्त तेजी थी, पेस था और इस गेंद पर सिर्फ उन्होंने अपना बल्ला उड़ाया। हालांकि एक हाथ से उनका बल्ला अंतिम क्षण में छूट गया था, लेकिन गेंद को इस वक्त खेलने में सफल। गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है, डीप बैक स्क्वायर लेग पर सीमा रेखा के बोर्ड पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए और महत्वपूर्ण चौका इस वक्त लग चुका है। बल्लेबाज सफान के बल्ले से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस चौके के साथ 30 रनों पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, प्लम प्लम प्लम, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट। गेंद को इस वक्त सफल होते वन साइड पर उछालना चाहा था और गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था देखिए, बैक लेग पर टकराई गेंद और सही निर्णय अंपायर द्वारा इस वक्त आता हुआ और एक और विकेट गिर चुका है सफान के रूप में। और कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन बन चुके हैं। 7 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग लास्ट 2 ओवर्स, दैट मींस इन 12 बॉल्स। उन्नीस का आगमन यहां पर होता हुआ और जहां तक सवाल है इस वक्त, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रिजवान, और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बित्तुपादे के गेंदबाजों को कमबैक करना है तो डॉट गेंद यहां पर फेंकने होंगे। 12 गेंदों में 7 रन, कुछ ज्यादा मुश्किल सा लक्ष्य नहीं। इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था, हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल सेंसिबल, इस बार रन आउट का खतरा, निशाना चूका, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। निशाना इस वक्त टकराता नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइडर निकलता हुआ स्टंप से और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, just 5 more runs, now they have to score for victory. So 11 balls remaining in the innings, 5 more runs, now they have to score for victory। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रिजवान दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के दौर पर सेंसिबल, एब्सोल्युटली क्लेवर थिंकिंग। इस बार विकेट उखाड़े गए लेकिन बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। इस बार क्लेवर क्रिकेट, चतुर क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनाया। गेंद को शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के ऊपर से हल्के से इस वक्त चिप कर दिया था। वो जान चुके थे कि डीप मिड विकेट पर जो फील्डर है काफी पीछे तैनात, और जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए अपने आगे की ओर 10 से 12 कदम, बल्लेबाज के पास समय था कि दूसरा रन वो आसानी के साथ पूर्ण कर सके। और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 3 रिक्वायर्ड इन 10 बॉल्स। गेंदबाज ये गेंद इस बार विकेट कीपर चूके और गेंद पहुंची चौथे मैन पर 1 रन का इजाफा। इट्स 35 एंड जस्ट 2 मोर रन्स, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। 5th इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स और अपनी अगली गेंद लेकर रिजवान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैरल स्वीप कर दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में रन आउट का खतरा, लेकिन गेंद इस वक्त टकरा चुकी है बल्लेबाज के पैर में और यहां पर 1 रन पूर्ण हो चुका है और 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट सिंगल रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री and the target seems to be much easier, the equation seems to be much easier now for them. Outside edge, down to a third man, gone through for a single, that's it. Jolly Friends Bajal are won the match by 6 wickets and against Bittupade, and with that with that victory they are through to the next round of this competition.
So man of the match of this match award goes to the man who bowled brilliantly in this match, conceded just 3 runs in his 1 over and captured 2 wickets, and because of that fantastic bowling performance, he bagged the man of the match award. Aris of Jolly Friends Bajal bagged the man of the match award. I request Aris of Jolly Friends Bajal to please come on to the dais and receive the man of the match prize from organizers. Aris of Jolly Friends Bajal, please to be reported here. So next match, Young Friends MMR will going to take over NFC अंगरगुंडी. At that match starts with a short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर आज के तीसरे मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Welcome back for the match number 3, and the match number 3 of the day number 2, Young Friends MMR versus NFC Angaraguda. After winning the toss, NFC Angaragundi elected to field first, so that opening batters came into middle. Harris is in strikers end, and Jalal is in non-strikers end. So Harris now representing for his home team,
And first ball down the leg stump going to be a wide. First going to be a Spectra wide. Little bit Shailish is lost his balance while delivering the ball, so that is lost his concentration over the line. And unlucky start here for the bowler. White signal, one without loss of any wicket. Left arm round the wicket, coming very close to the umpire. Delivers and ball missing the bat of Harris. The good line there from Shailesh. Very bowling, very interesting bowling action. We are standing almost the behind the umpire and crossing umpire, bowling left arm. From the wicket. This time, lofted that one right in the vacant area, down to deeper, wideish long on region, and before the fielder from mid on region to run back towards wideish long on. Ample time for the batter to complete that couple of runs. This time, ball is little bit stopped because of the wind, which is going against that stroke, and we can see that wind is which is not constant. Sometimes it looks like the ball wind is flowing towards onside region. Sometimes the ball looks like the wind is flowing towards offside region. It's very difficult for the batsman to sometimes to judge the direction of the wind. And shot selection is going to be key here. Sailesh bowls to Harris, inside out cricketing stroke, nicely driven down to wideish long off. Again the fielder from long off fielder to run across to his left to field the ball. Ample time for Harris to complete the single. Just a single. Harris looks like it's going to be a couple of runs when he plays the ball right in the gap, but both the batters settle for the single. With that single score, numbers on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. The first in progress. Jalal, one more very good striker of the ball. Jalal is a left-hand batter, and watching him in the last one Tanirbawi Premier League, Jalal is represented for his team. He's batted very well. This time it's going to be a beautiful delivery. It's an outstanding delivery there from Shailesh to miss the bat of Jalal. Really just he wanted to play against the line. That's what the problem here for Jalal. This is not never looks like going to be a hittable delivery. Just look at that one. Ball is really coming around the legs of the batsman, and ball just passing between the leg of Jalal and hitting the stumps. The first wicket is back into pavilion, and it's a 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So Jalal a little bit disappointed from his bat. Sometime in happening when you are facing your first delivery, it's going to be a much better line, and it's not to need to get depended not to hit the ball when sometime needed to give respect to the deliveries like that, and you can't hit the ball each and every ball for the big shots, and that's a problem here from Jalal, that in the first ball he facing he wanted to hit the big shot, misses the line completely, and wicket number first is back into pavilion. Kishore, the little master, came into middle. One more very busy customer as far as the cricket is concerned, and a very good cricketer and clever cricketer, the intelligent cricketer, and that was intelligent what talking about the first ball need to middle the ball, isn't it? That's always going to be key for the success of any batsman. Once you started to middle the ball, then you can play your natural cricketing stroke. Left arm Shailesh balls. This time, what you're talking about, after playing a natural defensive stroke, but unfortunately, we're going to get a single for that. Ball is not too far away from that line, I want to say. Is very unlucky. What could be a certain boundary for him? Just look at that Kishore. Outstanding switch it. And unfortunate ball is just going towards the declared area. Little bit squarer, it's going to be a boundary, but ball is went into the declared area just for the single. With that single, scoreboard numbers under 5. First over completed. Searching for the right track. YFC Amemar, young friends Amemar, the managed to get only 5 runs by losing a huge wicket of Jalal. So second we are going to start here. It's a very good competition between two very good teams. NFC Angaragundi, everybody knows the strength of this team, and even young friends Amemar also fantastic team. So so it's going to be one of the best match of the day number 2. Two very good teams, quality teams will going to play against each other. And here is a 5 as a total score on the board for the loss of 1 wicket. The over number second will going to start from the commentary box end. Hakim, again the left arm, balls beautifully bowled, and Harris wanted to hit the ball against the line, misses it completely. Good line actually maintained by both the opening bowlers, and even Hakim now starts very well with the line, with the good line and length, and now is bowling
fast umpire, left arm round the wicket. Begin the ball going down the leg stump, too far outside the leg stump, going to be a wide. 1+1, 2 extra runs, and the scoreboard numbers on to 7 on the board. Again, outside non leg stump, flicks it off his legs down to fine leg region. 8 on the board for the loss of 1 wicket. Akeem again bowling with a short run up. Now a little bit conversation with Kishore as well as Harris. And now Harris will go into face next delivery of the bowler Hakim. Hakim, left arm around the wicket balls. Again, they're going for the reverse sweep. Fantastic bowling performance continues here from bowler Hakim. Testing the temperament of Harris. Harris, everybody knows this talent, his potential, who represented for KFC Kodikal, being the captain of the side of KFC Kodikal. A lot of experience behind him, but sometimes the line is so difficult. This time, look at that one. What we are talking about, the experience is really coming into play here, and he's just swept the ball nicely down to deep score leg boundary for 4 runs. You can't keep this man for a long time, isn't it? You can't keep this man quite for a long time. And just time he got that one right from the middle of the bat. He won the netting wrong with the line of the delivery. But Harry is so good in this particular shot. One of his favorite shot across the line, swinging that one. And a slog sweep comes into play to get the boundary. So with that boundary, scoreboard numbers on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. 12 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Akim. Again, left arm bowls far outside run of stump. Going to be a 1 more wide, 1 more extra. With that extra score, numbers on to 13 on the board. Again, right arm over. Oh, that was again going to be like by, not like before wicket. That was a quicker one, faster one there from the bowler, and 1 more addition to total. With the addition of that single, score numbers on to 14 for the loss of 1 wicket. Very good cricket is going on here from both the teams, NFC as well as team Young Friends of Myanmar. 2 very good teams, and they are very quality teams in their respected region. This time Kishore drives that one, set to the hands of fielder, chance of run out, and it's going to be a not out. What a slow return there from the fielder. It's not a quick return, isn't it? What could be a chance of a run out? Just look at Kishore. He's almost given up, isn't it? Just look at the body language of Kishore. After hitting the ball went straight to the hands of fielder. And look at the fielder, how slow he's been. And Kishore quickly realizing the opportunity to survive. And he run very quickly and they managed to survive from that run out. Little bit disappointing here for NFC that they didn't got wicket for that. And after completion of over number 2, 1 more over, which is a productive over for team Young Friends of Myanmar. And in this particular over, Harris got 1 boundary and 15 for the loss of 1 wicket. Next match, the last match of their first round, the match number 4 will be played between Nazar 9th block versus Tokoto Friends. TFC, Tokoto Friends. So that I request both the teams, please report here immediately to sign the official chart and please get ready for the next match. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ತೊಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ TFC ಇದನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸಮಯ 12 ನಿಮಿಷವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೈಲೇಶ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒನ್ ಹೂ ಬೌಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ will go into ball second over, and after that power play. First ball beautifully bowled. He's just continuing that line and line, strong line and line, very consistency, very impressive.
And Shailesh, as far as the line and length is concerned, is a boy really targeting that outside the line of off temp. And Kishore, even technical, very good player, but he's not really able to judge the line of that delivery. This time, Shailesh balls outside of leg stump. It's a very good thinking from the bowler's point of view, because seeing that the batsman is going for the reverse sweep, is cleverly, the last moment, is changing the line. His ball outside the line of leg stump. This is a very good thinking there from Shailesh. You know exactly what batsman will going to do, and he bowled as per the condition required. Oh, lovely delivery. Just once again, Kishore is struggling, absolutely struggling against Shailesh. Fantastic line and length. Again, that outside the line of off stump. He's really testing the temperament of Kishore. The bowling that line outside the line of off stump. So far, Shailesh is dominating in these 2 overs. Of his spell. He's bowling his last over of his spell, but he's looking pretty good. Just 5 runs conceded so far in this 9 deliveries which is bowled, and 1 over he bowled in the power play over, and it's not so easy to come and bowl in the power play over. Again, Shailesh bowls. This time Kishore tries. This time Kishore has got the width, and he got chance here, going for the second. Oh my goodness, the Kishore this time I don't think will go into. Oh my goodness, once again he survived. What a luck he's having today. The second time the NFC fails to grab the opportunity to make the run out. This time the wicketkeeper tried to shy the stump. Shailesh thought it might be a chance. Just look at it on a replay. The throw coming from the fielder towards striker's end. And just look at the wicketkeeper there, where the Kishore is almost halfway down the ground. But here is wicket. The bowler fails to collect the throw. Kishore dealing with some luck here, and Harris picked up a single here quite nicely by playing horizontal bat down to third man region for a single. With that single, scored Namuzan to 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Slow progress here for the team. Young friends Hamemar against the disciplined bowling from NFC. Ball him, clean him up, he's gone. The Kishore's is a frustration which comes to the end. Is with the beauty of the delivery. This is what Shailesh is for you. After playing in the mind of the batsman in the last 3 deliveries, dotted deliveries, now we bowled one beauty of the delivery while batsman going for the switch it. And look at the line, fantastic one. He deserves this wicket, isn't it? He deserves this wicket. The way that is bowled, that line and length, absolutely fantastic. 3 overs completed of completion of over number 3. And NFC are looking in trouble. Young friends of them are looking in trouble. 17 for the loss of 2 wickets. 3 overs remaining. Shailesh, I want to see his bowling figure. 2 overs, no maiden. And he conceded 7 runs and picked up 2 valuable wickets. 3.5 runs is going to be economy rate. Is so good. 1 over bowling in the power play over. So before the next over will go into start here, change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यू हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स में बात. द बैन टू स्कोर ओनली 17 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 पुल दैट वन बट 2 स्क्वायर. जस्ट अ सिंगल ही हैज गॉट फॉर दैट. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर. 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. इमरान गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं. पैर पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए अपील को सही तरीके से अंपायर ने नकार दिया. लेग बाय का इशारा अंपायर का, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. और ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स मेमार के बल्लेबाज रनों की तलाश में इस वक्त. और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, तो एनएफसी अंगरगुंडी के गेंदबाज बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ उछाला, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद. नॉट मोर देन अ सिंगल इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड द बैट्समैन आर फाइनली सेटिस्फाइड विद दैट सिंगल. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. और
गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, तैनात ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया जगह पर आते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट, वाइड लॉन्ग ऑफ पर बेहतर स्ट्रोक, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बेहतर फील्डिंग के जरिए सीमा रेखा के अंदर 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था, विकेट एक्सपोज करते विकेट को इस वक्त ड्राइव कर दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस गेंद पर 2 रन प्राप्त करते हुए अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, तैनात ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, विकेट कीपर चूके और इस बीच एक रन जरूर मिलेगा। इससे पहले के शॉट फाइन लेग पर दोबारा विकेट कीपर अपने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, फ्लेक्स पर गेंद टकराने के बाद 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक 6 रन बन चुके हैं। एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ यंग फ्रेंड्स अंबार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई और गेंद चौथट मैन पर इस वक्त जा चुकी है। 1 रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की मुकम्मल के बाद 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ young friends Ambemar and batted first against NFC Angaragundi in the match number 3 of YFC Trophy Season 2 2023. They are still searching for the right track. 2 overs left in our calculation in the innings, 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में यंग फ्रेंड्स अम्बेमार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल काफी लंबी बातचीत इस वक्त जारी और है और देखते हैं अगली गेंदबाजी किसको इस वक्त सौंपी जाएगी। फिलहाल बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज। तो जहां तक सवाल है, इकबाल जो कि अंपायर इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तो इस वक्त जहां तक सवाल है, तो अंपायर आरिफ जो कट्टे और नासिर बजाल हमारे साथ इस वक्त अंपायर का कार्यभार करते हैं, जबकि इकबाल इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। कम से कम 35 से 40 रनों के आंकड़े तक पहुंचना होगा इस वक्त यंग फ्रेंड्स में मार के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो दाएं बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद, अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विक कर रहा, गेंद को जगह बनाते हुए खेला एक्स्ट्रा कवर पर, तब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बाएं हाथ के गेंदबाज हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद दाइनात रिवर्स शॉट, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और इस बार तृतीय अंपायर को इस वक्त दिया गया है ये निर्धार लेने का। और देखते हैं तीसरे अंपायर इस वक्त क्या निर्धार लेते हैं। नॉट आउट द डिसीजन केम और बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला लैंड इस वक्त कर चुके थे और इस वजह से वो बच चुके हैं इस गेंद पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज हकीम एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हकीम की
एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, हर किसी गेंद को पुश किया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्टॉक के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार कोई दिक्कत ही नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। हकीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, आरिस सामना करने के लिए तैयार, एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए आरिस इस वक्त हकीम की गेंद का सामना करते हुए वन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट है, द लास्ट मोमेंट गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक का सवाल है चौके और छक्कों का, तो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं है। सिर्फ एकमात्र चौका आरिस के बल्ले से लग चुका है उनकी पारी का और इस बार गेंदबाज हकीम एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी और इस बार यहां पर यह विकेट शायद गिर चुका है, गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी और बेल्स यहां पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और जिस तरीके से गेंद यहां पर आई थी, देखिए बिल्कुल जमीन के साथ अलोंग द ग्राउंड द बॉल केम, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से गेंद को फेंका था। देखिए एक्स्ट्रा क्विकर, दिस इज द एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, बीटिंग द बैट्समैन्स बैट विद द एक्स्ट्रा पेस एंड इट स्टक टू द मिडल ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। फैंटास्टिक डिलीवरी और इसी के साथ चौथा विकेट, तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 29 for 3। ओवर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड, अंतिम ओवर का खेल बाकी। मीन टाइम द नेक्स्ट मैच will be the last match of the first round of today, will be played between Nazar 9th block and Tokkottu Friends TFC. Because of TFC and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए, गुरु इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहले गेंद लेकर तैयार, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट इस वक्त जो ठीक सीमा रेखा के पास, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 30 रनों पर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, गुरु दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, लेकिन बैकवर्ड थर्ड बॉल पर फील्डर मिसफील्ड गेंद को करते हुए और गेंद सीधे एप्पल प्लाई के बोर्ड पर टकरा चुकी है सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो ठीक तरह से रोक नहीं पाए। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और गेंद सीधे पहुंची थी, देखिए वहां पर मिस जजमेंट और गेंद उनके हाथों से छूटकर सीधे एप्पल प्लाई के बोर्ड पर टकरा चुकी है सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। आरिस जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज अपनी टीम के लिए करते हुए इस वक्त 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस बैटिंग ऑन 17 आरिस विद 2 बाउंड्रीज और इस बीच सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, इस बार एक बार फिर से रिवर्स शॉट, इस बार मौका डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर के लिए, आसानी के साथ गेंद वहां पर लपक लिया गया और इसी के साथ आरिस की बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। उनके पारी के अंतिम ओवर में आउट होकर वो पेविलियन वापस लौटते हुए 17 रन उन्होंने बनाए, स्कोर 17 runs into his credit, including 2 boundaries by Aris. And after being playing a good knock for their side, he is back to pavilion and a 4th wicket lost for young friends Amemar. And now it's the scoreboard is now stays at 34 for the loss of 4 wickets. तो 34 रन बच चुके, 17 रन उनके टीम के कुल रन संख्या के अर्धांश रन आरिस बना चुके, 50% ऑफ देयर टोटल रन स्कोर्ड बाय आरिस। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंद का, 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, जस्ट 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज इस वक्त गुरु गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त आ चुके हैं इमरान,
जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गुरु की गेंदों का। और गुरु अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद तक पहुंचना चाहा, विकेट कीपर चूके गेंदबाज के हाथ से गेंद इस वक्त फिसल चुकी थी। 1+1, 2 रन एडेड टू द टोटल। और 2 रन तोहफे के रूप में यहां पर प्रदान कर चुके हैं गुरु वाइट के रूप में। 36 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज गुरु अपनी गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। एक और कैच हो सकता है, कवर पॉइंट फील्डर गेंद को लपकते हुए। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। 0 पर इमरान की पारी समाप्त गोल्डन डक के रूप में, माफ कीजिए, अशरफ की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। और इमरान इस वक्त मौजूद है नए बल्लेबाज, और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 2 balls now remaining in overall calculation in their innings। सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। और जहां तक सवाल है बचे हुए 2 गेंदों का और नए बल्लेबाज का, अल्फाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज गुरु स्ट्राइक, माफ कीजिए अंपायर, स्ट्राइक इस वक्त अल्फाज के पास रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर अंतिम गेंद पर स्ट्राइकर एंड पर जो विकेट गिर चुका था। और क्रिकेट के नूतन नियमानुसार, आईसीसी के नूतन नियमानुसार बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेने का हकदार होता है। और यहां पर यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, एक और वाइड। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। स्टिल 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। अभी भी 2 गेंदें बाकी उनकी पारी में। फ्लेक्स वहां पर गिर चुका है, और अंपायर ने इशारा किया कि स्वयं सेवक वॉलंटियर्स कोई वहां कर उस फ्लेक्स को एकदम सीधे खड़ा करे। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी, और गेंदबाज गुरु इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हैं इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अल्फाज। ये गेंद इस वक्त नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची। इट्स ऑफ द बैट सेज अंपायर, डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, सिंगल रन एडेड टू द टोटल। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर 5, लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज ड्रॉ कमिंग अप। और गुरु अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। और विकेट के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं, और निर्धारित ओवर इस वक्त समाप्त हो चुके हैं। यंग फ्रेंड्स अभिमार एंड यंग फ्रेंड्स अभिमार finished with 38 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs, and now the 39 the target for NFC Angargundi, and as far as the required rate is concerned, exactly 6.5 runs per over, they have to score for victory. So 39 the target in 6 overs, exactly 6.5 runs per over. They have to score for victory for NFC Angargundi, and their innings now going to start with the rejection. While तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब NFC अंगरगुंडी की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back once again for the innings of team NFC Angaragudi, and at last they got the total score. Just look at that one on screen. It's a 38, which is the total score of Young Friends Myanmar, and 37 is going to be a target for team NFC Angaragundi to win this match. And wait and see how NFC Angaragundi will going to get this total of 37 to win this 39 to win this match. 36 ball and 39 runs required for the victory, and it's going to be a more interesting game of cricket because the match definitely going to be going between two very good teams, NFC Angaragundi as well as team Young Friends Myanmar. Both the team will going to fight hard here for the victory, and it looks like it's a competitive role now for team Young Friends Myanmar. The managed to get against team NFC Angaragundi. The opening batters came into middle. The time will going to be noted here. The time is exactly 1 past 43. Our scorer will going to note this time 1 past 43, and 25 minutes need to complete your 6 overs quota. Please note the captain of the side of the fielding team, 25 minutes you need to complete your 6 overs quota. So here is the first ball. Alfaz will go into ball. First ball to Munna, and starts with the warm-up delivery of the afternoon. And it's a big wide, and umpire Arif has got no hesitation in his mind to signal the wide. And with that wide, the scoreboard now started to move. And one without loss of any wicket in the over numbers first in progress. Again, going to be a afternoon exercise of our Arif Jokate before going to the lunch. I think need to have a little bit exercise. And here is a batsman. Umpire Arif is getting little bit extra duty because it's not so easy in this condition. Again, the third time in this over. Again, 3 consecutive wide deliveries here, and the Arif now thinking about if he stand in the same position. It's after the 3 balls, the 3 wides, and it's not a good start for any bowler. And because 39 is not a big total to chase down, they need to restrict all these extras. This is a better line. It's a better line there from Alfaz. At last he managed to get his line and length. And the batsman Yashin has got a single for that. With that single, scoreboard now moves on to 4 on the board without loss of any wicket. After this match, the second round match will go into start. Little correction. Yes, Nazar ninth block versus Toko to friends. The last match of the first round. And I request both the team's captain, please report for the toss. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು. Nazar ninth block. I request any member out here of Nazar ninth block, please report here immediately to sign the official chart. Outside run of off time going to be a delivery which is well within the reach of the batsman. Batsman just misjudging that one, thought it might be a wide, but it's well within the reach of the batter. So Munna just watching that line where the things went wrong. But bowler did a good job here. Alfaz again beautifully bowled. Wicket keeper behind the stump up. And umpire says not out. Now umpire will go into have a conversation. Sometimes it's very difficult to hear the sound of the bat involved for the ball or not. But wait, need to be a little bit. I think the batsman might be is missing the ball. The wicketkeeper behind the stump did the job, but always the benefit of doubt is definitely going to the batsmen whenever the umpires has got umpire got doubt in the mind. Always it's going to the benefit, and it's given out, caught behind the wicket, and there might be the inner edge. The umpires again right arm. Let's look at the replay, but it's very difficult sometimes for the umpire to decide the just reaction of the wicketkeeper behind the stump, and
So first wicket is back into pavilion and of NFC Angaragundi. They lost their first wicket, caught behind the wicket of the bowling of Alfaz. The new batsman in is Danu, and Danu is a new batter, just came into middle. So at last he's got a wicket in the form of caught behind the wickets. The new batsman in is Danu will going to take the strike. And bowler Alfaz, right arm balls. They're going for the drive. Oh, the fielder not deliberately, but he's lost his balance after he just fields the ball. He wanted to little bit make a quick work, and by doing that, he's just slipped out. And fortunately, no time has done in the relegation. The fielder trying for the run out. He thought it might be a chance of run out. That's why he's a little bit giving extra effort to make the run out. But nothing has happened. The batsman is safe in the non-striker's end. And here is again bowler Alfaz. Right arm bowls again beautifully bowled. They're going for the quick single in the relegation. Chance of run out in the striker's end. Now umpire going for the third umpire. Will it going to be out or not? But whenever they're going to be a direct hit, it's always going to be a close call. Now we're going to see the third umpire decision. And Nasir Bajal is referring for the third umpire to give the decision here. But it's always going to be a disaster. If it's going to be a run out, it's always going to be a disaster for team Angaragundi. They doesn't want to lose the wicket because already they lost one wicket in the form of caught behind the wicket. Now one more wicket here, but so sometimes it's very difficult to say because even the ball hits the stump. We need to see when the bails are off. When the bails are off, it's going to be a very key here. And ball which definitely hits the stump, but when the bails are off, need to see one more time here. Need to see the one more time that third umpire to see that whether the bails are off because we're not having the LED bails. If it's the LED bails, you're going to give it the perfect decision. But if it's not LED bails, then it's going to be looks like the bails are off, but batsman is safe. Not out, which is a call from third umpire. Because of course the direct hit, but when bails which is approved it from the stumps, it's take a little bit time, and that's why the batsman is safe. The bails which is dislodged very lately, and that's why the batsman is safe. Luck going in favor of batsman, and scoreboard is 5 on the board for the loss of 1 wicket. Yashin is safe there. He will go into face next delivery of Alfaz. Round the wicket delivers. Oh, bowled him, cleaned him up. Even though it's a little bit luck for him, but he's not really converting that luck into the big total. Is back into pavilion. First over completed after completion of over number first. It's 5 on the board, and really nothing a stroke. Look at that. The batsman not reading the line, and just wanted to play against the line and pays the penalty for that. And NFC Angaragundi have lost their one more wicket. The 5 for the loss of 2 wicket, and a disappointment beginning here for the team. NFC Angaragundi have lost their 2 wicket for just 5 runs, and now the things are looking very tougher for the team NFC Angaragundi. But NFC Angaragundi, they can bounce back this match because they're not chasing a big total, the huge total, just a 39 to win the match from 36 balls, and then already 5 runs which is scored. That means a 30 ball remaining. They have to get another 34 runs to win this match. 30 ball, 34 runs required for the victory. Alfaz really got a very good start from the ball. Required run rate now goes into 6.80 runs per over. The current run rate is 5 runs per over. And need to see that NFC Angaragundi not let increase that required run rate. They need to keep that required run rate in the same level, under 7. If it's going to be over 7 and over 8, then the problem will going to start for Angaragundi to win the match. It's 30 ball, 34 runs required for the victory. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But it's important over here for Angaragundi because they're playing their last over of their power play. And in this particular over, if they manage to get at least 8 to 10 runs, they will going to open the gate and they can back into this game. But as far as the perspective, the winning perspective of Amimar is concerned, of course they needed one more good over
to back into this game. The bowler is brought into attack from the commentary box, and Nasir will going to bowl the second over of the power play to Dano. Dano this second going for the drive, little bit movement of the feet where he was standing, tried to play away from his body towards the cover point region, missing it completely. Of course, it's so difficult game when you're coming to the under-arm cricket. We are talking about the technical point that the feet which is not moving, but it's very difficult to move your feet because ball coming very quickly. No time for you to move your front foot. That's a problem actually when you're playing under-arm cricket. But over-arm cricket is a totally different game. You got a lot of time to move your feet towards the line of the ball, but in under-arm cricket, the little time to move your feet. That's why the problem starts. So that's what I'm talking about. Look at that one. Again, the batsman is not really able to put his front foot towards the line of the ball. Again, they try to play the away from his body. Again, the bowler is testing him with that line and length, and the batsman quickly realizing that the weakness of the bowler after bowling the first ball, which is outside the line of off stump, and batsman fails to make a contact with the bat, and then he completely missed out. Now Shafi is a new batsman having some word with his partner Danu, maybe talking about the technique to implement. That is the right technique. Little bit shuffled across the line of the delivery. I think is the right technique because initial moment. What you're talking about, the initial moment, so important in under-arm cricket. Of course, you have, after taking a guard, the middle stump and leg stump, you are standing your leg stump, and initial moment maybe taking you to very close to the line of the ball. When you make a little bit initial movement towards the off stump, then you are very close to that line. That's what really technique is all about in under-arm cricket. 33 which is required, 27 which is the ball remaining. Again now beautifully balled. Nasir has been outstanding in this line and length. He's always testing the batsman in that perfect line. Very consistency, isn't it? The line and length is concerned. He bowling that the same line and length which is outside the line of off stump. And when you're bowling the power play overs, I think this is really going to be a good line to bowl any right-hander batter. Again, Nasir bowling away from us. Right arm over the wicket to Shafi. Shafi going for the mighty stroke, missing the line completely. You miss height. What bowler is did in that occasion after bowling a 4 consecutive fantastic line outside the line of off stump. The one delivery is thinking about to need to ball into the stumps. Seeing that batsman little bit frustrated, his runs which is not really coming in this particular over. He just tried to break the shackle. By doing that, just look at that one, a replay. The kind of delivery which is bowled by Nasir, absolutely fantastic incoming delivery. The batsman without seeing the line of the delivery, going for the mighty stroke, missing the line completely. Now Angara Gundi are looking in a trouble. 6 for the loss of 3 wicket. And Amemar are looking in a top. So batsmen of NFC Angaragundi need to think and bat, because he can't win the match by hitting the ball. But a sensible batting like rotating the strike is so important. You can't neglect singles in this particular match. Of course, the 6 overs game is always going to be a difficult one. But at the same time, again, bowler bowls. Beautifully bowled, perfect one, absolutely perfect one. What is good stuff here from the bowler, absolutely magnificent piece of bowling. 2 overs completed, 2 overs completed. And after completion of over number 2, it's 6 on the board without loss of any wicket. So 2 overs completed, difficult time continues here. 6 for the loss of 3 wicket, 33 which is a run required from 24 balls. And fantastic bowling performance continues here from Angara Gudi. A little bit question from Amemar, and
Now the captain of the side. Clarification is Harris is not a captain. Samad is a captain of the team. Harris will going to be the experienced campaigner for the side, bowling round the wicket to the right-hander batter Danu. Round the wicket balls, pass ball. It's going to be a wide. Punishable from umpire. Right call from umpire because ball is just going away from that line. Even Harris little bit have a question with the umpire, but umpire rightly so just about moving delivery, deviating. And wide call by umpire rightly so. 7 for the loss of 3 wicket. Harris again right arm over the wicket. Balls nice that one, but the placement is not good. The fumble from the fielder, so that they're coming back for the second. They're grabbing the opportunity of the fumble from the fielder, and with that couple of runs scored Namuza to 9 for the loss of 3 wicket. The captain is making a misfield here. Samant down at deep long on is a very good fielder actually, but sometime in this particular cricket ground it's not so easy to judge. Yes, some uneven bounces you need to tackle with, especially in the fielders fielding in the outfield. Again, right arm round the wicket bounce. There's some nicely driven that one wide of that mid-wicket fielder, but before that mid-wicket fielder will go into to collect that one, return that one into the hands of wicketkeeper. Ample time for the batter to complete the single. With that single scope, was under 10 for the loss of 3 wicket. In this batsman, in this particular over, both the batsmen they batted very freely. They're hitting the ball very well. That's what is really required for an FC Angaragundi. And you need to rotate the strike. You can't play many dot balls. Each and every dot balls will going to create the problem. This time again, the one more dotted. What are you talking about? The dot ball chance of run out in the strikers, and now again it's going to be a third umpire. Of course, after having a lunch, Iqbal looks like he will go into relax, but the field umpire is not giving any opportunity for Iqbal to relax, and he's giving a lot of work here for Iqbal to now to judge whether the run out which is out or not out. But Iqbal will go into see here. The technicians of King Sports. The technician Izaz is a very, very technically sound, and now is giving a perfect angle and out, which is a call from umpire. Iqbal, after seeing that the batsman is a short of crease, and absolutely is a short of crease, no doubt at all. It's a good decision there from umpire, and more than anything else, the technicians have done a great job of King Sports giving that Rizwan is absolutely is a man behind the King Sports, especially which is when you are going to the third umpire, the run out chances and stump out chances, and the technician is definitely going to be a key man. The Rizwan of King Sports so far done a great job, and giving a lot of evidence to get the best result of that third umpire decision. One more wicket is back at the pavilion. 10 for the loss of 4 wickets. Struggle time continues here for Angaragundi. Unfortunately, the batsman fails to contribute, showing some urgency. Once it looks like going to be a partnership progressing, then run out which is taken place. So new batsman in is Manu is on strike. Safwan is on strike. Again they're going for the single. Again the opportunity. Oh my goodness! Harris, instead of hitting the stump, hitting the batsman. Oh my goodness! There's nothing wrong with that running, because the man who is a new batsman is running in a right angle, the Safwan. But just look at the bowler on his follow through. Is fix the ball, try to hit the stump. That time batsman is come across that throw, hitting the batsman. Fortunately, it was a tennis ball. If it is a if it is in overarm, it was if it is a cricket ball, it's a different story. The batsman definitely going to be injured for that throw. This time opportunity run out. What really going on here for Angaragundi? The march past continues here from the batters of Angaragundi. Once again, one more run out taken place where there is no run at all. There is no chance at all for run out, but they're going for the single, and no response coming from this partner. Rightly so. This look at the Danu, and it's a good piece of fielding there by the short mid-wicket fielder. And Danu wants a single. His partner is not responded, and wicketkeeper at was first attempt he misses the bails. In the second attempt, quickly realizing that you need to remove the bails if you want to get the result, and the second attempt completes the job here. So 11 for the loss of 5 wickets. All we can see that Angaragundi are looking in a deep trouble.
half of the batsmen are back into pavilion just for 11 runs. That shows the accuracy of the bowling and even the accuracy of the fielding by team Myanmar against Angaragundi. So over number 3 is in progress. The new batsman in is Guru. And wait and see how Guru will going to contribute from his bat. He need to lift his team from the danger. Oh, lovely delivery, beautifully bowled there by the bowler. Excellent over is comes in and here from the bowler Alfaz. What a fantastic little Harris in dedication. Beautifully bowled. 1 over, no made and 5 runs, and responsible for the 2 run-outs in this over. So again the over number 3 which is completed. Searching for the right track, struggling in the middle. Angaragundi 11 for the loss of 5 wickets. Still long way to go. 28 required from 18 balls. The difference between run and ball is exactly the 10. And I think that 10, if we wanted to reduce, they needed one big over. The one big over which is badly required for the team, and wait and see will they be able to get that big over or not. And before the next over going to start, I would like to invite Mr. Gopi for the further explanation of the match after having a very good he told that he didn't had a lunch yet, and wait and see, and we'll take a short break here, and it's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। और यहाँ पर एनएफसी अंगरगुंडी के बल्लेबाज रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए, तो 11 रन इस वक्त 12 रन इस वक्त बन चुके हैं और 5 विकेटें गिर चुके हैं। 3 ओवर का खेल बाकी है और 3 ओवर में रन्स उन्हें बनाने हैं और 27 यानी 17 गेंदों में 27 रनों के दरकार। 27 मोर टू गेट इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। और अगली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है। 16 गेंदें बाकी है और 27 रन और चाहिए विजय के लिए। तो हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 for the loss of 5 wickets। इस बीच यह गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। गेंद इस वक्त टकरा चुकी है स्टंप्स पर, गेंद शायद टकरा कर निकल चुकी है इस वक्त और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 13 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 26 रनों की दरकार और विजय के लिए, जबकि 15 गेंदें बाकी। ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 9th ಬ್ಲಾಕ್ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस वक्त मोहम्मद इमरान नए बल्लेबाज के रूप में और ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम। बल्लेबाज ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद स्टंप्स पर इस वक्त टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और यहाँ पर विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए और परेशानियां और यहाँ पर बढ़ती हुई एनएफसी अंगरागुंडी के लिए। देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस, मच स्ट्रेट डिलीवरी, जस्ट वांट टू प्ले दैट वन विद द रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड, द बॉल पास्ड बिलो ऑफ हिज बैट एंड स्टक टू हिज लेग स्टंप एंड दैट इज द विकेट नंबर 6 एंड दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 13 for 7 एंड स्टिल दे हैव लॉन्ग वे टू गो। 26 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 14 balls. Just they got 4 wickets kept intact
And this is an absolutely difficult time is now continuing here for the batsmen of NFC Angargundi, and a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of young friends Ambemar. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ आक्रामक बल्लेबाजी ही इस वक्त एनएफसी अंगरगुंडी को इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस वक्त ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अ फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर एंड अ फैंटास्टिक ओवर हैज बीन केम्स टू एंड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज एनएफसी अंगरगुंडी के सही राह को तराशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक एंड 13 रन they managed to score for losing 6 wickets, 7 wickets in fact they lost, 13 runs on the board and still 26 more now they have to score for victory in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 13 runs per over. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ 1 15 ಗಂಟೆ 2 15 1 ಗಂಟೆ तो इस वक्त समद गेंदबाजी प्रारंभ करते हैं। पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन गेंद मेरे ख्याल से शायद स्टंप्स पर टकरा चुके हैं। हालांकि बल्लेबाज कुछ खुद हैरान रह गए कि गेंद किस तरीके से स्टंप्स पर टकराए। मैं यहाँ पर रिप्ले पर देखना चाहूंगा एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट द मिडल ऑफ द पिच एट द लास्ट मोमेंट। तो विकेट नंबर 8 यहाँ पर गिर चुका है। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है बेहतरीन गेंद के जरिए। 13 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड फिफ्थ ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट पर लेगो। 11 balls remaining, 26 required. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. This is the last call for all the players of Nazar 9th block to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So 26 required of 11 deliveries and just they got 2 wickets kept intact. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद बॉल्ड आउट, अगेन अ विकेट फॉर द बैट बॉलर. तो one more wicket fallen. It's 13 for the loss of 9 wickets and the disaster continuing here for the batsmen of NFC Angargundi. They got last wicket in their hand. 26 they have to score for victory in remaining 10 balls with help of remaining last wicket. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। अंतिम बल्लेबाज लास्ट बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल फॉर एनएफसी अंगरगुंडी। और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, 1 रन लेग बाय के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स नाउ विद दैट लेग बाय रन द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू स्टिल 9 balls left in overall calculation and their innings. 25 more runs now they have to score for victory and absolutely a difficult task in front of NFC Angargundi at this situation. The गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग के दिशा में खुद स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज ने मना किया नॉन स्ट्राइकर रन बल्लेबाज को रन दौड़ने से। आखिरकार स्कोर बोर्ड यहाँ पर रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए
दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 14 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गई है। ये गेंद इस बार उछालने के प्रयास में चूके और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है। 5 overs completed, 14 runs on the board, 9 wickets lost, and 25 to get from last over with the help of last wicket. ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಟಿಎಫ್ಸಿ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಎಫ್ಸಿ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So last over starts in their innings, 25 to get. First ball of the last over of their innings is now coming up off stump. 2 for Afsadi, off stump missing. Wide declared by umpire. And a single run added to the total in the face of extras. With that single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 9 wickets at the start of the 6th and the final over. And again, the bowler bowls. Lofted in the air. This could be a chance. Fielder getting underneath it. And he took the catch successfully. That's it for this match. Comprehensive victory for Young Friends Amema by 23 runs. They defeating NFC Angargundi, and with that 23 runs comprehensive victory, Young Friends Amema are through to the next round of this competition. So man of the match of this match award still yet to be decided. Just we have to wait for a moment. Nazar ninth block won the toss and what the decision they are taking. Just we have to wait and see. So man of the match, the award goes to the man who batted very well, scored 17 runs, including 2 boundaries in 17 deliveries. And in the bowling department, he also captured 1 wicket. And because of this all-rounding performance, he bagged the man of the match award. Aris of Young Friends MMR adjudged man of the match award. I request Aris of Young Friends MMR please come out to the rise and receive the man of the match prize from our organizers. So that's it for the third match of the first round of the day 2 of IFC Trophy Season 2 2023, and the last fourth and the last match of the first round of the day 2 of YFC Season 2 2023 match is now coming up between Nazar 9 block versus Tokkot Friends Circle TFC, and that match starts with the result while Nazar 9 block won the toss and won the decision. They are taking just one wait and see, and we'll be back right after the short break with myself Gopi, when the match will going to commence right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
I request all the players of this match, please start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. I request the openers of Tokoto Friends Circle TFC, please go for bat. So the fourth match of the day 2 of YFC Trophy Season 2 2023 is now going to begin between Nazar 9th Block versus TFC Tokoto Friends Circle, and Nazar 9th Block after 1 draw they elected to feed first. The first ball of the innings of TFC is now coming up from the ends of Isham. Here he bowls reverse shot, this time played down to a short cover, gone through for a quick single and get it comfortably at last. और जोखिम भरा रन था इस वक्त, और गेंद को इस वक्त खेला था रिवर्स शॉट के जरिए पॉइंट पर तेजी के साथ रन इस वक्त पूरा करते हुए, और निशाना इस वक्त चूकता हुआ, और एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर TFC यानी टोकोटो फ्रेंड सर्कल का शुरू हो चुका है. 1 रन 90 रन से नुकसान के इशाम गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. सुलेमान और किशोर अरबिक बल्लेबाज. सुलेमान पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं. किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज इशाम फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर जारी, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करते हुए. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद. बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर के नहीं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट सिर्फ 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनाती है. गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना था, रन के लिए दौड़ पड़े, और इसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के बदौलत किशोर का विकेट यहां पर गिर चुका है. गेंद वहां पर गई थी, रन लेने की जोखिम उठाई किशोर ने, कोई रिस्पांस नहीं नॉन सेकंड बल्लेबाज द्वारा, और आखिरकार देखिए यहां पर किस तरीके से होता है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और गेंद पहुंची शॉर्ट टर्न पर, तेजी के साथ गेंद पर झपके फील्डर, और तेजी के साथ गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट उन्होंने उखाड़ दिए, और बल्लेबाज किशोर को कोई मौका नहीं इस वक्त अपने क्रीज पर वापिस लौटने का. तो
पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. फर्स्ट विकेट लॉस्ट. नाउ TFC तो कुट फ्रेंड सर्कल आर 1 for the loss of 1 wicket in the first over. Ashraf, number 3 batsman is now coming out to the middle for TFC तो कुट फ्रेंड सर्कल. और वो इस वक्त अंसार, माफ कीजिए, अशरफ नहीं, अंसार नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और जहां तक का सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो अंसार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इशाम की ओवर की अगली गेंद का, तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इशाम इस वक्त तैयार. जहां तक अंसार का सवाल है, इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन, 2 फील्डर मात्र. फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. पावर प्ले के अंतर्गत दाइना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड खूबसूरती के साथ, लेकिन लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लॉन्ग ऑफ पर. सिर्फ एकमात्र रन यहां पर मिलेगा. बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त, करारा प्रहार किया था स्ट्राइट पास द बॉलर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. जब तक गेंद स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड होकर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार करे, गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा. लॉन्ग ऑफ पर सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इशाम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात तो बढ़ता विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में. रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इशाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस बार गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज अंसार, जो कि 1 रन के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी पिछली गेंद पर खाता वो खोल चुके हैं. अपनी अगली गेंद खेलने को तैयार. और इशाम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया, टॉप एज मौका फील्डर के लिए मिड विकेट पर, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, एनफील्ड क्लियर करना चाहता, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई और मिड विकेट पर 20 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर तैनात है उन्होंने कोई गलती नहीं की. थोड़े से अपने पीछे की जाते हुए 20 गज के दायरे के बाहर गेंद को उन्होंने लपका. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था देखिए. गेंद को हल्के से टॉप एज पर टकराई और आसान सा कैच कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट इनसाइड द फेंस, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है. स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यू हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ तो कुट फ्रेंड सर्कल, और 3 रनों के योग पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है. और कुल मिलाकर उनकी पारी का पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. तो दिस्टी हसन इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और इशाम अपनी ओर की अगली गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ तो इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद थी. अंतिम क्षण में गेंद आती हुई अंदर की ओर, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाया. पहले ओवर की समाप्ति. 3 for the loss of 1 wicket. Slower start for the court friend circle after being losing the toss and put it to bat by नजर 9th block in the 4th match of the day. और 5 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है. और इससे पहले कि दूसरा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का खुद काल सुनाने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. So first ball of the over number second starts with a beautiful delivery, just a moving delivery outside on of off stump, and the batsman just wanted to get that one into the cover region but missed it completely from the bat, Suleiman, and there is no chance at all for any run. Sahil
is the bowler. He's been introduced from the commentary box, and second and last over of the power play, beautifully bowled against the line against Suleiman. Wanted to swing that one, but not coming to the line of the delivery. It's a difficult line to play the shots on the onside region, but he can play the short stroke towards offside region. Missed it completely, then there is no chance at all for any run. Right arm over the wicket, ball sacked, and again that was a good line outside the line of off stump. Again the batsman completely beaten. Really not understands what the kind of delivery what Shahil is bowling, and so far Shahil is winning the race against the batsman. Three very good deliveries to start with, and batsman now started to feel a little bit pressure. Now Suleiman is batting on 2 out of 5 deliveries, now facing his next delivery of this over. Suhail, 4 time in this over. Away from us, keeping one fielder in the deep long on and one at deep extra cover. Beautifully bowled, perfect one. Now I think the Suleiman is really need to look for some different technique, isn't it? After playing 4 consecutive dotted deliveries, now Suleiman definitely is in a more pressure, and wait and see how Sahil will going to capitalize that pressure. About him, that's what we're talking about, the capitalization of the pressure. After saying the batsman is doing a lot of mistakes by hitting the ball, now the bowler thought, now it's time for me to hit the stumps. Has bowled a one good delivery into the stumps. The batsman looking for the reverse sweep, really not understand the turn of the delivery. Beautiful leg cutter, and batsman Suleiman unfortunately is back into pavilion, and the wicket number 3 is back into pavilion now, looking in a deep trouble. Just look at the delivery, beautiful, isn't it? Just I want to see the replay. Everyone will definitely going to enjoy that kind of deliveries. Those who are watching a live telecast of this cricket tournament through King Sports, having a fantastic live telecast of this prestigious YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor in association with the Little Kingdom Phones Bahrain. Quite unusual scoreboard. It's a 3 for the loss of 3 wicket. So new batsman just came into middle is a Suhail. Yeah, it's not Suhail, it's a Yaya. Oh, this time maiden over. Fantastic maiden wicket here from the bowler. It is the first maiden of the day, number 2. Yesterday there is 1 or 2 maidens over bowled, and today is a man who got registered his name as a maiden over bowler. The third maiden over bowler of this tournament, Suhail, has bowled a magnificent over. And the maiden wicket, really the consistency in the line and length is so good here from Suhail. And now team TFC Tokoto are looking in a deep trouble. Absolutely they're in a deep trouble. 3 for the loss of 3 wicket. Very slow progressing here for the team TFC Tokoto. They're going exactly 1.5 runs per hour. Quite unusual. Usually the first 2 over of the power play is going to be a batting team. Will definitely going to dominate, but here is the bowlers of Nazar, 9th block, dominating, fulfilling some very good players from Krishnapura Chokobetu, the Surat Color region, and there came in a very formidable playing 11, and this is sensible. That's the sensible which is required in the early of the innings, isn't it? And Dishti is the man who really picked up a single by tapping the ball in front of cow point region. And that's what all about the cricket, isn't it? Cricket, everyone thought the 6 hours game means hitting the ball, but it's not like that. We even need to look for the rotation of strike as well. Isam bowls. Oh, he was saving that one. Fielder is there. The wicketkeeper behind the stump. Try to hit the stumps, but here is a run out taken place in the non-strikers, and disappointment and disaster which is continues here for TFC Tokoto. Just he wanted to play the reverse sweep. Ball after hitting his leg. Ball is not too far away from the wicketkeeper behind the stump. But his partner he almost started his run. But unfortunately, the batsman Yaya is back into pavilion in the form of run out. It's 4 for the loss of 4 wicket. Yaya is a very popular name as far as cricket is concerned in the region of Tokoto, the Ullal. But unfortunately is back into pavilion, not really judging the run, not his mistake, but his partner is wanted a run, and late reaction there from the striker costing a wicket. It's a 4 for the loss of 4 wicket. Isam bowling away from us, right arm over wicket balls, going for the drive, got outside edge of the bat, but not more than a single there. That is a little bit protection is given behind the wicket, the advertisement banners.
some dignitaries' name which is written in this the banners, the politicians and the businessmen who are really contributed for the success of this cricket tournament. Again, a nice little one up and over. So, and that was one of the safe stroke to play as Kalandar picked up a single for that. With that single, score number was on to 6 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. Very slow progressing for TFC Tokoto, quite understandable. Isam. This time a ball is in the air, but ball will go into landed safely after one bounce collected by the deep cow point region fielder. Not quite get controlled that stroke there from Disti. He wanted to hit the ball towards extra cover, but ball is little bit has got top edge and ballooning up in the air, but landed safely. 7 for the loss of 4 wicket. Again, outside edge of the bat. Both the batters are doing a right job dealing with the singles in this particular over. So one more over completed, and in this over the wickets have fallen, but 5 runs which is taken. And after completion of over number 3, searching for the right strike, and TFC Tokoto, the man is to score 8 for the loss of 4 wicket. 3 overs completed. After this match, the second round will going to start. It's a quarter-final. It's not quarter-final, free quarter-final between D2M Ulaibetu versus Jolly Friends Bajal. So that this is a first call for both the teams. Client request you to command and report your team and sign the official chart as soon as possible. And we are having a shortage of time. Please cooperate with the organizers. The time is time will not going to wait for us, and we need to follow the time. 2:35 is the time in the afternoon. Outside enough time. Tick is outside the edge of the bat. Chance of run out there in the strikers, and wicketkeeper shying at the stumps. But fortunately for the batsman, that ball missing the stumps, and batsman survives. Otherwise it's going to be one more wicket of TFC Tokoto. Is definitely going to be back into pavilion. But luck little bit favoring for Kalandar. Now this team will going to face. Disti will going to face beautifully bowled. Perfect one there from Shahil. The kind of over is bowled in the previous over. In his first over is bowled maiden over, the maiden wicket. And in this particular over, he bowled 2 very good deliveries and considered just a single. Fantastic performer Sahil from the ball. Bowling right arm over the wicket delivers. Oh, what a delivery! Unplayable, isn't it? Absolutely right on the block hold. It's absolutely a screamer. Just look at that one. It's not so easy to bowl that kind of deliveries in underarm cricket. It's a Yorker land delivery in underarm cricket. It's so difficult. Just look at that one. Absolutely Yorker. That was a fantastic. This is really a peach of the delivery there from the bowler. The wicket number 5, which is back into pavilion. It's 9 for the loss of 5 wickets, and TFC Tokoto are looking in a deep trouble. So I really impressed that Shahil's that ability of bowling that Yorker land delivery, because his ball, all the deliveries are all on the carpet. The one delivery is bowled really surprised the batsman, because the batsman not really expecting that kind of Yorker land delivery from the bowler. He's just waiting for that ball which is coming from along the carpet. But all in sudden, when he's seeing that ball is coming in the air, floating in the air, and ball is just digging right in the spot, and unplayable Yorker land delivery, which is dismissed the wicket of Disti. Ashraf is a batsman, is came into middle with a lot of responsibility. Some partnership is badly required for TFC if they wanted to get some fighting total against ninth block, Nazar ninth block. Outside enough off stump, wicketkeeper fails to collect the ball, but no question of any run block after hitting his hand. Ball went straight to the hands of a strip cordon fielder, and there is no chance at all for any run. 9 for the loss of 5 wickets. It's very hard to combine the runs against a disciplined bowling performance by the bowler. Again, outside edge of the bat. Again, they're not going for the run. It's a fantastic over is in progress here from Sahil. Just a single run conceded in this over as well. Already picked 1 wicket. The last over, which is a maiden. Now it's one run he conceded. Now he's bowling right arm over the wicket. Sahil bowls beautifully bowled. Fantastic over is comes in. Just a single run. Just I want to see the bowling figure of him. It's one of the best bowling figure I want to mention you in this particular tournament.
YFC Trophy. 2 overs, 1 maiden, 1 run, 2 wickets. Oh, fantastic. Outstanding bowling figure. 2, 1, 1, 2. So, this definitely it's going to be a match-winning performance bowling, isn't it? 2 overs, the 6 overs format of games, when your bowlers bowl that kind of overs, I think the captain must be pleased with the performance of this young man, Sahil. Just conceding a single run, picking up 2 wickets. The bowling, the maiden over is not so easy. The 4 over switch is completed. Struggle time continues here for TFC Tokoto. 9 for the loss of 5 wicket. Last 2 overs remaining in the innings. 12 balls remaining and at least 15 to 20 runs which is badly required for Tokoto. Outside the non-leg stump and a ball which is going to be a wide. Imran is the bowler. Is brought into attack from the commentary box and one more very experienced player, Imran. Bowling right arm round the wicket. A lovely delivery, beautifully bowled there by Imran. Imran got experience of playing for Young Friends Surwa as well at 1 year. So 10 for the loss of 5 wicket. Imran right arm round the wicket. Balls beautifully. All this time stump out. The batsman Ashraf is well out of the crease. The Imran bowled that beautiful delivery around the legs of the batter. Then wicketkeeper behind the stump just waiting for the opportunity to complete the formalities of stump out. Just look at that one in replay. And that ball passing between the wicket. And that time the batsman is out of the crease, isn't it? The wicketkeeper completes the job. One more wicket is back into pavilion. It's a 10 for the loss of 5 wickets. They're deep in trouble now. 10 for the loss of 6 wicket. In fact, the 6 wickets back into pavilion. Is the new batsman in? Shakir to face Imran. Driven nicely by new batter towards the fine leg region for a single. They not coming for the second as well. Good running with the wicket. Shakir picked up a couple of runs in his first ball itself and taking the team total into 12 for the loss of 6 wicket in the over number 5 in progress. Imran Senior, because they got one more Imran from Krishnapura to Chokopettu. Both the Imrans are played for Young Friends Surwa. Imran Junior also one of the fantastic all-rounder. So good over from Imran is in progress now. And just 4 runs conceded in this over by Imran. 13 for the loss of 6 wicket. Imran bowling away from us. Right arm round the wicket balls. This time drives that one Ashraf down to short mid wicket division. Not for the big run, just for the single. So with that single score, Budna moves on to 14 on the board for the loss of 6 wicket. Last delivery remaining in this over. A very bright and sunny, but at the same time it's a very lazy afternoon, and the runs which is hard to combine. Appeal for leg before, but it's a leg by called by umpire Iqbal. One more over completed after completion of over number 5. TFC Tokoto are struggling in the middle. 15 for the loss of 6 wicket. So last over going to start from the commentary box end. Drives that one nicely down to deep long on region. Neat collection there from the deep long on fielder. Excellent collection. Not easy for the fielder who are standing in the deep long on. Little bit up and downs we can see in this particular place, deep long on region. So excellent collection there from the fielder and one more run. They're going for the quick single and they managed to complete that quick single. And Uzi is the bowler is brought into attack. And total score of TFC Tokot is moves on to 17
for the loss of 6 wicket. So this is the last match of the first round, and we are going to the second round. And the all second round matches will be of 5 overs. And just want to see the time which is remaining. It is not enough for organizer to organize a 6 hours game, so that 5 hours game, the 1 over will go into deduct for the second round match. Outside line of off stamp, wide signal umpire. One more addition to total addition of that single score numbers on to 18 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. Drives that one nicely down to deep cow point region. They're running hard, looking for the second. In comes the throw. It's going to be a chance of run out, but the throw is not good enough. Throw is not good enough. At the same time, the power is not there in that throw. And that's why the batsmen completed a couple of runs. That needed to take the risk because TFC Tokoto desperately wanted the runs in this final over. They're not having enough runs on the board. I request the two teams please report here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ D2M ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಾನಚಿಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. So one more nice looking drive. This time they're running out. This time coming for the second. Oh, this is a suicider, isn't it? This is a suicider. But I think the non-striker actually, a little bit absence of mind. The striker actually wanted the non-striker to come to the striker's end so that he will going to retain the strike. But seeing that the batsman thought it might be a chance of run out, so he is going back. Just look at that one. A little bit of comedy of error. And back into pavilion. He's back into pavilion. So one more wicket is back into pavilion. But there is no other option at all for the TFC Tokoto. They have to look for some run. It's a 21 for the loss of 7 wicket. The last delivery of the innings is coming up. Imran is the new batsman, number 9 batsman. Imran will going to take the strike. At least the boundary and over 6 will going to take TFC Tokoto into a little bit competitive total. And wait and see. Last ball. Ever tries that one. Beautiful looking strike towards extra coverage and a good piece of fielding there by Sam. Look at the throw there from Sam. But it is not quite enough. It's not quite enough to stop the couple of runs here from the juice two batters of TFC Tokoto. At last they completed their 6 overs quota and they managed to score 23 runs for the loss of 7 wicket by losing 7 wickets and they set a target of exactly 24 to win this match at a required run rate of exactly 4 runs per over and 3.80 runs per 60 runs per over is a run rate which is progressing, but 4 runs per over is a required run rate for team 9th block to win this match. So thank you very much NFC. That is the first time the 9th block is completed their 6 overs quota win 24 minutes. I think it's a big hand. The round of applause is required for the team 9th block because even their fall of wickets, number of wickets is a fallen, but still they managed to finish their 9 overs quota within 23 minutes. It's outstanding. And thank you very much NFC. Thanks very much for 9th block, another 9th block for your quick work and finished your time with that 6 overs quota within 23 minutes. And it's a lesson for other teams. They can do that and they can finish within 25 minutes each and every team. Meanwhile, once again I request two teams please ready. Jolly Friends Bajal as well as D2M Ulaibe to two teams. Captain, please note that you need to complete the formalities of signature. At the same time, we need to complete the toss before the 2 hours power play 2 hours before completion of 2 hours.
Welcome back for the match number 4 and the innings of ninth block. The run rate required, I already mentioned, is 24. 4 runs per over. The 24 is going to be target. Target going to be 24. 4 runs per over is the required run rate. And opening batters are made their way to the middle of the pitch. Nihal and Saz. Nihal is the one who bowled magnificently, and now he's came into bat here. And we will see how we'll go into ball. How we're going to not Nihal. It basically is a little correction. Sahil is the bowler. Little correction, was bowled fantastically, but Nihal is a striker, and Munna is a bowler. Will go into ball, and before the ball over, will going to start to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर 24 रनों का 24 the target for नजर 9th block and their innings now going to start. तो पहली गेंद पर एक रन इस वक्त बनाते हुए नजर 9th block के बल्लेबाज. Runs are begin for them. It's one without loss in the over number first in progress. Nihal and Shaz the openers. और शाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट बेहतर गेंद को घेरा खूबसूरती के साथ इनटू द कैप एज वेल, बट लेकिन गेंद पे ज्यादा रफ्तार नहीं और जब तक 20 गज के दायरे के बाहर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 2 रन बन चुके हैं. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाज गेंदबाजों ने तो कोटो फ्रेंड सर्कल टीएफसी के बल्लेबाजों को सिर्फ 23 रनों पर रोक कर रखा है. अब 24 रनों का लक्ष्य उनके सामने है. उनकी पारी की शुरुआत हो चुकी है. 2 गेंद फेंकी जा चुकी है और 2 गेंदों में 2 रन यहाँ पर बन चुके हैं. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी. केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में. 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के. मैच नंबर 4 इसे दूसरे दिन का वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. और गेंदबाज मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. 2 मात्र फील्डर मुन्ना के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद. और मुन्ना ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार मुन्ना गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शास के लिए ये गेंद ऑन साइड पर टॉप एज लेकिन 2 स्क्वायर. इट्स गॉन 2 स्क्वायर एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट. Only single has got that fourth stroke and with a single run the scoreboard moving up to 5 without loss. The over number first in progress. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 23 रनों के अंदर रोक कर रखने का तो कुट्टू फ्रेंड्स का सर्कल टीएफसी के गेंदबाजों को एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने के पहले ही ओवर से. और इस बीच मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद स्विंग करना चाहा चूंकि गेंद ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. तो इस बीच रन से 5 रन मिल चुके हैं बिना किसी नुकसान के और 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. और पहला ओवर यहाँ पर पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है और स्कोर है इस वक्त 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. First over completed and 5 for the loss of 1 wicket after completion of first over.
तो दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ और ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी। इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में अपील इस वक्त जारी, लेकिन यहाँ पर अंपायर इस वक्त बढ़ते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं। तो इस वक्त इकबाल के पास जो अंपायर है बढ़ते हुए और दोनों बल्ले अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 5 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। So he's gone this time. He's got a deflection on that at the last point after being hitting to his leg. He's got a deflection after being deflection. The ball hit to his leg and collected by the fielder. And because of that, he rolled it out, and that is the wicket number first. It's 5 for the loss of 2 wickets at the start of the second over for Nazar ninth block. साहिल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया ऑफ द बैक फुट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ओह मिसफील्ड इस वक्त, थोड़ा सा मिसजजमेंट, हालांकि गेंद अंतिम क्षण में काफी नीचे रह गई थी टिप्पा खाने के बाद और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पर। और अपनी अगली गेंद लेकर ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो अगली गेंद के लिए तैयार इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ लेकिन 2 स्क्वायर। So 7 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ नजर रहा नाइन्थ ब्लॉक गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं एक बेहतरीन गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत अगर नजर नाइन्थ ब्लॉक के बल्लेबाजों को 23 रनों के अंदर रोक कर रखना है तो बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन देने की कोशिश करते हुए इस वक्त टीएफसी तो कॉन्फ्रेंस सर्कल के गेंदबाज। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए काफी बाहर। एक बार फिर से वाइड का इशारा, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। तो अगर 23 रनों के अंदर नजर 9 ब्लॉक के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो निस्संदेह गेंदबाजों को इस डिपार्टमेंट पर इस काबू प्राप्त करना होगा, नियंत्रण प्राप्त करना होगा, खासकर वाइड के डिपार्टमेंट पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त। गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है। टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तीसरा विकेट गिर चुका है 10 रनों के ऊपर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
Next match, D2M Ulaibetu will takes over Jolly Friends, the first match of the second round. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. So that's the story at in this ground, and fantastic tournament is now progressing here in the name of YFC Trophy Season 2 2023, with proudly organized by YFC Bajal, Nanthoor, Mangalore in association with Little Kingdom Phones, Bahrain. And this tournament is now progressing along nicely. So the number 5 batsman is now comes out to the middle. नंबर 5 बल्लेबाज यासीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाज की गेंद इस बार दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। हालांकि गेंद में ज्यादा पेस नहीं था, लेकिन इस गेंद की गति को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड एट द मिडल ऑफ द पिच, जस्ट लुक एट दिस। गेंद राउंड द विकेट पे गई, मच स्ट्रेटर लाइन, गलत लाइन पर खेल गए। He's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap, struck to his middle of stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 4. And now, ऐसा कहना पड़ेगा, with this dismissal, they are looking in trouble. It's 10 for the loss of 4 wickets, and a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of TFC, Tokko 2 friend circle. और अब मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है. 10 for the loss of 4 wickets in the over number 2 in progress. So 14 required, exactly 3.5 runs per over, the required run rate for them at this situation. And still in overall calculation, it's going to be 24 balls remaining in the innings. 24 के बाकी 14 रन चाहिए विजय के लिए। और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते इन हालातों में बल्लेबाज नजर 9th ब्लॉक के। हालांकि सिर्फ 23 रन टीएफसी तोक्को फ्रेंड सर्कल के बल्लेबाजों ने बनाए थे, लेकिन उस 23 रनों की संख्या को, रन संख्या को का समर्थन करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज टीएफसी के गेंदबाज, और फलस्वरूप इस वक्त समस्याएं खड़ी होती हुई नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों के ऊपर। 4 विकेट इस वक्त खो चुके हैं और 10 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ। अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, इस बार चूंकि ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और अंपायर इकबाल इस वक्त पहली चेतावनी इस वक्त देते हुए गेंदबाज को डेंजर जोन पर प्रवेश करने के कारण और स्कोर रुक चुका है 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। और गेंदबाज इस वक्त मुन्ना अपनी दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर एक बार फिर से रन नहीं मिलेंगे। रन्स इस वक्त रुक चुके हैं काफी देर से 10 रनों पर, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुन्ना, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पहला पर टकराई, अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर एंड वन मोर बैट्समैन डिपार्ट्स फॉर नजर 9th ब्लॉक। Much straighter line. I want to just look at in the replay. That was a straighter one, absolutely plumb in front of the wicket. No contact between the bat and ball, and that is an absolutely plumb in front. So 5th wicket gone, and struggling time continuing here for the batsmen of Nazar 9th block. It's 10 for the loss of 5 wickets. 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर और अपनी पूरी क्षमता काबिलियत के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तोक्को फ्रेंड सर्कल टीएफसी के गेंदबाज फलस्वरूप हर रन के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त करते हुए नजर 9th के ब्लॉक के बल्लेबाज। जब टीएफसी ने सिर्फ 23 रन बनाए थे तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाज इस लक्ष्य को आसानी के साथ पार कर जाएंगे, लेकिन एक घातक गेंदबाजी संगठित करते हुए टीएफसी के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में किया और बल्लेबाजों को अपने काबू में रखते हुए 5 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ 10 रन प्रदान करते हुए। अब कुछ हद तक तख्ता पहली बार भारी लगता हुआ यहाँ पर टीएफसी का
the nearby friend circle are looking just a little bit of in top at this situation. 5 wickets down, 10 runs on the board for नजर 9th ब्लॉक और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट मुन्ना की ओर के अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाह चुके एक बार फिर से विकेट कीपर चुके लेकिन गेंद को बैकअप किया गया इस वक्त शॉर्ट फाइल लेग पर रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर रुक चुका है 10 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव किया स्टॉप लेकिन क्या छूट चुका है रनआउट का मौका लेकिन रनआउट का मौका यहां पर जा चुका है और यहां पर मुश्किल सा मौका था आई थिंक इज गोना हैंड ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट एंड एट द लास्ट मोमेंट द बॉल वाज फ्लिक्ड आउट ऑफ हिज हैंड चांस ऑफ रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड लेकिन जो थ्रो फेंका गया था फील्डर का बल्लेबाज के पीठ पर टकराता हुआ और आखिरकार बल्लेबाज जोखिम भरा रन सुरक्षित यहां पर पूर्ण करते हुए 11 रन बच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी लास्ट बॉल स्टिल रिमाइनिंग इन दिस ओवर द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर नाउ विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और फिर से एक बार मुन्ना गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लंबे कद के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि पूरी तरह गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और इसी के साथ फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एंड वन मोर गुड ओवर इन टीएफसी क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू केम टू एंड आफ्टर 3 ओवर्स Nazar 9th block are now struggling. It's 11 for the loss of 5 wickets. 13 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. And required run rate जो है उतना खास इस वक्त नहीं है उतना खास कठिन नहीं है इस वक्त लेकिन सवाल उठता है इस वक्त विकेटों का 5 विकेटें इस वक्त खो चुका है नजर 9th ब्लॉक का और निस्संदेह यहाँ पर एक साझेदारी का जहां तक सवाल है पार्टनरशिप का तो इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप की उन्हें सख्त जरूरत चौथा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए सोहेल जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सदाकतुल्लाह जबकि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद इमरान दोपहर का वक्त लगभग 3 यहां पर बचते हुए 3:07 मिनट बच चुके हैं और धूप का प्रकोप अभी भी कायम मैदान पर गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी भी इस वक्त करते हुए जो इस वक्त मैदान के इर्द गिर्द मौजूद हैं और जहां तक सवाल है खिलाड़ी और प्रेक्षक दोनों इस भीषण गर्मी का एहसास करते हुए और जहां तक सवाल है इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई वाईएफसी ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत तो चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ थर्ड ओवर स्टार्ट्स फोर्थ ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार गेंदबाज फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की पहली गेंद लेकर सोहेल सदाकतुल्लाह इस वक्त सामना करने के लिए तैयार 13 required in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries. अगली गेंद ये गेंद चेप किया इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े से पीछे और जब तक गेंद को वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का 12 रन बन चुके हैं 12 रन और बनाने हैं और 17 गेंदें अब बाकी उनके पाले में और इस बीच सोहेल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार इमरान सामना करते हुए सोहेल की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टोज गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची इस लिमिट ऑफ क्षेत्र पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और जहां तक इस मैच का सवाल है तो मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है द मैच स्टिल स्टैंड्स इन अ बैलेंस फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े नो सेकंड पर खतरा लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर
13 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस बीच दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए और बातचीत करने के बाद वापिस अपने स्थान पर लौट कर इस वक्त स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सदाकतुल्लाह तैयार सोहेल की गेंदों का सामना करने के लिए। The scoreboard stage at 13 for the loss of 5 wickets, 11 required for victory। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई, एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। Has got just a single for that। और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, 14 for the loss of 5 विकेट। अभी भी 10 रन और चाहिए विजय के लिए। सोहेल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, लेकिन उतनी ही बेहतरीन तरीके से गेंद को वहां पर रोका गया। हाफ स्टॉप इस वक्त करते हुए पॉइंट के फील्डर, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और हारिस इस ओवर में अंतिम बार एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ वो गेंदबाजी करते हुए, और गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के लंबे बल्लेबाज सदाकतुल्लाह के लिए। अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस बीच वाइड की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अंतिम क्षण में अंपायर ने एहसास किया, उन्होंने जाना कि गेंद और बल्ले का संपर्क हो चुका है, तो अपने वाइड को वो वापस लेते हुए और यहाँ पर सही गेंद घोषित करते हुए सही तरीके से, और इसी के साथ चौथा ओवर से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs, 9 to get now in remaining 2 overs with a required run rate of exactly 4.5 runs per over। और 12 गेंदे 9 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए। 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और मैच जो कि अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। स्टिल द मैच इज इक्वली बैलेंस्ड। इमरान गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सिर्फ 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉट एक्स्ट्रा कवर, गली शॉट, फाइन लेग और शॉट स्क्वायर लेग, जबकि डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त मौजूद। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास, और इमरान ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तो पहली गेंद लेकर इमरान इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सदाकतुल्लाह के लिए गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई इस वक्त लंबा सीमा रेखा के अंदर या बाहर देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से गेंद को रोका गया था बेहतरीन तरीके से वहां पर फील्डर ने सीमा रेखा के अंदर, और यहां पर अंपायर इकबाल यहां पर बढ़ते हुए वहां पर पूछताछ करते हुए कि क्या गेंद को रोकते समय फील्डर सीमा रेखा को पार कर चुके थे या नहीं, लेकिन अंतिम क्षण में वहां पर दर्शकों ने बताया कि गेंद को बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के अंदर रोका गया था। तो इस बीच बल्लेबाज को रन से मिले सिर्फ 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक था सदाकतुल्लाह का, स्ट्रेट ओवर द बॉलर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इस वक्त गेंद को खेला था स्ट्रेट हिट एरिया पर 2 रन प्राप्त करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ा तो नहीं, लेकिन गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है सिले डाउन क्षेत्र पर, रन से नहीं मिलेंगे। तो 2 गेंदे इस वक्त फेंके जा चुके हैं, 10 गेंदे बाकी, 7 रन चाहिए, 7 to get from 10 balls। और द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, और गेंदबाज इमरान सदाकतुल्लाह के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद हवे में, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट। और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर, 6 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 9, 6 to get from 90 deliveries। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इमरान इस वक्त तैयार,
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार पैडल स्वीप गेंद को खेलना चाहा, गेंद को कहां गई है गेंद पहले उन्होंने देखा नहीं, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर उनकी ओर दौड़ कर आ रहे हैं, उन्होंने दौड़ना शुरू किया। आखिरकार 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। सिर्फ और सिर्फ 6 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 8, 6 रिक्वायर्ड। इनफैक्ट 19 रन, माफ कीजिए, इनफैक्ट इट्स 5 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। 8 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए, 8 गेंदें बाकी और 5 रन चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन मिलेगा 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 रन अब और बनाने हैं, गेंदें बाकी है 7 और एक बेहतर साझेदारी यहां पर बनती हुई सदाकतुल्लाह और इमरान के बीच में। और ये दोनों बल्लेबाज पारी की भागदौड़ को यहां पर संभालते हुए अपनी टीम को मंजिल की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए। और इस वक्त कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। शॉर्ट फाइनल को फील्डर को इस वक्त हटाकर तैनात किया जा रहा है मिड ऑफ पर, सिले मिड ऑफ पर। और इस बीच गेंदबाज तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। इमरान दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद पैडल स्वीप करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, शॉट थर्ड मैन पर, फील्डर का थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे। 1 रन मिलेगा, लेग बाय का इशारा। 21 द स्कोर, 5 विकेट्स डाउन, 3 to get फ्रॉम लास्ट ओवर। और 10 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है छठे विकेट के लिए। 10 रन ऑलरेडी नाउ एडेड फॉर द 6th विकेट सो फार, इनफैक्ट 11 रन एडेड। 5वां विकेट गिरा था जब स्कोर था 10 रन, और उसके बाद 11 रन ये दोनों बल्लेबाज बटोर चुके हैं और अपनी टीम को अपने मंजिल के अति निकट लाकर खड़ा कर चुके हैं। 3 रन चाहिए अब अंतिम ओवर में। तो इस वक्त काफी बातचीत यहां पर चलती हुई कि अंतिम ओवर किसको दिया जाए, और काफी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है गेंदबाज, जो कि इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए कलंदर, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सदाकतुल्लाह के लिए। सदाकतुल्लाह इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद लेकर कलंदर गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हैं। पहली गेंद, ये गेंद चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स, इनफैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री एंड ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद द बाउंड्री। और 5 गेंदें बाकी रखते हुए नजर 9th ब्लॉक ने इस मैच को जीत लिया है 5 विकेटों से। बेहतरीन छठे विकेट की साझेदारी जो बनी इमरान और सदाकतुल्लाह के बीच में, और अंतिमकार सदाकतुल्लाह ने चौके के साथ इस मैच को जिता दिया है। और नजर 9th ब्लॉक इस मैच में विजय रहा 5 विकेटों से टीएफसी तोक्कोटू फ्रेंड सर्कल के खिलाफ, और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। So man of the match of this match award goes to Sahil, who bowled brilliantly, and he captured 2 wickets for conceding. He captured 1 wicket, in fact, for conceding. 2-1. The figure shows for Sahil 2 overs, 1 maiden, 2 runs, and 1 wicket. 2 wickets he took. This is for his outstanding bowling performance. He bagged the man of the match award. Request Mr. Sahil, please come on to the dais and receive the man of the match prize from the organizers. Next match. Next match is now coming up live exclusively right in front of you, and before that I'll announce one more tournament's announcement in this ground. Friends, in fact it's this tournament will play on Bantual Friends Group, Kaikamba BC Road,
ಇದರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ 20 ತಂಡಗಳ 5 ಓವರ್ಗಳ 11 ಜನರ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ 21 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬಾಬಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೈಕಂಬ ಪರ್ಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 60,006 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 30,003 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಶತಕಾರ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 SVS ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ಹಾಗೂ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 18 ಹಾಗೂ 19 ತಾರೀಕಿನಂದು SVS ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ all the best of luck for the all forthcoming tournaments in this season, and we will be moving on to the next match which will be starts within just a short while, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to commence right after the short break. Thank you. Dhanyavad.
So welcome back. The toss ceremony is going on. The captain of Jolly Friends won the toss, selected to and wait for the just waiting for his decision. Captain of Jolly Friends won the toss against team D2 Yamulai Betu. So please note 5 overs game and 2 overs going to be a power play, and there is no much difference in the power play overs. Of course, the two fielders to be allowed outside the circle in the 2 overs and power play overs, and everything is remains the same. Only the number of overs which is reduced from 6 to 5, and all the rules and regulation will going to remain the same for this pre-quarter final match of this prestigious cricket tournament. D2 Yamulai will going to take on Jolly Friends Bajal, and it's going to be a very good match. And I request you to D2 Yamulai to extra player. Please report to the commentary box immediately. D2 Yamulai ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. First ball, first run, and wait for the umpire signal. Is a leg by call by umpire. So Farooq will go into ball the second ball. The first ball is a single. The Naushir, of course, misses a ball from the bat. Ball hitting his leg, so that leg by call by umpire. Extras to start with here for D2 Yamulai Betu. The first match D2 Yamulai Betu defeated NFC Bajpe. It's a low scoring game. NFC Bajpe really fought hard for the victory, and it was a nail biting finish, and D2 Yamulai Betu managed to win that close encounter, and they managed to get the place in the pre-quarter final. Rafiq swept the run, straight to the answer fielder, and it's going to be a chance here for the third umpire. And because umpire Arif Jokate might be thinking that it might be a very close one, so that why can't get the help from the third umpire, and third umpire Nasir Bajal will going to get the result here, will going to be out or not. It's going to be very interesting, and
the heartbeat of all cricket lovers is going up because he's lost the bat. Once you're losing the bat means it's almost you are in a trouble. Now batsman absolutely short of his crease, out which is a call, and former umpire, third umpire, and Nasir Bajal, the third umpire, giving the decision. Rizwan and Izaz, the technician, along with our friend Badruddin, as well as Naufal, in a cameraman in a straight angle, and at square angle, Chamu and Irfan, the cameramans, so far done a great job for the success of this cricket tournament of King Sports and live YouTube channel. And here is the batsman back into pavilion, and Rafiq wanted a single after swept the ball, and Naushir responded well, but unfortunately he lost his bat from the hand, so that he's got run out. This time, Loudfield is gone. He's gone. Caught behind the wicket, and Ashok behind the stump has been outstanding. This is a really fantastic reflected catch from Ashok behind the stump. Just I want to see it in a replay. The kind of catch behind the wicket, absolutely fantastic, isn't it? Very low down to Ashok there. It's not so easy to take the catch when very low down to the wicketkeeper behind the stump. Almost looks like ball is going to be grounded. Then just above the ground level, he managed to take that catch. A little bit extra bounce. Look at that one. When batsman going for the drive, it's got a little bit deviation as well as extra bounce, and batsman got a healthy edge. Even batsman knows that he got a edge, and that's a body language we can see there from the batter as well as from the wicketkeeper behind the stump. Ashok quickly is up after he got a catch behind the wicket, and once again it was a shackling start for team D2M Ulaibetu. They lost 2 wickets in the first over itself, one in the form of run out and one in the form of caught behind. New batsman is Karthik, is one more little master, talented player for the side. Of course, one who represent Namana Kasaragod, the very useful cricketer, and he will going to face for his first delivery. What a wicket keeping! What a wicket keeping there from Ashok. There, outstanding in a fraction now for second. He complete the job. A little bit outside the line of off time. Karthik wanted to play across the line. Look at that one. The line is different, bat is in a different way, but wicketkeeper, the hand is in a right in a line of the delivery, and he got that fantastic stumping, but not getting the result for that. The Karthik is safe. His back leg is very safe, so that no question of stump out. But outstanding beginning here for Jolly Friends to captain of the side. Farooq leading from the front, and is doing a captain's job for his team in this first over of the power play. Farooq again, right arm over the wicket, balls to Karthik. Karthik drives on, paisley ball, but safely down to wideish long off, extra coverage in fact, and before the longer fielder to run towards his left to field the ball, ample time for the batter to complete the single. Not really getting that much of good timing behind the stroke, Karthik. The intention of Karthik to play that one over the top of the cow point fielder to get the boundary, because of the mistimed stroke is he definitely got one single for that, and is safe, and which is not a ball which is not carried to the field. The first over is in progress. 2 wickets back into pavilion, and Rafiq and the Karthik, the experienced campaigner for D2 Ulaibetu, need to get some partnership again. Appeal for leg before, loud appeal for leg before wicket, but umpire not having a good evidence to get the leg before wicket, because he's operating around the wicket, isn't it? It's around the wicket for the left hand batters. Of course he's bowling over the wicket, but the fact that the left hand batsman is on the strike, it's going to be around the wicket, and ball suddenly will going to miss outside the line, pitching outside the line of stump, and one more run is added to total. Good start there from captain of the side. Farooq bowled brilliantly, and scoreboard is 3 for the loss of 2 wicket. Please note the fielding team, please don't waste the time. The 20 minutes what the time which is given to you, 21 minutes in fact given to you to complete the 5 overs, and only one team which has managed to complete their 6 overs quota in the last first round matches, that is a team Nazar 9th block. They bowled very well, very quickly, and
Mubin is the new bats bowler. Mubir from the commentary box end. And Rafiq will going to be the striker. Rafiq in the previous match, of course, contributed a little from the bat. And now wait and see how we're going to contribute from this big match, the free quarter-final match. Right up over the wicket, Mubir bowls outside the run of off stump, going to be a wide 1+1. Mubir also is really suffering, and even in the first match also is really not getting his line and line proper. Again, that ball is going far outside the run of off tempo. 1+1, 2 more to the total. With that extra score, but Namuzan to 5 on the board for the loss of 2 wickets. Ulaibetu, after losing the toss, asked by the opposition to bat first, and they are not really batting very well in the first over. This time, quite interesting kind of cricketing stroke there from Karthik. He wanted to play the reverse sweep in that switch it. He attempted, but ball has got a leading edge of the bat. And just I want to see it in a replay. What really happened is a top edge, absolutely top edge, and ball went over the top of the wicket keeper towards a declared area. So just a single 6 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Sometimes it's very difficult, isn't it? The ball which is used for this tournament is Olympic. It is pretty hard in the nature. It seems to be pretty hard, but not that much of hard enough for the batter to get any kind of big shots. Even difficult for the bowler, even the difficult for the batter. And first ball, next ball, beautifully ball outside the line of off temp. The perfect line to ball. The Karthik is so good in that region outside the line of off temp, but he is not really able to meet the ball from the bat, misses it complete. Then wicket keeper for a very safe pair of hands behind the wicket. Ashok gathers the ball and back to bowler. Movie again. Bowling with the short on a pass umpire. Right arm over the wicket bounce. Dries that one. Lack of placement. Straight to the hands of short mid on. Little bit fumble there from Tanzim. But quickly recovered so that no question of any run there. So score remains on 6 for the loss of 2 wicket. Now Rafiq is coming down the track having some word with his partner. Maybe they're talking about that rotation of strike, which is more important in the power play. If you are not getting a big stroke, but you need to get the runs, which is very important for Ulaibetu, and to get some good total against team Jolly Friends. Bowled him, clean him up. Fantastic delivery there from Mubir. This is outstanding delivery. This is the one of the fantastic delivery what Mubir will loves to bowl. And he's not really getting that much of good line and length first 2 deliveries. But this is the one, is nip back. Is nip back from long way. Just look at that one, all along the carpet. And Karthik is really left the gap between bat and pad as he was going for the expansive drive on the onside region. Misses the line completely. Ball hitting the stumps. A huge wicket is back into pavilion of Karthik and Ulaibetu have lost 3rd wicket for just 6 runs in the over number 2nd in progress. So successful journey of Jolly Friends really continues in this match, in this tournament as well. In the Netravati Trophy, they came into the big final, and they gave a lot of fight for NM Cricketers Mangalore in the final as well. But in this particular tournament as well, they started very well, winning their first match against NWC Karavali Bittapade, and they're playing their second match against D2M Ulaibetu. So far, it's a good going after winning the toss. Elected to ball first. Mubir bowls again outside the line of leg stamp. It's going to be a wide 1+1, 2 more to the total. With that extra score, would Namuzan to 8 for the loss of 3 wicket in the over number 2nd in progress. This is the one area Mubir need to work out, isn't it? The 5 runs which is conceded in that over, but all we can see that 4 runs which is conceded in the form of extra. The 2 wides, another 2 wides, and 1+1, 1+1 always going to be a bonus for the opposition team when it's hard to combine the runs from the bat. If we see how many runs he scored from the bat, only 3 runs out of 8, and 5 runs, which is a big contribution. And that's what Jolly Friends need to restrict that extras if they wanted to win the match. Again went for the reverse sweep. This time Ashok so good behind the stump, kept the ball very nicely. It's not so easy when batsman going for the reverse sweep. Very difficult to sight the ball, very difficult to see the line of the ball. And the batsman, the wicket keeper behind the stump, judging that line very well to gather the ball. And
gathers it well and back to bowler. Mubir again bowls again nicely off the toes, plays it down to square leg region, misfielder by the fielder, so that batsman grabbing the opportunity of that misfield, and Rafiq coming back for the second. Nice looking flick shot there from Rafiq, but fortunately for him that ball is missed by the square leg fielder, so that he has got an opportunity to come back for the second. So 2 overs completed. Mubir of course is a successful over, but more than anything else he considered some runs in the form of extras, and after completion of over number 2, 7 runs came from that over. And just look at that one, the Mubir's bowling analysis: 1 over 7 runs, and he picked up 1 wicket and 4 dot balls. But Farooq has been outstanding: 1 over 2 runs, 1 wicket, and the kind of over which is required in the power play. And being the captain of the side, Farooq, I think, is bowled well. So please don't waste the time. I request the fielding team to make it past. Of course, the game plan is so important, but you need to complete the game plan strategy very quickly, because 21 minutes you need to complete your quota of 5 overs. After long discussion about the third over, we'll go into bowl the third over, and they are at last decided to bring Kiran into attack, and wait and see how Kiran will go into ball here from the commentary box. And Kiran in the first match not that much of effective. He's got one big shot from the batters of team NWC Karavali Bitabade. And Kiran is a very useful bowler, one who picked up a hat-trick wickets in the Netravati Trophy. Not only hat-trick, it's a double hat-trick. The 4 deliveries and 4 wickets he got in the Netravati Trophy 2023, the tournament which is played earlier. And but his team is not fails to qualify for the finals because of Tazuddin, man who hits a 6 against the same bowler when it's a 6 required, 7 required from last ball. So Kiran backed his bowling mark, very useful bowler, and wait and see how he'll go to contribute from the ball. So Ashrar is the batter, it's a new batter. Will go into face the bowling of Kiran with the jersey number 8, the lucky number. Most of the players wearing their lucky number jersey. This time flum, absolutely flum, right on the money, right on the target. The batsman missing the ball, but the umpire not missing the opportunity, raising his finger. It's absolutely flum in front of wicket. Immediately we can see the reaction of umpire Iqbal. If it is it in a replay, how quickly he raises his finger. It's absolutely flum, isn't it? Immediately, no need to appeal for that. Kiran is turning out and seeing that umpire already raises his finger. He's so happy. And wicket number 2 is back into pavilion. 4 back into pavilion. It's 10 for the loss of 4 wicket. D2M are looking in a deep trouble. The back foot, we can see that the back foot of the batsman right in front of middle stump. And this is what the kind of ball Kiran bowls. Sometime if he hits the decks very hard and getting the ball, moving the ball from the Goodland spot, it's always going to be difficult for the batter to find, because Kiran not only bowled that line, but he bowled with some extra pace, and it's always going to be difficult for the batter to find his line and length, find the line and length which is bowled by Kiran. So due to Betu needed one partnership, because Rafiq is there in the non-striker end, and one batter should give stand for the batter like Rafiq if they wanted to get going. And here is Kiran again bowling with a short run up to the new batsman Rashid. Outside and above stump, wide call by umpire, rightly so. And Kiran this time wanted to pitch the ball outside and above stump, try to defeat the bat of the batter. By doing that, he's just lost his concentration over the line, and it's going to be a wide. 11 for the loss of 4 wicket. Again, balls beautifully driven down to deep long on region for a single. With that single, scored moves on to 12 on the board for the loss of 4 wicket. Very slow cricket is progressing here, and quite understandable that the fielding team and
Of course, fielding team Jolly Friends bowling very well. The bowlers starts with the captain who bowled very well. The first over ball by Farooq, it's a 2 runs. Then Mubir came in, then the bowled over of 7 runs and picked up a wicket. Then Kiran came in and he picked up a wicket so far. And this time nicely driven there by Rafiq. Sweet sound we can see. You can hear the sweet sound from the bat. The Rafiq hitting the ball right from the middle of the bat. And with that single scored Namuzan to 13 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. So, lot of crowds enjoying the game of cricket here in this most beautiful Shantinagar cricket ground. Nicely driven down to deep long off region for a single. So, both the batsmen are doing a right job dealing with the singles. We are talking about the spectators. Now we are seeing some school childrens coming here and enjoying the game of cricket. And students from Bradriya school, some students enjoying the game of cricket in front of our commentary box. And futures of cricket, of course India has got a lot of talents, and especially when coming to the South Kenda district and Kasaragod district, more than the overarm cricket, they love to play underarm cricket. So last ball remaining in this over. It's a prolonged over. It's one wide in that over, so that you have to bowl the 7 deliveries. 15 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining in this over. Again, bowler balls. Nicely flicks that on off his legs down to square leg region for a single. So it's a good thinking by both the batters. They handled very well this over of Kiran. After completion of over number 3 and searching for the right track, Ulai Betu, the man has to get 16 runs after completion of over number 3. 16 for the loss of 4 wicket. Still 2 overs remaining in the innings, and wait and see how much runs they will going to score in the 2 overs. It's a very bright sunny afternoon. Of course, it's the evening now. It's a time exactly 3:45. Still we need to complete another 2 matches. This is the 5th match of the day number 2. And today also we started a little bit late, 10:45. And yesterday also the latest. And I hope that mistake will not going to continue tomorrow, because there's a final day of cricket and we have extra matches. And if you want to complete the matches in a time, we needed all the teams need to be there in a time. Especially I would like to request well done Kalakate as well as Mother India Boliar. I assure that out of 22 players, any one member can be watching live telecast of this cricket tournament. And those who are watching live telecast of this cricket tournament, please note the well done Kalakate and Mother India Boliar. Please to be ready. Please be in a time, because the first match always going to be key. When you starts the first match in a time, it's going to be so easy. But here is the wickets are falling. The wickets are tumbling like a house of cards of team Ulai Betu. Absolutely irresponsible cricketing stroke, isn't it? When you're having the settled batsman like Rafiq, it is not required to play that kind of cricketing stroke, isn't it? Your job is to pick the single and rotate the strike and try to give the strike as much as possible to his partner Rafiq. But here is a batsman playing irresponsible cricketing stroke. Rashid is back into pavilion and the scoreboard is 16 for the loss of 5 wickets. $16 for the loss of 5 wicket, and the bowler strikes the man of the match of the previous match. Harris is fantastic form continues in this match as well. Harris, right arm over the wicket balls, beautifully balled. Wicketkeeper rare mistake because usually is very good behind the stump, but this time it's from the bat, and that's why umpire is not umpire is unmoved. It's deflected from the bat of the batsman. So that very difficult for the wicketkeeper behind the stump to gather the ball.
17 for the loss of 5 wickets in the over number 4 is in progress. Deep cover point, deep extra cover, deep long off. Little correction is left hand batsman is on strike, so that deep square leg, deep mid wicket, deep long on, deep cover point, deep wideish long off. Oh, this time again swept that one down to fine leg region, but waiting for the umpire signal. It's from the bat. Rafiq get that one very fine down to fine leg region for a single. So with that single, Scoper moves on to 18 for the loss of 5 wicket. One of the best sweeper as far as underarm cricket is concerned. Rafiq loves to play that shot, sweep shot, reverse shot. This time a quicker one outside love leg stamp, chance of run out, and it's a direct hit and it's gone. Disappointment finish for the Rafiq. This is what the last thing they want to see here. The followers, the fans of team D2, the losing Rafiq in this situation now. Misjudgment by the batsman. Full toss delivery. He can swing the bat. He can hit the ball anywhere down to deep wicket square leg. Misjudgment costing the huge wicket. Direct hit was always going to be a danger, and Rafiq is definitely well out of the crease, isn't it? Just you can see it in a real play. When there is a direct hit, it's going to be very difficult for the batsman to survive. It's a huge wicket. Is back into pavilion of D2 Ulaibetu. D2 boys have lost one more wicket. 18 for the loss of 6 wicket in the over number of 5. 4 is in progress. So Harris. Right, over the wicket. Nicely turns that one to square leg region. They're going for the single, quick single in the relegation. But again, the ball missing the stumps and the batsman survive. So, scoreboard moves on to 19 for the loss of 6 wicket. Harris is a very young talent, emerging player. And so far he's got a very good tournament from the ball as again he bowls right arm over the wicket balls, and again this was swept that on nicely down to square leg region, but not more than a single protection has been given. Just wanted to see the Harris, the bowling action of Harris almost similar to the Mujib of NM Cricketers Mangalore. It's a bowl that's similar action, delivering the ball last moment. The bowling action is him, and he's got a great future. He's completed that over very nicely bowled there by the bowler, as like he did in the previous match, Harris. And Harris 1 over 4 runs and 1 wicket, and all we can see that fantastic bowling performance continues here from Jolly Friends Bajal, leading from the front. Farooq is one, starts well with a couple of runs in the first over, and Mubir 7 runs and Kiran 6 runs, and now Harris 4 runs. So that's why they're struggling against him to get some competitive total. The last opportunity for the team to get some acceleration, to get some good score. And score 20 on the board. 20 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. Harris, it looks like the player of the match, and his bowling figure 2 overs and 3 wickets. What the bowling analysis of Harris, but he didn't got opportunity to bat. And here is the last ball, last over in fact. And Kiran will go into ball that last over. Very interesting move, because the captain is very economical, and Farooq considered as 2 runs, but they're only thinking about the Kiran because he's so experienced, Kiran. So that captain Farooq thought that it might be Kiran to bowl the last over. He's got a lot of experience behind him. So Kiran again, right arm over the wicket to the right-handed batsman Riaz. Drivan, beautiful shot, nice looking drive down to deep cow point region, but protection has been given. Mubir, the fielder there in the deep cow point region, so that no question of second run with that single score. But moves on to 21 for the loss of 2 wicket. Last 4 deliveries remaining. The very slow cricket is going on. Of course, the lazy afternoon, but at the same time, a lazy batting is continuous here from due to Mulaibetu. But you can't underestimate these runs, because due to Mulaibetu also got some good bowling lineup. Beautiful, absolutely beautiful. Shuffling across the line of the delivery, but he's so confident, isn't it? He's very confident, and just like even across the line of the delivery, one of the wristy player, I would like to remember the big name as a wristy player is concerned, Muhammad Azharuddin.
and one of the masterclass Rishti player, and he's got ability of turning all the deliveries, which is even the ball outside and off them. Just the role of the Rishtis comes into play whenever Azharuddin plays that stroke, especially towards a deep mid wicket and square leg region. And of course, one of the delightful the batsman to watch when we get going. 22 for the loss of 6 wicket. Kiran will go into continue. Bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Oh, lofted! He lofted! And it's going to be a maximum or not. We will say, oh, guys, going and going and going over the two fielders. This is an outstanding cricketing stroke there from the batter. This is what you're talking about. The cricket is all about. The one delivery which is enough. One delivery which is enough. Oh my goodness. Kiran is very hard luck, isn't it? Ball came along the carpet. When the ball is coming to the bat, he's got a little bit the bounce, and it's enough for the batsman to pick that one right from the middle of the bat. Hoisting it over for a 6-run scoreboard. Jumps into 28 on the board. 28 and the last over is a very productive over. Again, a bowler bowling right arm over the wicket bounce. Again, that swinging that one, missing it completely. But this time going to be a chance. Going to be a chance of run out, because Riaz doesn't want to miss the opportunity to handle the last ball of their innings, so that he's not interested for the run. But run out taken place in the non-strikers end. Run out taken place in the non-strikers end. Shuffled across the line of the delivery. Too much. Oh, that ball almost looks like goal. Hit the stumps. And ball just in inches, just in a whisker, that ball is missing the stumps. And just I want to see what really happened. Ball, oh, ball passing between the wicket. Can you believe this? It's a bowled out, but Bale's pitch is not really dislocated. Bale's pitch is not dislocated. And as the batsman is so lucky, if the batsman is going to hit the big shot here, it's going to be a turning point of the match. And Kiran will go into bowl the last ball. Right arm over the wicket bounce. Going for the drive. Going for the drive to the mid-wicket region. The neat collection. Return coming from the fielder. Farooq, the fieldsman. Done a great job. Great throw. Wicketkeeper completes the job. Just a single in the last ball of the over. And run out taken place. And that's it. The 5 overs completed. And after completion of over number 5, D2 boys Ulaibetu, the man is to score at 29 runs and is set a target of 30 to win the match at the exactly required rate of 6 runs per over. And look at the throw from Farooq, absolutely perfect, isn't it? And Ashok has to complete the formalities of making the run out, and no question of asking for the third umpire. The batsman well short of the crease, 30, which is a total. At last, I think the team D2 got some runs what they really wanted, only because of Riaz in the lower down in the order is played a small cameo. The innings which is really fantastic. 10 runs which is scored, which is valuable runs. All 10 runs scored by Riaz in the final over. 0.6 which is came. 31 we're going to be a target. 30 is a target, correction. 29 total score. 30 target for Jolly Friends Bajal to qualify for the quarter final. And before the match will going to start, I request Mr. Gopi to take over the microphone. So before the next over next innings will going to start, there's a time for a change in commentary box as well. And I request Hidayat to take over the microphone, guest commentator, and he will going to have a commentary in our state language, sweet language Kannada. Thank you.
ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. D2 ಗೈಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಇದೀಗ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಸೋತರೆ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ. ಇದೀಗ ದಾಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದವ ಅಶೋಕ್, ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದವ ರಿಯಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಡು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡು ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆತ 2 ರನ್ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಅಶೋಕ್, ನಿನ್ನ ದಾಂಡು ಗರ್ಜನೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಿಯಾಸ್, ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಯಾಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಿಮಾಕಿ ಬತ್ತಿ ಜಲಾದೆ. ದಿಮಾಕಿ ಬತ್ತಿ ಜಲಾದೆ. ಇದೀಗ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಓಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದವ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ದಾಂಡು ಹಿಡಿದವ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸುವ ದಾನಿಗ ತನ್ಜಿಮ್. ತಲೆಯು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನ ತನ್ಜಿಲ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. धन्यवाद हिदायत। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 4 रन बन चुके हैं और पहला ओवर यहां पर प्रगति पर फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस 30 द टारगेट 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तो एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है। जहां तक सवाल है जॉली फ्रेंड्स बजाल के लक्ष्य तक पहुंचने का। और तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रियाज दाहिने हाथ ओवर द राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती विकेट को ड्राइव कर दिया शॉर्ट मिड विकेट पर। थोड़ी सी मिसफील्ड और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और पहला ओवर यहां पर समाप्त तो पहला ओवर इस वक्त पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के 5 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ एक्जैक्टली 30 इन 5 ओवर्स। नेक्स्ट मैच है यंग फ्रेंड्स अम्मे मार्विल टेक्स ओवर नजर 9th ब्लॉक। नजर 9th ब्लॉक
ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, 5 runs scored in the first over after being yet to lose any wicket. 25 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 6.25 runs per over. 25 रन बनाने बचे हुए 4 ओवर में. 25 runs they have to score for victory in remaining 24 deliveries. और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. और जहां तक सवाल है, छक्का जो लगाया था रियाज ने, तो उस छक्के के बाद कुछ हद तक रन में बढ़ोतरी, रन की गति में बढ़ोतरी आई थी. और जहां तक सवाल है, एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करने में सफल D2M उलाइबेटू. पहले ओवर के बाद एक बेहतर ओवर इस वक्त गेंदबाज फेंक चुके हैं. और दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ दाहिने राउंड द विकेट. यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. ऑफ स्टंप से काफी बाहर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद कोशिश अंपायर द्वारा. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज
So second over progressing now. This time played that one with a twisted bat at the down to a gully. In fact, he gets in a single for that. स्ट्रोक 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के. और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर 30 रनों की दरकार निर्धारित 5 ओवर में. और गेंदबाज इस वक्त रशीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सहारे है. गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूंकि मत स्ट्रेट लाइन और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक बेहतर आरंभिक शुरुआत की जरूरत इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल को. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद उछाला इनफील्ड क्लियर करते हुए, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद लगा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. तंजीम के बल्ले से चौका लग चुका है. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वो पहले ही उन्होंने भापा की लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर तैनात नहीं है. जो लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े हुए काफी वाइडर है. देखिए किस तरीके से एनफील्ड को क्लियर किया था खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर. और वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़कर आने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ तंजीम के बल्ले से. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रशीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. और चौका प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके इस वक्त तंजीम अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ दिया इस वक्त झाड़ पहुंचकर शॉर्ट मिड विकेट पर. जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. लगभग गेंद यहां पर निकली थी सीली मिड ऑफ पर ओवर थ्रो के रूप में. और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. 12 रन बन चुके हैं. और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. सीमा ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ and 12 without loss. 11 balls gone in their innings and 19 balls to go in their innings and 18 more runs now they have to score for victory. 18 रन चाहिए 19 गेंदों पर. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तंजीम. और जहां तक तंजीम का सवाल है 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलते हुए और अंतिम क्षण में वाइड घोषित अंपायर द्वारा. और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 in progress. Still the equal battle is now continuing here. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद विकेट चढ़ते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर पैर के जरिए बेहतरीन तरीके से. जब तक गेंद को रोका जाता फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का. इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट. और यहां पर अंतिम क्षण में अपने अंतिम प्रयत्न में गेंद को इस वक्त रोका सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए. बेहतरीन स्टॉप इस वक्त करते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. और 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 2 overs completed, 15 runs on the board. Good start for Jolly Friends Bajal, chasing the victory target of exactly 13 5 overs. They managed to score 15 runs on the board, yet to lose any wicket after the completion of 2 overs. 15 runs more. Now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now coming down to exactly 5 runs per over. जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी तो आस्किंग रन रेट था 6 रन प्रति ओवर. अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद वो आस्किंग रन रेट उतर कर आ चुका है 6 से 5 पर, यानी 5 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त उन्हें रन से बनाने हैं. तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ.
रियाज इस वक्त अपना तीसरा ओवर प्रारंभ करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। डीप कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीधा, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर इस वक्त तैनात नहीं सीमा रेखा के अंदर। जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक इस वक्त सामना करते हुए और रियाज अशोक के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, कलेक्ट किया इस वक्त पॉइंट पर कार्तिक ने, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए कार्तिक और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर and 17 balls to go in their innings and 14 more runs now they had to score for victory। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, गेंद पहुंची गली की दिशा में, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इन फैक्ट 13 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries। हर गेंद पर इस वक्त रन्स बनाते हुए, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत अब तक वो दे चुके हैं और इस बेहतर शुरुआत को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश पूरी तरह वो करते हुए गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट और जब तक गेंद फील्ड और शॉर्ट थर्ड मैन पर एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनके पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक का सवाल है अगली गेंद का, तो रियाज इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, टॉपेज पर गेंद टकराई, लेकिन जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचे सिली पॉइंट पर बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ वो अपना छोड़ यहां पर बदल सके। 19 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अशोक और तंजीम पारी की भागदौड़ को यहां पर संभालते हुए अपनी टीम को एक सही मंजिल की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त D2M उलाई बेट्टू का, तो इस वक्त उन्हें कम बैक करना है तो निस्संदेह चंद ओवर्स उन्हें कसे हुए फेंकने होंगे, चंद विकेट यहां पर उखाड़ने होंगे कम बैक करने के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, रियाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, अशोक दौड़ कर आए ओवर थ्रो के रूप में, बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए और यहां पर इशारा हो चुका है वाइड का। सो 2+1 3 रन्स नाउ एडेड टू देयर टोटल, और इन 3 रनों के साथ समीकरण इस वक्त काफी हद तक आसान होता हुआ जॉली फ्रेंड्स बजाल के लिए। इट्स 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस फॉर जॉली फ्रेंड्स बजाल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। 8 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए और कुल मिलाकर ओवर्स बाकी है इस ओवर के बाद 2 ओवर और इस वक्त देखते हैं कमबैक करने के लिए किस तरीके की रणनीति इस वक्त गेंदबाजी में गेंदबाज अपनाते हैं। रियाज कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं, अब तक 7 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार स्टीयर किया, खूबसूरती के साथ गेंद को बोर्ड किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त खेल दिया था कहना पड़ेगा और कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस श्रृंखला का एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है यूट्यूब पर और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए एक प्रेस्टीजियस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला वाईएफसी ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं वाईएफसी बजाल नंतूर मैंगलोर इन एसोसिएशन विद लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन। गेंद को ड्राइव किया, इस बार सीधे गेंद पहुंची सिली मिड ऑफ पर और इसे बिना देखे रन लेने के हड़बड़ाहट बल्लेबाज ने दिखाए। तंजीम की पारी समाप्त रनआउट के रूप में और पहला विकेट यहां पर खो चुका, तो इस वक्त 23 रनों की आरंभिक साझेदारी यहां पर टूट चुकी है। तंजीम एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 11 रन उन्होंने बनाए, स्कोर्ड 11 runs into his credit and after being playing a good knock for their side of 11 runs Tanzim is backing to pavilion and Jolly Friends Bajal are now losing their first wicket. It's 23-1. Next match Nazar 9th block will take over young friends MMR, so because of that I request
ಟಾಸ್ ಗ ಸೈನ್ ಗ ಸೈನ್ ಆತಿಜಾ. I request the remaining players of Nazar ninth block to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So that's the story, and we are just moving on to this match, and they got 7 runs so far from their victory. 7 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए, और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है. 23 रन बच चुके हैं. 7 रन 2 ओवर में चाहिए. 7 to get from 2 overs. और इस बीच नई ओवर के पहले गेंद, यह गेंद चेप किया मिड विकेट पर. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बल्लेबाज के पास इस बीच मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खाली क्षेत्र देखते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप किया था. थोड़े से सफल होते हुए डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, थोड़े से सीधे, और जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 25 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. 25 for the loss of 1 wicket. Just 5 to get now for victory. गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन सफलतम यहां पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ विजय के और निकट यहां पर हो चुका है जॉली फ्रेंड्स बजाल. 27 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. 3 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए, और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में. The placement was too wrong, and because of that he paid the penalty for that. और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. Ashok, the man dismissed after being playing a well supporting knock of 10 runs. He is backing to pavilion. Runs scored by Ashok. It's 27 for the loss of 2 wickets. Just 3 to get now for victory. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका. तो दोनों आरंभकार तंजीम और अशोक ने बेहतरीन आरंभिक साझेदारी निभाई, और व्यक्तिगत योग उन्होंने दिए. 20 रन कुल मिलाकर. 12 रन अशोक ने बनाए, जबकि 8 रन तंजीम ने बनाए, और उन दोनों बल्लेबाजों की मदद से इस वक्त अपने विजय के अति निकट आ चुका है जॉली फ्रेंड्स बजाल. सिर्फ 3 रन चाहिए विजय के लिए. एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस वक्त गेंद को खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, इसी फील्डर के हाथों में कवर पॉइंट पर, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन 2 गलतियां कर बैठे इस वक्त. पहली गेंद को जमीन पर रखने में असफल, दूसरा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया कवर पॉइंट और बैकवर्ड थर्ड मैन के बीच फील्डर द्वारा. एक विकेट और यहां पर गिर चुका है, तीसरा विकेट, एंड नाउ इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 8 balls left in overall calculation in their innings. 3 runs more. Now they have to score for victory. नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಉಳಿದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು, ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो 3 रन इस वक्त चाहिए. 8 गेंदों पर, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज के लिए गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज गेंद पर ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 28 for the loss of 3 wickets in the over number 4th in progress in their innings. सिर्फ मात्र 2 रन और चाहिए विजय के लिए. जस्ट 2 runs. नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. 7 गेंदें बाकी अब उनके बारे में. 7 balls left in overall calculations in their innings. और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया. गेंद पहुंची स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. गेंद को स्वीप करना चाहा था, अंतिम क्षण में गेंद टॉप एज पर टकराई, और स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट
के बीच जो फील्डर तैनात थे उन्होंने इस गेंद को लपक लिया और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed, 27 runs, 28 runs at the board, in fact, 4 wickets down, and now last over remaining, 2 runs to get from last over. For the next match, young friends Ammemar and Nazar 9th block, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. नौफल गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 2 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए, और इस बीच बल्लेबाज उनकी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है जॉली फ्रेंड्स को। अगर इत्मीनान के साथ हर गेंद पर सिंगल्स भी बटोरते हैं तो पहले 2 गेंदों पे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, डॉट गेंद, तो डॉट गेंद हो चुकी है। ऐसी 2-3 डॉट गेंद अगर गिरते हैं तो मैच में मजा आ जाए। तो यहाँ पर 5 गेंदें बाकी हैं और 2 रन चाहिए अब विजय के लिए। और कुछ बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर इस वक्त वापस लौट चुके हैं और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। नौफल दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ खेला, शॉट कवर पर मिसफील्ड, इस बार फील्डिंग हो चुकी है और तृतीय अंपायर के लिए मांग इस वक्त की गई है अंपायर द्वारा। तो यहां पर गेंद शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में पहुंची थी और इसे बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई और यहां पर विकेटें चटकाए गए। तो देखने वाली बात है कि जब विकेटें चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद सीधे पहुंचे और इस वक्त देखना यह है कि बल्लेबाज का बल्ला बैट क्रीज पर लैंड हो चुका है या नहीं। तो लैंड तो यहां पर नॉट आउट करार दिया गया है और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। 1 रन सिर्फ चाहिए, 4 गेंदें बाकी और अब ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में D2M उलाईबेट्टू को टाई में समाप्त कर सकती है। तो 4 गेंदें और 1 रन चाहिए विजय के लिए। लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस राइट हैंडेड बॉलर। बाएं हाथ के बल्लेबाज दाहिने हाथ के गेंदबाज का सामना करते हुए ये गेंद स्वीप किया शॉट स्क्वायर की दिशा में और इसी के साथ जॉली फ्रेंड्स बजाल qualified into the quarterfinal of this competition, defeating D2M Ulibeto with just 3 balls to spare in their innings, and with that victory they are through to the next round of this competition. Next match, young friends of MMR will take over Nazar 9th block, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you. So Ashok enjoyed the man of the match of this match, who scored 12 runs, 12 valuable runs into his credit in just 13 deliveries, and because of this responsible knock, he enjoyed the man of the match. I request Ashok
of Jolly Friends Bajal, please come on to the dais and receive the man of the match prize from organizers. So match number 5 has been completed just short while ago. Match number 6 of this tournament is now coming up live and exclusively right in front of you between Young Friends MMR versus Nazar 9th Block और यंग फ्रेंड्स MMR टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड टॉस जीत चुका है. देखना है कि उनका निर्धार क्या है. शायद फील्डिंग वो चुन चुके हैं इस वक्त और मैच शुरू होगा एक छोटे से लम्हे के बाद और तब तक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. So, coming back to the match number 6 and match number 7 to be played, winner of this match versus Jolly Friends. So, I request Jolly Friends, please don't leave the ground because you are going to play the next match after this match. And
Welcome back once again for the quarterfinal of this quarterfinal, second feed quarterfinal of this prestigious cricket tournament, and we are into the match, the very good match. Nazar ninth block versus Young Friends MMR. After winning the toss, elected to field first. Young Friends MMR are elected to field first. First ball, nicely driven off the mark, a chance of run out, directed. Suddenly is going to be very close, but the batsman is so quick between the wicket, and straight away Tasleel is off the mark. Tasleel is off the mark with a single. And Nihal will going to be the batter, will going to face his first delivery. The bowler is introduced from the commentary box end is Altaf Alfat, little correction, Alfaz will go into bowl second delivery. Right arm round the wicket, bowls Shahil. Shahil this time going for the big shot. Nihal, little correction, going for the big shot, missing the line completely, but umpire not missing the opportunity to signal the wide. 1+1, 2 extra runs added to total. It's a bonus run for the team. Nazar ninth block, and with that couple of runs scored, but Namozan to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Alfaz, Nihal, again nicely driven straight to the hands of fielder. Opportunity which is created for the run out, and the fielder little bit fumble in the negation, powerfully driven back to mid off. If it is a neat collection, and opportunity which is created for the run out, but batsman survives from that run out. Of course, bowler batsman Tasleel is a little bit lucky there, and again Alfaz bowls. Oh, that was dangerously played there by the batter, isn't it? Almost shuffled across the line of the delivery, exposing his leg stump. It's definitely going to be a very, very difficult situation for the batter, because the ball almost around his legs, just missing the leg stump by a whisker, and the ball kept wicketkeeper behind the stump, kept the ball back to bowler. Excellent delivery indeed there from bowler. This time it was so kind, straight to the hands of fielder, right from the middle of the bat. Nihal managed to send that one, but not really getting the placement what he's looking for, and the contact is very good with the middle of the bat, but placement is not good. That ball went straight to the hands of backward point region, but they managed to complete the single there. With that single, Sky scoreboard numbers on to 5 without loss of any wicket in the over number first in progress. This time nicely driven. They're going for the quick single in the negation. Even the fielder is inside the ring. The 2-3 fielders out in the offside region, but still the batsman Tasleel managed to get the single there. So with that single, scoreboard numbers on to 6 on the board, and just the number of the bowler is also 6. It's a 6 without loss of any wicket in the over number first in progress. This time obvious that is what appeal coming behind the stump, but umpire says absolutely right, that ball going to miss the leg stump. Leg by call by umpire. First over completed. After completion of first over, it was a steady start from these two opening batters of Nazar ninth block. They managed to get 7 runs without loss of any wicket, and wait and see how well they will going to continue that start. But first over 7 runs, it's not a bad over, considering the fact that it's going to be a power play over, and he's just restricting the big strokes like boundaries and the sixes in this first over. And wait and see, we're going to bowl the second over of their innings. It's going to be a very good match actually. Both the teams very well balanced teams. It's very difficult to predict over this match, and but I think it's going to be a 50-50. Both the teams we got a very good quality players in the sides, so they will going to battle hard for the place in the quarterfinal of this prestigious cricket tournament. Of course, one team already qualified for the mega final of this cricket tournament yesterday's. Torpedoes Kana able to qualify for the final of this YFC Trophy 2023. Torpedoes Kana first time in the season 2023 they managed to qualify for the final, and wait and see in local pool which team will going to get the place. But this is a battle actually for the place in the quarter final between these two teams. Again, first ball of the second over. Right slam lofted, but not quite enough to get the distance as a fielder in the long off region, making no mistake at all. So one more wicket is back into pavilion, and with that wicket, the first wicket of ninth block is back into pavilion.
Nothing wrong with the stroke. Just look at that one. He played that one as per the merit of the delivery, but something wrong with the placement. He's just choosing one of the fielder out of two. Only two fielders outside the circle. One at deep wideish long on and one at deep wideish long off. He's choosing one of the fielder. That means it's a little bit disappointment for the batter because he's not really getting the placement right. And that's what we're talking about. The shot selection is so important, especially when playing the power play overs. They need to see where the fielder is, and as per the fielding condition, they need to play the strokes. But unfortunately, a batter Nihal has got a fielder in the deep wideish long of Imran. Is a new batter, will going to join his partner. He's a very experienced campaigner, Imran, the very good all-rounder, and number 3 batter for the side. Just like mentioned about, is the one who's got experience of playing for some big teams like KFC Kodikal and KFC Krishnapura, and young friends Urva also he represented for some tournaments. And again bowler Nasir, right arm over the wicket, drives that one, dry sleep, view and down to deep long on boundary for 4 runs. No need to run for that. Once he cleared the infield, no chance at all for the fielder. He's standing in a wideish long on, but he hit the ball just straight long on, and once it's going to defeat the fielder, then ball is running down to deep long on boundary for 4 runs. Just look at that one. I think it really need to say thanks to the non-striker, because ball is hitting hard and non-striker little bit bending down at the right time, otherwise the ball will going to hit his face. That's all happening in the cricket sometime. The partner really bending in the right time when ball is hits very hard by Imran. And now deep long on is in position. Again Imran tries that one like a placement. I think it's a good change of field. Good thinking there by the captain of the fielding team. Just keeping the fielder in the deep long on, sending that mid-on fielder into short mid-wicket division. And captain Imran down at short mid-wicket, short mid-on region in fact. And here is again outside of off stump and going to be a wide. One more extra. With that extra scoreboard numbers on to 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Nasir bowling with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Imran again nicely bowled. Quicker one, chance of run out. And Imran did a great job. Is just running towards the strikers and non-strikers end, but just is running with the line of the throw, which is coming from the short square leg region. Just look at that one. Imran tried to hit the ball. Just look at the running between the wicket and look at the fielder. Returns the ball. I think Imran did the right job. He is not deliberately, but I think this is sensible thinking which is required for the batter to save his wicket from the run out. It's a 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Now deep long off is there and one fielder in a deep mid wicket. Different field set for different the batter. The left-hand batsman is on strike, Tasleil, and Tasleil is a very well talented left-hand batter, especially in the region of Suratkal Krishnapura. Is a very popular name. Tasleil has got a lot of talent behind him. The useful left-hand batter will go into face the next ball of Nasir, right arm. Oh, beautifully balled. Perfect one. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, but no question of any run there. The protection given behind the stumps, not the fielder, but it's the advertisement board. After hitting that board, the ball went straight to the hands of fielder. There is no chance at all for any run. Now Imran coming towards Tasleil, having some word, because it's needed when you are having a lot of experience. Imran knows that what Tasleil is going to do, and you know exactly what kind of batting required from the kind of deliveries what ball by Nasir. Round the Nasir, right arm over the wicket. Bowler's back drive, again lack of placement. Of course Tasleil tried to pose the ball, isn't it? He's every time try to pose the ball, but he's not getting the timing behind the stroke. One more good over, very good over. Good comeback here by Nasir after he conceded the boundary. Then he restrict the flow of the runs of their opposition. So 2 outs completed after completion of over number 2. It's a 13 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6.5 runs per hour. Now probably it's a steady start. 13 13 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಒಂದು ರಣನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರಂತ. ಸೊ ವೆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್. not captain, of course. Samad is a captain. Harris, the experienced campaigner for the side, will go into ball. And third over of the innings after the power play. Wait and see how ninth block will go into come back. Not having a big runs in the power play overs, 13 runs, but not a bad at all. Not a big one, not a bad. But of course, satisfaction is there in the face of two batters after getting 13 in 2 overs. 6.5 runs per over. They can accelerate that run rate the remaining 3 overs. I request the fielding team, please make it fast. 21 minutes need to complete your 5 overs quota. And spread out field. And so many bodies out there in the deep. One at deep backward square like one at wide-ish long on. Deep long off, deep extra cover, deep backward point are the 5 fielders in the deep. Swept that one nicely down to square leg, running hard for the single. And little bit fumble from the fielder so that the batsman completed that single quite easily. Imran has got a big smile in his face. Of course, he knows that if the fielder able to get that ball right from the middle of his hand, you get the chance for the run out. Again, 14 for the loss of 1 wicket. Over number 3 is in progress. Harris, experienced campaigner who represented for KFC Kodikal. Just driven Taslim, but again, a lot of protection has been given for Taslil, so that very difficult to get the placement and deep long on fielder. In fact, run across his left and fields the ball nicely. So goes scoreboard Namuzan to 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Outside to the answer fielder. That's the end of Imran's innings. Looking for the improvising cricketing stroke by playing the reverse sweep, but is not finding that gap very well. The fielder is just waiting for the catch, and wicket number 2, which is back into pavilion. Just look at that, Imran. Nothing wrong with that stroke, but something wrong with the placement, and the fielder is waiting for that one. And Kishore, the man, then down at backward point division, completes formalities of taking the catch. One more wicket gone after the wicket number 2, which is back into pavilion. It's a 15 on the board, and bowler Harris strikes in his first over, and the strikes well with the big wicket. The wicket of Imran definitely going to be a huge factor in this match. He's the one who got ability of hitting a big shots. So new batsman in is Mubba. The nickname Mubba, maybe the full name will be Mubarak. The Mubarak will go into the new batter Harris. Right arm round the wicket, bounce, drives that one. Settle as a fielder, they're going for Taslil. Struggling in the negation. Oh my goodness, it's going to be a disaster if going to be one more wicket here, because Taslil is a man. He desperately wanted to carry on the business in the remaining overs if his team is wanted to get good score. But losing him in this situation definitely is going to be more trouble for team 9th block. But rightly so, Taslil going back quickly and seeing that there's no chance at all for any run. Harris so far doing a fantastic job. The bowling very tidy line and line, not really settling the batsman for the big shot. Mubba, just a opportunity. Again they missed it. Now I take the opportunity in the striker's end more than the non-striker's end. Opportunities is created in the striker's end, but the fielder in the short square leg region not really seeing the fielder, seeing the batsman is struggling in the striker's end, but he's just wanted to get the wicket in the non-striker's end, but it's too late. Both the batters are completed a single. With that single score, Namuzan 16 for the loss of 2 wicket. The battle is on for each and every run against a tidy bowling lineup of the team. Just absolutely flum in front of wicket. No doubt at all in the negation in the mind of Arif Jokate. Just look at that one in the replay, the kind of delivery. It's a frustration what Taslil is trying many times that wanted to hit the big shot. Just look at the back leg. Where is the back leg? Is right in front of a middle stump, and absolutely flum, and no doubt at all. And Arif raising his finger, and Harris getting one more big wicket here. 2 wickets in that over there for Harris, and he did a great job. Just like I think is an experienced campaigner for the side,
And being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important. I think Harris performed very well in this previous over, picked up 2 valuable wickets for just 4 runs. It's 16 for the loss of 3 wickets after completion of over number 3. The run rate is not that much of good enough. 5.33 runs per over is run rate progressing, but they need to accelerate in the incoming overs. Just 2 overs remaining in the innings. And wait and see how well ninth block will going to come back. And each and every run going to be very crucial in this match, because even ninth block has also got some good bowling department, and they can depend a small total. But first priority of this batter to see that at least they have to get another 14 runs in the 12 balls, takes them into 30 plus runs. And if able to get 30 to 35, I think it's going to be a good score. The captain is in operation. Samad balls first ball. They're going for the second. A little bit misfield, and they're grabbing the opportunity. Just like I'm mentioning about the each and every run going to be very crucial. Maybe they're the fielder in that cow point region, little bit misfield, and grabbing the opportunity. They're coming back for the second. If the throw is right over the bails, then I think the trouble for the batter, because of that wide throw, batsman survives. And they needed. The risk is definitely going to be a part of cricket. Without taking a risk, I think it's very difficult for Nazar ninth block to get some good score against the team. Against the team, what we're talking about, a very formidable team, young friends, Amemar. Going for the sweep shot straight to the hands of field, a chance of run out again, not quite enough. Not quite enough, and not quick enough as well from that square leg fielder. Trying for the run out, returns the ball very quickly, but both the batters are so quick between the wicket, so they managed to complete the single. And both the batters are now quickly realizing that remaining deliveries, they not to lose the opportunity to rotate the strike. Each and every ball they're getting runs. The 3 runs which came in first 2 balls, it's good going. As far as perspective of Nazar ninth block is concerned, it's a 19, which is the total score for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Again, bowler back to his bowling mark, Captain Samad. Right arm over the wicket balls. This time across the line of the delivery, swinging that one ball, missing, but not missing the leg of the batsman. So that leg by call by umpire with that single score. Namoz under 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Samad, being the captain of the side, I think is doing a right job to keeping the batsman quiet. So 3 balls and conceded 4 runs so far in this particular over. 4 times in this over. Balls around the legs, but well within the reach of the batsman. Right call from umpire. Nasir Bajal is a so experienced umpire. I know exactly that ball is well within the reach of the batter's bat, so that rightly so umpire not interested to call that wide. 20 for the loss of 3 wicket. Very important dotted delivery there from Samad. Alright, over the wicket. Bend for the reverse save. Ball is in there. Kishore. Oh my goodness. Kishore doesn't know where the ball is. He is just while try to taking the catch. He is catching the net, not the ball. And just look at that one replay. Ball is in there for a while, and Kishore is running back, and he is just ball hitting the net, and he is just catching the net but leaving the ball, and they got runs for that. And very difficult, isn't it? Very difficult for the fielder to judge the catch, because running back and they need to keep the eye on the ball. At the same time, you need to keep the net which is behind the stump. So 22 for the loss of 3 wicket again. Good looking drive. That's running hard. This time they've definitely come back for the second. In comes the throw. Chance of run out. And I think it's going to be out. No chance to call for the third umpire, because batsman knows that he's well short of the crease. And just look at that one. Immediately when ball went in the gap, both the batsmen trying hard, but a fantastic piece of fielding. It's a very good one and pick up throw. This is a very good one and pick up throw there for the fielder in the deep long on. And right over the bails, and the bowler complete the formalities of making a run out. Fantastic piece of fielding by the fielder, and batsman well short of his crease. So 1 more wicket is back into pavilion, and it's a 23 for the loss of 4 wicket in the over number. Last will going to start. The projected score showing here is a 29. They at a similar run rate, and but I think Nazar ninth block wanted to get more than that. They know exactly they're playing against one more big team like young friends Amemar, has got a formidable team.
They got some good players in the side like Harris, the Samad Kishore, all the quality players in the side. Altogether, 19 boundaries and 11 sixes in the so far in this tournament, which is recorded as per the statistician. This time, one more wicket. One more wicket. Now wait for the umpire signal. It's going to be a stump out or the run out. The looks like it's a stump out. The batsman left the crease. Just I want to see. And the batsman coming down the track. And yes, he missed it completely. Deflected from the leg, and this is a run out. This is absolutely run out. The batsman, the striker, will going to be the out. Rightly so. And umpire calling that batsman rightly so. And it's need to see when the bails are off, which batsman is close to that wicket. Which batsman which is close to the wicket, that batsman will going to be out. And rightly so, umpire calling that batter to come back. So new batsman just walking towards the middle. Isam, just look at that one in a replay. And right decision from umpire. So Harris, correction, not this time left it, but not quite enough. One more wicket is back into pavilion. And Isam, the first ball itself, he wanted to get the clear the boundary line, but by doing that, he couldn't manage to get the distance. He's got elevation. Just look at that one, shuffled across the line of delivery. Ball came along the carpet, lofted that one handsomely, but not at that much of handsome enough to get to clear that fielder deep long on. And one more wicket is back into pavilion. It's a 23 for the loss of 6 wicket in the over number 5 in progress. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ. The figures are falling in area, and at 7th wicket is back into pavilion. Try to get the second run. In comes a throw from the deep. Again, one more good piece of fielding there by the fielder. The man is really good in the throw, and just over the bails, and one more wicket is back into pavilion. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಆ ಚೇರ್ನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. So 24 for the loss of 7 wicket. Outside, oh, fantastic collection, but wide call by umpire. But Sadaqatullah, and he is back into pavilion. And just look at the Sadaqatullah. He's just walking, and the bowler is going to have a great job. Of course, he knows that he's going to be wide, but he knows exactly Sadaqatullah is going to be a key man. You need to pick the wicket of him. His ball deliberately wide outside the leg stump, and he's back into pavilion. One of the most experienced campaigner as far as the team for the 9th block, Nazar 9th block is concerned. Sadaqatullah, one of the most experienced campaigner, one who represented for Tarpuruz Khana for a long time, and one who organized one very good tournament. Nicely driven down to mid-wicket region, little bit square leg region, and
he managed to complete the single for that. With that single, Skobana moves on to 26 for the loss of 8 wicket. And last 2 balls remaining in the innings. Harris is almost did a job here for his team. And job which is not yet over because 2 deliveries remaining. And ninth block required 1 big shot if they wanted to get the good score. Appeal absolutely flum. Flum in front of wicket. Harris getting his second. A really good piece of bowling there from Harris, and again he pitching the ball in the right spot. Just look at that one in a replay, and pitching in a line, going for the safe shot, and batsman across the line wanted to swap that one. One more wicket is back into pavilion. It's a 26 for the loss of 9 wicket. Nazar ninth block now dealing with the last wicket and the last delivery. Last ball and the last wicket of the innings of ninth block. Scoreboard is 26. Not a big total. The 5.38 runs per over. And the last ball is going to be a key here for ninth block to get some runs. Again went for the big shot. Not quite get hold of that properly. Chance of run out. The fielder there in the mid wicket. Will going to make the run out, but here is the batsman completed single, looking for the second. Run out taken place, all out, the bundle out. The last delivery of their innings, they bundle out, and 27 for the loss of all wickets. Ninth block, all out for 27, and they set a target of 28 to win the match for team Amemar. Young friends Amemar, I think the bowlers did a job. Now all up to the batsmen of Amemar to justify the effort of their bowlers. Please make it fast because the time is exactly 5 o'clock and need to complete your game very quickly because we need to complete another match after this. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Just look at the scoreboard of Nazar ninth block summary. Taslim is one who got 4 runs, but highest score which is made by Mubba scored 7 runs, and after that it's a disappointment. Imran scored 5, but all we can see that single digit, all that single digit 27 runs which is scored, but unfortunately there is no double digit. That's why there's struggling, but I think it's a score we cannot underestimate because Nazar ninth block has got some good bowling department. They can fight with this total, and for that I think they needed some good bowling performance, and before the next innings will go into start here, I once again would like to thanks to the sponsors who really supported for this prestigious cricket tournament. Special thanks to the dignitaries like Nazir Bajal, Inayat Ali, MK Saukat Bajal, Moidin Bawa, Ikrit Ashraf Bajal, Nawaz Ali Fried Builder, Jaspiruddin, Shabi Khan, HS Anif, BK Arifrasad, JR Lobo, respected politicians, and of course special thanks to the local corporator. He done a great job. Ashraf Bajal is the one who is really helped us to make this possible. Very good tournament, big tournament. Thank you very much each and everyone who are supported for the success of this cricket tournament. And we are coming to the innings of team Amemar, young friends Amemar, and Gopi. 28 runs required to qualify in 30 balls. Not a huge total, but at the same time you cannot underestimate as well. This kind of total is always going to be a difficult one. If the opposition team is underestimate that, then always is going to be trouble. But more than anything else, Gopi, ninth block has got some bowling department. The experience of Imran, of course, Sadaqatullah, and they got Isam, all is experienced campaigner, and Shahil is the one who's got a good tournament in this tournament, a good tournament from the ball, who bowled a maiden over, maiden wicket as well. So looking at all that bowling department, looks like even 28, it seems to be a little bit run, but I think the team Amemar need to work hard to get that runs, and we are expecting some equal battle between these two teams to get the place in the quarter final.
धन्यवाद सतीश। तो जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के पास बेहतर बॉलिंग डिपार्टमेंट है। जहां तक यंग फ्रेंड्स हमें मार का सवाल है, इस वक्त जैसा कि आपने फरमाया 28 रनों का लक्ष्य है और एक बेहतर शुरुआत की उन्हें जरूरत है। उनके पास सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, तो देखते हैं यहाँ पर इस सशक्त बल्लेबाजी के जरिए वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल अगर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर नजर 9 ब्लॉक के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं तो समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है यंग फ्रेंड्स अबे मार के बल्लेबाजों के लिए। देखते हैं क्या होता है। एरिस और जलाल आरंभिक बल्लेबाज, पहली गेंद को ड्राइव किया, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचे और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करते बल्लेबाज के पास रन रहेगा कोई अवसर नहीं। स्कोर 0 पर रुक चुका है। इशाम गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और आज का मैच नंबर 6 यहाँ पर प्रगति पर 6th मैच ऑफ द डे 2 ऑफ YFC ट्रॉफी 2023 सीजन 2 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी। हरीश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए, एरिस से सामना करने के लिए तैयार, जबकि इशाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट वहां पर चलती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्ड को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर इस वक्त 2 स्क्वायर मौजूद। अगली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर बोलना चाहा, शॉट शुफाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फीड कर लिया गया और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर यंग फ्रेंड्स में मार के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। 28 द टारगेट इन 5 overs they have to score for victory with a required run rate of exactly 5.60 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. Next one from Isham, right arm over the wicket bounce to the right-handed batsman और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना करने का तो जलाल इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज इशाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद जलाल के लिए गेंद को छोड़ दिया इस वक्त मिसजजमेंट करते हुए। अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ा ताकि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। जलाल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार इशाम की गेंदों का। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद इस वक्त पावर प्ले के अंतर्गत और एक बार फिर से इशाम गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दोनों बल्लेबाज आपस में इस वक्त बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट, थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और गेंद इस वक्त ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर एंड स्टिल हैव टू स्कोर 26 more runs for victory and remaining 4.3 overs. In fact, it's 26 more runs now they have to score for victory and too far outside the off stump and again a wide. 3 without loss। अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए और गेंदबाज शाम इस वक्त जहां तक सवाल है 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल, दिस कुड बी ट्रबल, डायरेक्ट हिट और यहां पर मैं समझता हूं अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, तो बल्लेबाज यहाँ पर ये आउट हो चुका है, यहाँ पर आउट दे चुके हैं अंपायर, तो बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। प्रभाव जरूर गिरा और अंतिम क्षण में उन्होंने उंगली जरूर उठाई थी, लेकिन हमें यहाँ पर ठीक से पता नहीं लगा एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था। तो इस बार गेंद को ड्राइव किया था मिड विकेट पर और जब तक गेंद को थ्रो करते स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ थ्रो और इज गॉन, एब्सोल्युटली ही इज गॉन। और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज जलाल, हैरिस माफ कीजिए, आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है 3 रनों के योग पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के गेंदबाजों का, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ एक बेहतरीन शुरुआत उन्हें कर दी है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। अगर 27 रनों के अंदर यंग फ्रेंड्स हमें मार के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर उन्हें दबाव डालना है तो पहले ओवर में 2 वाइड फेंकने के बावजूद अब तक सिर्फ 3 रन प्रदान कर चुके हैं इशाम
और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, कुछ बातचीत करते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर से कुछ कहते हुए कि फील्डिंग की सजावट किस तरह इस वक्त सजानी चाहिए। और समद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो इशाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज समद इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को terrific! This is an absolutely terrific one. मच स्ट्रेट लाइन, गलत लाइन पर खेल गए और यहां पर गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। मच स्ट्रेट लाइन, एक्स्ट्रा क्विक वन और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज को इस गेंद पर कुछ करने का मौका ही नहीं प्रदान किया। गेंदबाज ने काफी तेजी के साथ इस गेंद को उन्होंने फेंकी थी और देखिए किस तरीके से यहां पर यह विकेट गिरा था। बेहतरीन, एब्सोल्युटली बेहतरीन गेंदबाजी। अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को वृद्धि करती हुई बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करती हुई निकल गई, सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई। 3 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियां कुछ हद तक पैदा हो चुकी है। 3 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो 3 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर और बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में शाम इस वक्त कर चुके हैं। जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो इस वक्त अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार इशाम। अशरफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इशाम और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। और दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज अशरफ इस वक्त सामना करते हुए इशाम की गेंदों का। तो इशाम इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका। फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड, 3 रन्स ऑन द बोर्ड। बिग स्टार्ट फॉर यंग फ्रेंड्स। हमें हमारा बेहतर शुरुआत सतीश है, जैसा कि हमने फरमाया था एक बेहतर शुरुआत इस वक्त चाहिए गेंदबाजी में। नजर 9th ब्लॉक के गेंदबाजों को अगर उन्हें यंग फ्रेंड्स हमें मार के बल्लेबाजों को बांध कर रखना है तो एक बेहतर शुरुआत और 2 वाइड फेंकने के बावजूद इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की इशाम ने और निस्संदेह ऐसी गेंदबाजी की शुरुआत की जरूरत थी और अपने काबिलियत के अनुसार इस ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की है। Exactly, Gopi. That's what I mentioned earlier, isn't it? They need to deal with some excellent bowling department of 9th block. You cannot underestimate that total. Especially they got the bowlers like Isham. Isham starts very well. Just you are pointing out that excluding that 2 wide balls, Gopi, and one still managed to restrict the runs. Just 3 runs is considered one of the best over as far as the power play is concerned. Because these 2 power play overs are very important, Gopi, for the chasing team that want to get the runs. But here is a fielding team, 9th block. They're defending very well, and that's why this match is going to be more interesting. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त ऐसी शुरुआत की जरूरत है अगर 27 रनों के अंदर नियंत्रित करना है बल्लेबाजों पर आ चुके हैं इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरा और अंतिम पावर प्ले ओवर यहां पर प्रगति पर और साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाह चुके पूरी तरह, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी और आखिरकार बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे निकले विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाज साहिल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके पूरी तरह, विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाए लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित और बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने की जरूर लेकिन कोई क्षति नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। It's 4 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Slower progressing here now for young friends Myanmar chasing the victory target of 28 in 5 overs. This is an absolutely a slow start for them. तो अंपायर विकेटों को सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और कुल मिलाकर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार स्वीप किया, टॉप एज मौका स्कोर लेग पर लेकिन यहाँ पर इस गेंद को लपकने में असफल
और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिसजजमेंट यहाँ पर हुआ था और गेंद उनके हाथों से छूटी और यहाँ पर एक रन भी बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और अपनी अगली गेंद फेंकने को इस वक्त तैयार। गेंद पर जमीन पर गेंद को 5 से 6 बार टिप्पा खिलाने के बाद अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, लेकिन कुछ हद तक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और आखिरकार अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। हालांकि गेंद के बैक लेग पर जरूर टकराए थे लेकिन कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रहे थे और आखिरकार जोरदार अपील को इस वक्त नकार दिया। तो यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन अंतिम क्षण में इस अपील को नकार दिया अंपायर ने और तो लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी इस वक्त पिचिंग आउटसाइड द लाइन। जहां तक सवाल है स्कोर का तो रन से इस गेंद पर मिला सिर्फ 6 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। साहिल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट उछालना चाह चुके और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो इस वक्त गेंद पर आगे निकलने के बाद करारा प्रहार करना चाहा था, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी और आखिरकार इस धीमेपन को समझ नहीं पाए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर आए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया गेंद को कलेक्ट करने के बाद और 3 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं। स्कोर है इस वक्त 6 रन 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल। Over completed, 2 overs completed, 6 for the loss of 3 wickets. And I request all the players of Jolly Friends to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Jolly Friends ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ. So back to this game and 2 overs gone, absolutely fantastic piece of bowling performance. तो पहला 2 over Satish completely belongs to the bowlers of Nazar 9th block. 6 runs they conceded and they captured 3 wickets. One of them in the face of run out, 2 of them gone into the account of the bowler. और 2 ओवर की बदौलत इस वक्त अब तक कुछ हद तक भारी हो चुका है नजर 9th block का। Absolutely, Gopi. Just like what the Isamis did in the first over, the same thing is continued by the over which is bowled by Sahil. Isam bowled very good first over, and Sahil bowled a second over as of so good one. Absolutely fantastic over, and because of that, I think the match now is going to be very interesting. It is evenly poised. 22 required, Gopi. And asking run rate is now climbed up to 7.33 runs per over, and it's going to be not difficult, but of course in this condition it's going to be a little bit hard work which is required from the batters of MMR if they wanted to win the match. Exactly, Satish, there is no doubt about that. एक बार फिर से मैं दावत देता हूँ यहाँ पर जॉली के सर्व सदस्यों को कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज इशाम जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जलाल जो कि आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 22 का इशारा अंपायर का, और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 21 रनों की दरकार, गेंदें बाकी हैं 17। 17 balls left and 21 more runs. Now they have to score for victory. Still the match stands in a balance. और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। कवर पॉइंट पर एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउल जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और रन इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का, तो इस वक्त गेंदबाज कोई बल्लेबाज को रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे कि वो खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। गेंदबाज इसको स्वीप कर दिया, इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में निशाना टकरा चुका है और थर्ड अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो निशाना इस वक्त टकराया था। तब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं।
और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, क्रॉस एंगल से फेंका गया हुआ थ्रो और गेंद स्टंप्सों पर टकराई। इस बार देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। जस्ट वी हैव टू लुक इट फॉर दिस। No doubt, the call came from the third umpire and the batsman survived in this delivery. तो एक रन उनके खाते में जुड़ेंगे। 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। It's 9 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still the equal battle is now continuing here. और कुल मिलाकर अभी भी अपने विजय से 19 रन और दूर और गेंदे बाकी है इस वक्त 15 गेंदे उनके पारी में फेंके जा चुके हैं, 15 गेंदे और फेंके जाने बाकी। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो इशाम एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्कोप किया, गेंद जाती हुई इस वक्त नेट की ओर। और जब तक गेंद को डीप बैक स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ वो अपना छोड़ बदल सके और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 10 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इशाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बॉल आउट, गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड एंड द बैट्समैन इज बैकिंग टू पेविलियन। तो गेंद लगभग सीधी रफ्तार के साथ थी, कुछ हद तक टिप्पा खाने के बाद गेंद आई थी, गेंद को उछालना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था। मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ। गेंद और बल्ले और पैर के बीच में अंतर, गैप इस वक्त छोड़ चुके थे बल्लेबाज और गेंद उस अंतर, उस गैप से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप पर टकराई। गिलिया बेल्स डिस्टर्ब होते हुए चौथा विकेट गिर चुका है। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप for young friends of Myanmar with this dismissal. Jalal departs. Now it's 10 for the loss of 4 wicket. Young friends of Myanmar are now looking deep in trouble. तो इस मैच की विजेता तो यहाँ पर मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है और देखना यह है कि नंबर 6 बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, अल्फाज। तो 10 रन 10 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अल्फाज तो देखना यह है कि वो किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। तो अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। इशाम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, डीप इन विकेट पर फील्डर वहां पर मौजूद। एक मात्र रन थोड़े से पिछले, दूसरे रन दौड़ते समय बल्लेबाज नॉट स्ट्राइक रन पर, लेकिन अपने आप को संभालते हुए अंतिम क्षण में दूसरा रन प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। और कुल मिलाकर तीसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 overs completed, 12 runs on the board और still the struggling time is now continuing here. सतीश यहां पर वही किस्सा यहां पर जारी है। पहले दूसरे और तीसरे ओवर में भी 12 रन बन चुके हैं और 4 विकेटें गिर चुके हैं। बस 16 रन चाहिए 2 ओवर में। तख्ता इस वक्त जरूर भारी लग रहा है नजर 9 ब्लॉक का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर। अगर इस ओवर में 8 से 10 रन बल्लेबाज बटोरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकते हैं। Absolutely, Gopi. It is going to be a very important over for both the teams. Of course, the ninth block wanted to continue that bowling performance in this particular over as well. But I think a lot of changes which is required. Need to change the gear here onwards. Actually, if you wanted to win the match, MMR need to change the gear. And of course, Gopi, it's going to be very important over. Just like you were mentioning about 10 runs at least, which is required for MMR in this particular over, if they wanted to keep the hope of winning this match for the last over. Exactly, Satish, there is no doubt about that. इस ओवर में कम से कम 8 या 10 रन बनाने होंगे इस मैच में वापसी करने के लिए। और इमरान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 16 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 2 ओवर्स। पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक 20 गज के दायरे के बाहर वो जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रन
4 विकेट के नुकसान पर 15 रन चाहिए 11 गेंदों पर। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ी सी फील्ड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, दूसरा रन नहीं मिलेगा। कोशिश जरूर की बल्लेबाज ने, लेकिन आखिरकार एक ही रन के साथ संतुष्ट। 14 रन बन चुके हैं, 14 रन और बनाने हैं और गेंदें बाकी है सिर्फ 10। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए इमरान, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर फीडर के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग ऑफ के दरमियान और एक रन बल्लेबाज इस बीच प्राप्त कर चुके हैं। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. So a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Nazar 9th block. सिर्फ सिंगल्स के रूप में गेंदबाज इस वक्त रन से प्रदान करते हुए बल्लेबाज को। यह गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंची इस वक्त एक रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर और इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रन से सिंगल्स के रूप में बनते हुए और 12 रन अपने विजय से दूर, जबकि गेंदें बाकी है 8। 12 to get from 8 balls. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। बाई का इशारा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, काफी तेज रफ्तार के साथ बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को बीट कर गई और इस बीच एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 11 टू गेट नाउ, 7 बॉल्स टू गो इन द इनिंग। 7 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए, बराबर का टक्कर यहां पर जारी। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाज की गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े, सेकंड रन पर थ्रो पहुंचा और इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। After being completing a single, they come back for the unnecessary second run, and because of that, one of the batsmen lost his wicket. और सीधा थ्रो पहुंचा, देखिए किस तरीके से थ्रो पहुंचा था विकेट कीपर के हाथों में और बल्लेबाज अपने क्रीज से कोसों दूर यहां पर रह गए और आसान सा रन आउट यहां पर होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। और इसी के साथ 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। सो 3 overs completed, 18 runs on the board, 10 required. लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स, अंतिम ओवर बाकी, 10 रन चाहिए, 9 फॉर टाई, 10 फॉर विक्ट्री। और देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। तो सिर्फ 6 रन इस ओवर में बने सतीश और अभी अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन और मैं समझता हूं अंतिम ओवर में कम से कम एक करारा प्रहार तो इस वक्त करना होगा चौकिया छक्के के रूप में इसमें अपने वापसी करने के लिए फ्रेंड समय मार के बल्लेबाजों को। Exactly, Gopi. Having the little master Kishore in the middle, I think it's going to be possible because he's a very good fighter as far as his career is concerned. I know him. He's the one who has got the ability of never give off, and never give up is always going to be key for the success. And wait and see how well Kishore will going to justify that word, never give up. And 10 runs, which is required for the runs. And Gopi's is not like that. It's going to be the boundary bar or a big shot like 6, which is required, but sensible batting in the sense placing the ball in the gaps and converting single into 2, 2s into 3s. So important for the team to win this match. And wait and see the kind of strategy we're going to implement from these two batters. The last chance for both the teams. And bowling team need to bowl well and batting team need to bat well if they wanted to qualify for the quarter final. Exactly सतीश, इस अंतिम ओवर में इस वक्त संघर्ष जारी है और यहाँ पर पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता चूके डॉट गेंद और अब गेंदे बाकी हैं 10, माफ किए गेंदे बाकी है 5 और रन से चाहिए 10। तो पहली गेंद डॉट हो चुकी है और यहाँ पर पहली गेंद डॉट होने के बाद इस वक्त स्ट्रेट अवे दबाव बल्लेबाज के ऊपर। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है। सिर्फ चौके या छक्के नहीं, हर गेंद पर कम से कम 2 रन भी बटोरते हैं तो अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो पहले गेंद डॉट होने के बाद सहज रूप से नेचुरली दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर और गेंदबाज हुजैब जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 10 रिक्वायर्ड ऑफ 5 डिलीवरीज और गेंदबाज हुजैब अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। Much straighter delivery. The ball came along the ground at the last moment. The batsman just wanted to play the reverse shot, not succeeded. और गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें प्लम्ब इन फ्रंट पगबादा यानी आउट घोषित करने में। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 4 गेंदें बाकी, रन से चाहिए इस वक्त 10।
समीकरण कुछ हद तक मुश्किल होता हुआ यंग फ्रेंड्स म्यांमार के लिए। और नजर 9th ब्लॉक के गेंदबाज इस वक्त छा चुके हैं और अब ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम एक चौका या छक्का जरूर लगाना होगा इस मैच में कमबैक करने को यंग फ्रेंड्स म्यांमार के बल्लेबाज को। क्या होता है देखते हैं अगली गेंद पर। 10 रिक्वायर्ड ऑफ 4 बॉल्स। अगली गेंद के लिए तैयार तैनात ओवर द विकेट। यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन मोर विकेट फॉलन इन द फेस ऑफ रन आउट इन द नॉन स्ट्राइक रन। बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंके थे इस बार, कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर और बल्लेबाज को पूरी तरह खामोश रखने में सफल इस गेंद पर। 3 लगातार डॉट गेंदे, अब 10 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं सिर्फ 3 balls लेफ्ट एंड 10 runs more नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 6 गेंदों पर 10 रन बनाने थे, 5 गेंदों पर 10 रन बनाने थे, 4 गेंदों पर 10 रन बनाने थे, अब 3 गेंदे बाकी है, अभी भी रन बनाने हैं 10। तो 7 विकेट गिर चुके हैं। इमरान हुजैब बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए 3 लगातार डॉट गेंदे इस वक्त वो फेंक चुके हैं और 3 गेंदे इस वक्त फेंकने के लिए वो तैयार, बचे हुए 3 गेंदे और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह चुके, फॉलो थ्रू में 4th कंसेक्यूटिव डॉट बॉल। फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर हुजैब। And now 6 and a boundary required in the last 2 deliveries. अंतिम अवकाश, the last chance in front of the batsman. Driven, that's it. इस बार गेंद पहुंचे सीधी मिड ऑफ पर, रन मिलेंगे 1 और इसी के साथ ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स म्यांमार के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है अगर गेंदबाज इस अंतिम गेंद पर कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते। तो 9 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल, 8 for tie, 9 for win and the last ball of the match is now coming up. तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, हुजैब, ये गेंद, दैट्स इट, 9 runs victory for 9th block. नजर 9th block registered a 9 runs victory against young friends म्यांमार और इस श्रृंखला की सशक्त टीम के खिलाफ बेहतरीन, absolutely fantastic piece of bowling performance shown by the bowlers of Nazar 9th block and they restricted the batsmen of young friends for just 19 runs in 5 overs and this is an absolutely outstanding bowling performance shown by the bowlers of Nazar the 9th block. Yo Satish. Absolutely, Gopi. What a coincidence. 9th block won by 9 runs. And the 9th block won by 9 runs. This is absolutely coincidence, isn't it? And right, Gopi. And just talking about the bowling performance of 9th block, absolutely fantastic. Isam, Sahil, and Imran and Uzib. It's been outstanding. Uzib is the last over. And it's been outstanding. It's unplayable deliveries which is bowled, and I think it's going to be a fantastic performance from the bowlers of team 9th block, Nazar 9th block. Now time to announce the man of the match. So now time for the announcement of the man of the match, and I think it's going to the bowlers who were really responsible for the victory for team 9th block. So that it's going to be a bowler, one who bowled the first over of the power play and restricted runs and bowled 2 very good overs, 2 overs 8 runs and 2 wickets. None other than Isham of Nazar 9th block was judged as the man of the match, and I request Isham to come and collect your man of the match award for your outstanding bowling performance of 2 overs 8 runs and 2 wickets. ದಯಮಾಡಿ ಇಶಾಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. There will going to be a 5 minutes break for the signature, and after that we'll going to start big quarter final between 2 very big teams of this day number 2. It's going to be a Nazar 9th block versus Jolly Friends Bajal.
I request two teams captain please report here for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So back into this game and quarter-final, and the toss which is on by the captain of Nazar 9th block against Jolly Friends Bajal, and wait and see the addition of the captain of 9th block because it's the evening. Time is exactly 5:35, and it's going to be more interesting. The addition is going to be a key, whether they're going to ball post or bat post. But light condition is so good, of course, in the month of February, not an early sunset, it's almost 6:30, it's going to be a good light condition, and we need to complete that this match with the good condition of light. So that I request the fielding team please enter into the ground, and request the opening batters of Jolly Friends please get ready to bat. And looks like it's on the toss, captain of 9th block, they elected to field first, and very interesting because in the previous match they depended the total, and this time they are wanted to chase the runs. So it's going to be very interesting, and wait and see the strategy and the game plan for both the teams to get the place in the big semi-final of this prestigious YFC Trophy Season 2 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor, Mangalore, in association with the Little Kingdom Phones Bahrain, and of course the tournament which is progressing very very nicely under the great leadership of course Nazir Bajal, and of course the corporator, the respected corporator Ashraf Bajal, as well as Jabbar, the three pillars, the pillar of this cricket tournament, and all the members of YFC Bajal, because organizing committee has done a great job just seeing this cricket tournament, because the arrangement which is made for this cricket tournament is outstanding, and it was a really eye-catching arrangement, but seeing that all the advertisement boards which is implemented in the boundary line is very special attraction of this cricket tournament. Apple fly boards which were situated around the ground, and more than anything else, one more thing I noticed in this tournament is that the pitch which is made for this tournament has been outstanding, and whoever is responsible for the pitch, I especially would like to give special thanks, because of that was a strong pitch which is for this cricket tournament. It's a day number 2, but still is a pitch is hard enough and good enough to play another 2-3-5 days cricket. I don't think the pitch will not going to spoil, and this is the greatness of the organizers, and of course the effort of the groundsman, those who are responsible for the making that beautiful and very strong pitch. And coming back to this match, just like I'm mentioning about the strategy, the game plan is so important here in this particular match, because both the teams they fight hard for the
the place in the semi-final. And being the locals, low jolly friends, definitely they're going to get some extra support from the spectators. At the same time, the ninth block, another ninth block, this is definitely they are eyeing towards the semi-final. They knows that this is going to be one more steps which is remaining for them to get the place in the semi-final, and we will see how well these two bad teams will going to qualify. So meanwhile, after winning the toss, the captain of Nazar ninth block won the toss, elected to field first, so that Isham will going to ball the first over, and the captain is walking from the deep, having some word with Isham. And Shahil just having a word. I request Nazar ninth block to continue start the match, because you are the one, you are batting in the last session. If you want to get a good condition, light condition, they need to complete this 5 overs very quickly. The pass ball and outside now off stamp, and Ashok wanted to hit that one in the onside region, missing it completely, and there is no chance at all for any run. Coming back to captain Shahil is quite interesting, because in the Netravati Trophy is represented for Jolly Friends, and even Isham also represented for Jolly Friends, now playing against Jolly Friends. This is all about the cricket. Is very funny game, isn't it? And you can't say anything about the players, when and where they're going to the other team, when and where they're going to play, which team they're going to represent. In one team we are watching him for representing for one team, another tournament we are watching they are playing for the other teams, and that's all happening in the present cricket. Identification for the players is very difficult, because in the older days every player has got identification in the team. This lovely shot, but unfortunately, oh my goodness, they're going to be a boundary. Yes, it does. Once it goes by unfortunate, but something happening is a fortunate for the batter, because after ball hitting the net, ball into the fence for 4 runs. Magnificent struck there from the batter Tanzim. Just have a look at that one in replay. Swinging that one. Once it looks like ball is going towards a declared area, look at that ball after hitting the net, ball into that boundary line, into that advertisement board, and the first boundary coming up here for Jolly Friends. And of course, Jolly Friends, the supporters started to cheer their batters. It's been outstanding cricketing stroke. It's not so easy to hit the bowlers like Isham. And quite interesting to see that Tanzim is just a little bit shuffled across the line of the delivery. That's why he managed to hit the ball down to square leg boundary for 4 runs. Now Imran and captain and Sadaqatullah from mid-off having some word with the bowler not to ball that line, because Tanzim is a very good striker of the ball. Now one fielder is situated in a square leg region, but there is a deep long on. The long off is there in a straighter version. Very interesting field set. After that slog shift of Tanzim, it's been a very interesting field set there. And now Imran asking that long off fielder coming towards a straight version, because there is no long on. Deep long off fielder have to come to deep long on. This time appeal Flum. Absolutely fantastic comeback. This is what the idea. If you see that Tanzim wanted to do here is that he wanted to hit down to deep long on, because there is long on is inside the ring, and is a plum. No doubt at all. Absolutely from shuffled across the line of the delivery. That's what happening in cricket. Because after seeing that field set encouragement for the batsman to go for the big shot in the long on region, because the mid on is up, there is no long on. So Tanzim wanted to hit that one in that direction. That's why he shuffled across the line, and he misses the ball completely from the bat, and finding himself right in front of a middle stump. And good decision there from umpire Iqbal is raising his finger. Absolutely good decision. And look at the reaction there from Isham. Absolutely good one. The perfect reaction from the bowler, and immediately after hitting the leg is appealing for umpire to raise your finger, and he got the reward for that. Good comeback here by the bowler. Sunny's batsman in is Ashraf. Ashraf will going to be the striker now after dismissal of Tanzim. Of course, after hitting a boundary, it looks like Tanzim will going to play a big innings for his team, but he's back into pavilion now. Isham back to his bowling mark. Right arm over the wicket balls. Swept that one. Obvious that is the call, but umpire Iqbal
How is that? It is a bat, it is not a leg, it's a bat, and bat which is involved, so that no question of leg before wicket, just a single here. 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Absolutely good piece of bowling there from Isham. It's not so easy when batsman hitting a boundary. Comeback is so important, and so far I think after that boundary, he came back very strongly with the wicket taking delivery, and almost one more wicket for him, but the last moment is a bat which is involved, so saving Ashraf from the leg before wicket. I request the midfielding team, please make it fast. And Isham again, right arm over the wicket balls. This time Ashok, terrific, absolutely terrific, right behind the line of the delivery. It was a classical cricketing stroke, isn't it? It's very, very nice to watch when Ashok is driving that kind of cricketing stroke, technically very sound, nicely behind the line of the ball with the full face of the bat. Got the single for that. After completion of over number first, equal battle is on. The wicket for Team Nazar, ninth block. At the same time, 7 valuable runs for Jolly Friends Bajal because the one boundary which is came from the bat of Tanzim. So 7, it's not a bad start. It's a very good start considering the fact that it was a evening. Time exactly 5 past 46, 47, 46 in fact. And I think under this condition, any score around 30 is going to be a good score. Just seeing the fact that Nazar ninth block defended at 29 runs very well in the previous match, and wait and see how well Jolly Friends will going to get runs here. And just like I mentioned about 30 plus, which is badly required for Jolly Friends if they wanted to win this semi-final. Again, the second over will going to start. The hero of the previous match, Shahil, brought into attack, bowling with a short run off, right arm over the wicket. Bowls, dries, lack of placement, but this was a sharp incoming delivery and ball which is came into the bowler, and there is no chance of any run. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. Yes, thank you. So 7 for the loss of 1 wicket. Again Shahil, all right arm over the wicket to Ashok. Balls. Ashok going for the blind shot. Absolutely blind shot, isn't it? Where it was never looks like he's going to be near to the pitch of the delivery, isn't it? Where he was standing, tried to throw his bat to the line, but without moving his front foot, because he's always a technical sound player. But in this particular delivery, just look at that one. He's away from the line of the delivery, but he missed it completely. Then wicketkeeper's fumble, but no question of any run. Much required dotted delivery. 2 dotted deliveries there from Shahil. He's always very impressive in his line and land, and bowling third time in this over. Right arm over the wicket, ball to Ashok. Ashok, lovely shot, beautifully. That was a flick of the wrist, comes into play. Down to mid wicket with and running hard, looking for the second. In comes a throw from the deep, and meantime batsman completed a couple of runs. Absolutely fantastic flick shot, isn't it? It's a very, very glorious to watch in the, whenever the batsman playing such kind of cricketing style. Just after roll of the wrist comes into play. Ball in the middle stump, nothing wrong with the line of the delivery, but a flick of the wrist which comes into play. And just look at that one in the replay. Flicks that one, just like a helicopter shot. And here is again this time driven firmly and after by the mid-wicket fielder. He's stopping the certain boundary for his team. They're coming back for the second. Chance of run out in the non-strikers end. Now umpire referring for the third umpire. Looks like the batsman is in trouble. Very good piece of fielding there by the squad. Like certainly it's going to be a boundary if he not able to stop that one. Off stop by the fielder. Just look at the throw, which is not in a good end. But wicketkeeper is a presence of mind. But we need to see whether going to be out or not out. If, of course, the supporters of Jolly Friends need to see there could be a green light. But at the same time, supporters of ninth block wanted to see the red light. But I think it's very difficult to see the green light because the batsman is struggling and is out of the crease. And out, which is a call from third umpire, and he's gone. Of course, there is no red light and green light for signaling out and not out. But everyone is hearing my voice. Whether Satish announcing out or not out. And it's out. Unfortunately, it's a good news. Not a good news here for the supporters of Jolly Friends, but of course, it's going to be a good news here for the supporters of ninth block. But all happening in cricket because Jolly Friends desperately wanted to get the runs. They never bother about the fall of wickets, but only they bother about the runs, which is they wanted to get in the stipulated 5 overs. At least the 30 plus runs wanted to get against the formidable bowling department of Nazar ninth block. Sahil so far looking pretty good. Bowling away from us. Right arm over the wicket to the new batter, Tazuddin.
Ashok, Tazuddin is a non-striker then. This time again Ashok drives that one again offside by the fielder, misfield. This time is the fielder is a little bit lazy, so that both the batters completed a couple of runs. So Ashok gets a couple of runs. This time Ashok is hitting the ball very well. It's a targeting towards the mid wicket again. That ball, which is might be the stoppable there for the fielder. Because of the misfield by the fielder, the batsman got an opportunity to come back for the second. And each and every run going to be very crucial in this last match of the day, number 2. And it's a 12 for the loss of 2 wicket. Of course, Sun will going to finish their duty from east to west very soon. It's not an early sunset. I think it's going to be a 6 to 6:15 to 6:20. It's going to be a good light condition, the month of February. But more than anything else, I think they wanted the quick work there from the fielding team, if they wanted to get a better light condition, because they're the one on the toss elected to field first. Sahil, right arm over the wicket again. This is the one area what Ashok is not so good, as once again he's not really able to get that one line properly. He's just wanted to play against the line. He was a very good player in the offside region, but this time he wanted to play there against the line. He misses it completely. Good comeback here by Sahil. 2 overs completed. After completion of over number 2, searching for the right track. It's a 12 for the loss of 2 wicket in the over number 2, which is completed. 3 overs remaining, and wait and see the projected score. The similar run rate, it's going to be a 30, just like I mentioned about the similar run rate. They will going to get the 30 runs, 30 ball 30 runs, but the only friends Bajal, they wanted more than that, and having Ashok and Tazuddin, the local hero, they will going to get the good runs here. And Tazuddin, as far as his potential is concerned, so far in this tournament is not that much of didn't got that much of runs, but he scored runs. That's very important. Not in the form of big shots like boundaries and sixes, but in this condition, of course, it's very hard to get the big shots. Only 19 boundaries on 20 boundaries which is scored, and only 11 sixes which is scored so far in the tournament. That shows the difficulty of hitting the ball. That is some lovely piece of bowling there from Imran, but batsman will going to get the single for that. That's why there's no appeal at all from the bowler. Bowler knows that the batsman got a bat onto that, so no question of asking for leg before wicket, rightly so. One more run added to total for Imran, for Tazuddin, and scored numbers on to 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Imran, right number 1 wicket. Again, Ashok, sensible batting, chance of run out, and good work there from Tasleel, but not good enough. Not good enough in dedication. Good backup there by Sadaqatullah. Is just running towards the ball to deny the second from the batter. But Tasleel has got a ball in his hand, returns the ball, but a wide throw coming from the fielder, so that both the batters managed to complete the single. 14 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Imran again bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Jason drives that one down, so wide is long on vision, but the protection has been given. No question of a second run, and a good fielder and experienced fielder there in the deep long on will go in to field the ball, and there is no chance of any run. Shouting is going on here. Is why you are waiting for that? Why you are waiting? They just return the ball. What is Isham is shouting towards his partner. It's a 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Imran again, right arm from the wicket, balls to Ashok drives that one. Straighten as a fielder, chance of run out in the non-strikers, and he's struggling and he's gone. Umpire raising his finger, but now he's asking for the third umpire. After Ashok is shocked that Iqbal is given out, then he is just questioning over the umpire. Then Iqbal is saying, don't worry man, you don't worry about that, I will go for the third umpire. We can see will it going to be out or not out, but it's definitely going to be a very very close one, because I don't think that Ashok is not really did a good job. He's not really drags the bat, but he wanted to put the bat into the line. That's the problem here. If he drags the ball, he drags the bat. If the bat is in the air, then it's going to be a problem. If it's a bat in the ground, it's definitely going to be safe. But it's going to be a very close one. Close one. I think is a short of. But we need to see the umpire decision, because third umpire Nazir Bajal will go into see whether the batsman is a short of crease or not. Wait for the umpire signal. But a very good work by the fielder in the delegation. If it is out, I think it's going to be a danger, and I think it's out, which is a call. Ashok just short of his crease. So he's just short of his crease, and as per the rules and regulation of cricket is concerned, even the on the line is also out, but the bat is not in the on the line as well. It was
before there is touching is that line, the work which is completed. Need to appreciate Iqbal for that. Big round of applause is required for Iqbal because he raises his finger. He told that you are out, but after Ashok is just questioning over the umpire's decision, then he's called for the third umpire. Of course, we'll get the third umpire to get the decision, but third umpire also has got evidence enough that it's going to be out. This is what the quality of umpiring is all about, isn't it? Experiences comes into play. 15 for the loss of 3 wicket. The over number 3 in progress. Imran. Right arm round the wicket. Tazuddin drives that one powerfully down to square leg region, but not more than a single. With that single cover, Namuzan to 16 for the loss of 3 wickets. Safwan is the batter. So came into middle. So man who got a best batsman award in the previous tournament, Netravati Trophy 2023, when Jolly Friends becomes a runner-up. And wait and see how Safwan will going to justify why he is the best batsman in that tournament. Imran bowls to Safwan. They love nice roll of the wrist comes into play to pick the single down to deep backward square leg region, but not more than a single in the negation. So runs are coming here for the team. Jolly Friends Bajal, but they wanted to run. They're not really bothered about how the runs are combined here. The 3 overs completed up completion of over number 3. It's a 17 for the loss of 3 wicket. Just under 6 runs per over. It's a better over compared by the previous 2 overs because there's 5 runs conceded by Imran in this particular over. And after winning the toss, Nazar, ninth block, winning the toss, elected to field first. And so far, the equal battle is on. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament, decider day of this cricket tournament of this prestigious YFC Trophy Season 2. And YFC Bajal, Nanthoor, Mangalore organizing this particular cricket tournament. And we start with some good matches tomorrow. And well done. Kalakate versus Mother India Buliar. The 2 teams will go into play their first match, so that I request all the teams please ready in a time. Please be reported before 8:15, and extra 2 matches to be played tomorrow. 9 matches to be played, so that your cooperation is much required to complete the matches in this particular final day and decider day of cricket tournament. 17 for the loss of 3 wicket, 2 overs remaining, and bowler brought into attack is the captain himself, Sahil, is bowling his second and last over. He's got wicket keeper behind the surface. Collectable chance of run out in the non-strikers, and but throw is a little bit wide, and that's why the batsman survived. There is a by call by umpire. The wicket keeper behind the stump fails to collect the ball, but opportunity which is created for the run out, but a throw which is of course, even the bowler is not in a good position to collect the throw from the wicketkeeper. Nothing wrong with the wicketkeeper throw, but the fact that Shahil is almost sitting in that area, not quite able to move quickly to the direction of the throw, and that's why both the batters completed that single. With that single, scored numbers on 18 for the loss of 3 wicket. In the over number 4 is in progress. Sahil so far has got outstanding tournament from the ball, but job which is not yet over. They need to bowl last and final time in this day number 2 to get his team into very good position of winning this match. Sahil is a very experienced and of course a very talented bowler so far in this tournament. He's been a very economical and wicket taking bowler, bowling right arm over the wicket to the right hand batsman Tazuddin. Tazuddin doesn't lofted that one just over the top of the well, running out a deep cover point and chance of a boundary there, but a good piece of fielding there by the fielder. What could be a certain boundary there? The fielder has got a very good run, just moving from deep cover point to deep extra cover region. When the ball is just looks like going to cross the boundary line, he got a fantastic timing of putting his hand to the direction of the ball. Just look at that one effort at the fielder. Almost looks like ball going in the direction of the gap in the extra cover region. And look at that for that from the fielder. Outstanding. He's just stopping a couple of runs for this team. And with that couple of runs, scored Namuzan to 20 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress, 4 in progress. Every kind of battle is on here, and everyone is very interested, and more than anything else, the very interested here for the one cow which is entered into the ground, and that cow is also very interested and enjoying the game of cricket, and 20 for the loss of 3 wicket. So bowler Safwan, correction Sahil, the batter Tazuddin.
We're going to face next delivery from Sahil. Third time in this over. Going for the reverse sweep, missing it completely. Much required dotted delivery. Sahil, just I mentioned earlier, he's been a terrific bowler. So far, 3 balls bowled, just 3 runs conceded. 3 balls remaining in the innings. The last but 1 over is going on. It's a 4th over is in progress. Still some fielding changes is going on. And Sadakatullah coming towards a short gully revision from backward point revision as Sahil right arm over the wicket to Tazuddin. Beautifully bowled again. That ball is just going to miss the leg stump. There's no appeal coming from wicketkeeper behind the stump as well as from the bowler, because of that ball is got an inside edge of the bat. No, it's a by call by umpire. Nothing is happened. Nothing is happened. Oh, rightly so. It might be the ball is missing everything while hitting the boot of wicketkeeper behind the stump, and that's why umpire rightly so called it a bye. So with that extra scoreboard numbers on to 21 for the loss of 3 wicket. Fantastic bowling performance, because the deviation what Sahil is getting has been a very unjudgeable. Very difficult for the batsman to judge when he bowled that line. Outstanding bowling performance there from Sahil. Right up over the wicket, balls Safan this time and chip that one nicely round to deep mid wicket reach, and they're running hard looking for the second. In comes the throw. Isham is a bowler. Isham is a fielder trying for the throw, but it's a wide throw. It's a wide throw as well as it's a high throw, but the end of the throw, it's a long distance. As far as the dimension of this cricket ground is concerned, the mid wicket is the longest part, and look at the Isham is trying for the run out in the striker's end, and that's what the batsman is survived. Safan already given up. He thought that it might be all over for him because of he's saying the Isham is charging to the ball, but he survived from the run out. 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Right arm over the wicket. This time Safan tries that one. Wise trippy run down to deep. Oh, good stop. Absolutely good stop. And they're coming back to the third run as well. And it's going to be a chance of round, and it's gone. Safan is gone. And his diving effort not enough for him to save the run out. But look at the effort there from the fielder. The long on fielder just is in the air and pulling the ball inside the boundary, and before he going to cross the boundary line. Absolutely perfect work there from the fielder in the deep long on. But Isham, look at the Isham there. This time he's not missing the opportunity. Returns the ball towards a non-striker's end, the bowler's end. It's one of the best end to throw, and one of the shortest part of for the fielder to return the ball, and got the result for that. 25 for the loss of 4 wicket. 4 overs completed. Good over ball by Sahil. 6 runs coming from that over, and after completion of over number 4, it's a 25 for the loss of 4 wicket. Team Jolly Friends Bajal against team 9th block Nazar 9th block. So last over remaining. I request the fielding team to make it past time. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Uzip is the bowler, and outstanding in the last over in the previous match, and again he's outstanding in the first ball itself. He's got a wicket, and Tazuddin looks like he couldn't manage to complete that single, but he's not happy with his partner, isn't it? Because he's back in the pavilion. Unes is back in the pavilion. No, Tazuddin is back in the pavilion in the form of run out to try to take the single, and that's desperation there from Tazuddin, because Tazuddin is a danger man as far as the final over is concerned, because he can deliver some big shot in the final over. But against the bowling of Uzep, it's not so easy, and he's a very difficult bowler as far as any batsman, because he's bowling very tidy line and length along the carpet with the pace, and it's not always going to be difficult for the batter to get the big shots.
And Nausha is the new batter in and is going to bowl right arm over the wicket. Right arm over the wicket, going for the sweep shot, and Tasleil make a misfield. Each and every run going to be very costly here, isn't it? If we're losing by one run and 2 runs is going to be frustration. All this misfield will going to comes into picture. Why not you field well? Because if you field well, we're going to win the match. That's all question is raising after the results. That's why it's so important in cricket, isn't it? And conceding some runs in the misfield is going to be a costly, especially in playing this format of games like 5 overs, low scoring game. Every runs is going to be very important. 26 for the loss of 5 wicket. And Jolly Friends, they're playing with their home condition. And a lot of shouting is going in the and, ninth block players because the field set what is made by the captain for in this over, Uzev. Right arm over the wicket, balls. This time going for the big drive, lovely delivery indeed, fantastic one, clean him up with the beauty. Uzep, what a fantastic delivery. Everyone, no one knows that what really happened. But after seeing the replay, I will going to explain what really happened. Or drags the ball. He drags the ball into the stumps, and that's what happening. He going for the expansive off drive, got the inside edge of the bat, and ball hits the stumps, and it's a little bit disappointment finish for the batter because that ball is outside and off temper. And batsman going for the big shot, big inside edge of the bat and hitting the stumps. 26 for the loss of 6 wicket. Uzep been good. Uzep looking so good in this last and final over. So Mubir is a new batsman in with the jersey number 33. Experienced campaigner who can bat down in the order. Even though he's a number 8 batter, but he can contribute from the bat. But it's outstanding over is continuing here. 1 run and a wicket in 3 balls. Last 3 balls remaining. Right arm over the wicket, Uzeb balls. Muzeb, nice fap. That one to fine leg region, but not more than a single. Tasleil, the fieldsman there in the short fine leg region, will go into field the ball. The ample time for the batter to complete the single. With that single score numbers under 27 for the loss of 6 wicket in last over is in progress. Last 2 deliveries remaining. And Nausha is back on strike now. And wait and see how many runs they will going to score in their 2 deliveries. The equal battle is on between these 2 teams. Jolly Friends, Bajal looks like they got enough runs. And 2 deliveries, any runs, which is going to be a bonus as again swept that one very nicely. Again, that's more than a single. Both the batters are doing a right job. They know exactly in this condition, in this evening condition, the 30 plus runs is always going to be a good score. Now last delivery remaining. And wait and see what Mubir will going to do here in the last delivery. And bowler Uzif will go into ball that last ball. Right arm over the wicket. Mubir going for the big shot is gone. Second wicket. And Uzif is celebrating his wicket in his own style by just putting his finger up and saying that this is the one delivery I want to ball to you and I want to get you. And that was a fantastic delivery there from Uzif. Just look at that one. Ball just passing between the legs. Batsman across the line of the delivery. Right to swing that one. Miss it completely. And you miss high hit what Uzipis did. 2 wickets in that over. Outstanding bowling spell. 1 over no man and 3 runs and 2 wickets. So 29 which is required for the place in the semi-final for team Nazar 9th block in their stipulated 6 overs. And that means now you can see in the screen that 29 required from 30 balls. And it's going to be more interesting.
So well, Gopi, final time today. I would like to invite you because today is a different day. The all matches is really a very good one, and we are hoping this match will going to finish with the one more thriller, and for the day number 2, and definitely it's going to be a thriller because the kind of runs which is target set by the team. Jolly Friends for ninth block. Looks like Gopi, the match is definitely going to be more interesting because 29 to get from 30 balls. And just seeing the fact that Jolly Friends also got some good bowling department, and even ninth blocks has also got some batting department. It's definitely going to be a great battle between two good teams, and straight away signal coming from umpire Arif Jokate. And it's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you so much. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर अंतिम सत्र यहाँ पर शुरू होता हुआ, और जैसा कि आपने फरमाया एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड लास्ट सेशन ऑफ द डे 2 ऑफ वाईएफसी ट्रॉफी 2023. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नजर नाइन्थ ब्लॉक के लिए, तो इस वक्त उन्हें बनाने रन्स 29 5 ओवर में, निर्धारित 5 ओवर में, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई. तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार फारूक दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ट्राई करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े. इस वक्त बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद पैरों पर टकराई थी, और जब तक फॉलो थ्रू में गेंदबाज गेंद पर लपके शॉर्ट कवर पर रन्स इस बीच मिला. बल्लेबाज को एक और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. नजर नाइन्थ ब्लॉक का एक रन 90 रन से नुकसान के 29 रनों के लक्ष्य तक अगर पहुंचता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन शुरुआत नजर नाइन्थ ब्लॉक के बल्लेबाजों को देना होगा. और जहाँ तक जॉली फ्रेंड्स का सवाल है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा अगर उन्हें 28 रनों के अंदर नजर नाइन्थ ब्लॉक के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था, तो ऊपर विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा. इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर गेंद हो चुकी है 4 रनों के लिए. अगर थोड़ा सा भी गेंद स्क्वायर जाती तो सिर्फ 1 रन बल्लेबाज के पक्ष में आता था, लेकिन इस बार गेंद सीधी रफ्तार में निकली. जो फ्लेक्स वहां पर है, जो बोर्ड वहां पर लगा हुआ है सीमा रेखा के पास, और जो नेट है उसके बीच का जो खाली क्षेत्र है, उस खाली क्षेत्र से गेंद होते हुए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त निहाल के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. तो जहां तक सवाल है 5 रन बन चुके हैं, और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से. एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार चट गया, इनफील्ड क्लियर करते हुए स्कोर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए. कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर द बैट्समैन, और निहाल इस वक्त अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं. His intentions is pretty clear. Just go over the top, and he is doing the right thing at this situation. It's 9 without loss in the first over. और एक पॉजिटिव स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, धनात्मक शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं निहाल 9 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर प्रगति पर. नाइन्थ ब्लॉक का रन 9 इस वक्त हो चुका है, 9 रन हो चुके हैं. 9वें ब्लॉक का रन 9 हो चुका है. इस वक्त गेंद को छाला खूबसूरती के साथ लंगोन पर 1 रन मिलेगा, और 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा. इस बार गेंद को ऑफ द टोज हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर स्कूप किया था, और गेंद जब तक फील्ड हो लंगोन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 4 गेंदे 10 रन, और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है नजर नाइन्थ ब्लॉक का. 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज फारूक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन. ओह बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 1 और रन आउट का मौका. और यहाँ पर एक बार सोचा कि गेंद को स्ट्राइकर रन की ओर थ्रो किया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अब तक क्रीज पर पहुंचे नहीं है, घूमकर विकेटों पर शाइन किया. और यहाँ पर देखिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग, अनएक्सपेक्टेड बाउंस अंतिम क्षण पर उठी थी. देखिए यहाँ पर I think he made it, लेकिन अंतिम क्षण पर देखना पड़ेगा actually what was happened there. Absolutely, Gopi. It's a little bit looks like a comedy of error. Once it's going to be an absence of mind from the bowler, he thought might be it's a chance of run out in the strikers end, but immediately realizing that the batsman is running towards the non-strikers end, he tried to hit the stump. Of course, he hits the stump, but might be too late. It's too late, and batsman is safe and not out, which is a call from umpire. But altogether, Gopi, it's a little bit comedy of error. Good piece of fielding by the fielder, but little bit absence of mind from the bowler. बिल्कुल, इस बार
गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद अंदाजा नहीं लगा सके। पहले उन्होंने सोचा कि स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज पहुंचे थे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने भापा कि वहां पर स्ट्राइकर एंड पर उनकी और उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी बल्लेबाज नहीं पहुंचे हुए, तो घूमकर उन्होंने थ्रो किया। स्टंप्सों पर निशाना तो लगा जरूर, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। सो आफ्टर फर्स्ट ओवर 13 रन स्कोर्ड बाय नजर 9th ब्लॉक, और निस्संदेह सतीश यहां पर एक बेहतर शुरुआत 29 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, अगर 5 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप 13 रन पहले ओवर में बनाते हैं तो निस्संदेह किसी भी दृष्टिकोण से यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कहलाती है, जो इस वक्त नजर 9th ब्लॉक में की है पहले ओवर में। एब्सोल्युटली गोपी, आपकी लैंग्वेज में कहे तो धनात्मक सोच, व्हाट इज अ पॉजिटिव थॉट फ्रॉम निहाल, and absolutely fantastic, isn't it, Gopi? It's a positive the thought in the sense, Gopi, is hitting 2 boundaries. Absolutely fantastic, because it's really required, Gopi, because when you're playing in the power play overs, it's one of the perfect opportunity for the batters, opening batters, to grab the opportunity of that fielding restriction, and the wrist work is what we're talking about, what Nihali has got. Absolutely magnificent to watch. 1 towards of square leg, 1 towards a deep cow point. It's an absolutely extraordinary batting performance in the first over, and they're in a right track of winning this match. But still, Gopi, everybody knows that cricket is an unpredictable game. If you wanted to be an unpredictable game, needed 1 good over here for the team Jolly Friends. Exactly, सतीश, एक बेहतर ओवर की जरूरत है जॉली फ्रेंड्स को इस मैच में वापस आने के लिए। इस बीच ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ, लंबा पर मौका, लेकिन वहां पर नहीं, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और ओवर थ्रो, और इस बार बल्लेबाज 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। तीसरा रन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दूसरा रन पूर्ण करने के बाद बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 15 रन बन चुके हैं। और जॉल इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाज जान चुके हैं पॉजिटिव शुरुआत ही उन्हें इस वक्त अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। खासकर पावर प्ले का फायदा उठाना उन्हें जरूरी है, और वो अपने इस योजना को पूरी तरह कार्यगत यहां पर करते हुए पावर प्ले ओवर्स में। और गेंदबाज इस वक्त मुबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव कर दिया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची, गेंद डीप मिड विकेट पर जब तक फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023, और इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला के दूसरे दिन का अंतिम मैच, 7वां और अंतिम मैच यहाँ पर प्रगति पर, और विजय के लिए इस वक्त मुकाबला यहाँ पर जारी है नजर 9th ब्लॉक और जॉली फ्रेंड्स बजाल के बीच में। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज मुबीर इस वक्त अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर आ चुके हैं निहाल, जो अब तक 2 चौके झड़ चुके हैं, खासकर पावर प्ले का फायदा लगभग वो उठा चुके हैं, और जो 2 गेंदे इस वक्त बचे, 4 गेंदे इस वक्त बचे हुए पावर प्ले खत्म होने में। उन 4 गेंदों में देखना है कि निहाल किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं, और मुबीर एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार निहाल के लिए ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, अपने हल्के से अपने बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया ऑफ द टोज शॉट फाइनल की दिशा में, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस, दे आर प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग नाइसली, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 29 in 5 overs. They are looking in a commanding situation, and the situation they are 17 without loss in the over number 2 in progress. ये गेंद उछालना चाहा, absolutely fantastic one from मुबीर, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, लेकिन बिल्कुल along the ground, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैदान पर रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी है, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ शाम के 6:19 यहाँ पर बच चुके हैं, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी इस वक्त कम होती हुई, और बिल्कुल लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए एक पर्याप्त रोशनी इस वक्त अभी भी इस मैदान पर मौजूद है, और इस रोशनी तले आज का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ जॉली फ्रेंड्स बजाल और नजर 9th ब्लॉक के बीच। गेंदबाज मुबीर इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस पावर प्ले खत्म होने के पहले के अंतिम गेंद का, तो इस वक्त मुबीर गेंदबाजी करेंगे निहाल के लिए,
अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट मिसिंग आउट साथ ही ऑफ स्टंप, फुलर लेग गेंद थे। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन बन चुके, 18 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। और सतीश इस ओवर में भी कुछ खास गेंदबाज असर नहीं कर पाए और लेकिन पहले ओवर के मुकाबले ये ओवर बेहतर रहा जिसमें 5 रन मुबीन ने प्रदान किए। अब मैं समझता हूँ कम बैक करने के लिए जॉली फ्रेंड्स को बचे हुए 3 ओवर में एक घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। Exactly, Gopi. That might be the game plan, isn't it? After getting a good runs in the first over of the power play, maybe the game plan of these two batters is not to throw the wicket because they got a very good start and they need to continue that start as well. Continue that start which is they got in the first over. 18 ball and 11 runs required, Gopi. Still, I think the match not completed and opportunity is still there for Jolly Friends. They're just like you're mentioning about one good over is badly required. And needed one good over, Gopi, and that's why they brought one good bowler so far in this tournament. He's got a fantastic from the ball, and breakthrough is so important, Gopi, for Jolly Friends. If they wanted to back in this game, they needed one breakthrough. At the same time, one economical over is badly required. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर ब्रेक थ्रू की जरूरत है और एक बेहतरीन ओवर भी इस वक्त चाहिए जॉली फ्रेंड्स को कम बैक करने के लिए इस मैच में, और उस कोशिश में हैरिस को इस वक्त गेंदबाजी पर लगाया गया है। लेकिन हैरिस इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं वाइड के साथ और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन। कल सुबह का पहला मैच 8:30 पर खेला जाएगा। वेल्डन कल्लाकट्टे और मदर इंडिया बोलियार के बीच 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पर सर्व खिलाड़ियों को, और 9 मैचेस कल खेले जाने हैं। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ बल्लेबाज संतोष 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन आरंभिक शुरुआत यहां पर दे चुके हैं तस्लील और निहाल इस वक्त काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हैरिस इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से एक हाथ से गेंद को इस वक्त खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए शॉर्ट बैन पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के, और सिर्फ 8 रनों की दरकार इस वक्त विजय के लिए। अपनी ओर के अगली गेंद लेकर गेंदबाज हैरिस इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड, लेकिन ओह फंबल देयर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका हो सकता है दूसरा रन लेने का, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ संतुष्ट होने में सफल। वेल्डन कल्लाकट्टे ಹಾಗೂ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು 8:15ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 8:30ರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ವೆಲ್ಡನ್ ಕಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು। ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್ and now the scoreboard is now moving up to 23 now, just 6 more runs now they have to score for victory। और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। तस्लील आउट होकर पेविलियन वापस, रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर कराते हुए, और आखिरकार यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं हुई अंपायर को। देखिए किस तरीके से हुआ था, बैक लेग पर गेंद इस वक्त टकराई थी अंतिम क्षण में, और आखिरकार यह विकेट गिर चुका है। हालांकि गेंद फ्रंट लेग पर ही टकराई थी, लेकिन काफी पीछे ले गए थे अपने फ्रंट लेग को वो, और बिल्कुल उनका पैर मिडल स्टंप के सामने रहा, और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट यहां पर घोषित करने में। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 23 for the loss of 1 wicket, and just 6 more runs they have to score for victory in 2+ overs। और अंतिम गेंद बाकी, 13 balls remaining, 6 more runs now they have to score for victory। Imran, the number 3 batsman, is now comes out to the middle for नजर 9th block, और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 1 रन के साथ। द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 24 for the loss of 1 wicket। 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 3 overs completed, it's 24 for the loss of 1 wicket and just 5 more runs नजर 9th block have to score in remaining 12 balls। और समीकरण बिल्कुल आसान इस वक्त दिखाई देता हुआ नजर 9th ब्लॉक के लिए। तो श्रृंखला का दूसरा दिन, टूर्नामेंट का दूसरा दिन, रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। कल इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला का अंतिम दिन, और कल तीसरे और अंतिम दिन में हम
उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि और भी रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल कुल मिलाकर 9 मैचेस खेले जाएंगे और पहला मैच कल सुबह शुरू होगा, सुबह ठीक 8:30 बजे 8:30 को वेल्टन कला कट्टे और मदर इंडिया बोलियार के बीच। और यहाँ पर 2 ओवर का खेल बाकी और 5 रन चाहिए। पहली गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। 1 रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए 22 के रूप में, और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहाँ पर चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और 11 गेंदें बाकी। रन्स इस वक्त चाहिए सिर्फ 4 विजय के लिए, और वापसी करने के लिए इस वक्त अब ऐसा कहना पड़ेगा जॉली फ्रेंड्स बजाल के गेंदबाजों को चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी वापसी करने के लिए। तो लगभग अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद, 10 गेंदें बाकी, रन से चाहिए सिर्फ 4। 4 रिक्वायर्ड ऑफ 10 डिलीवरीज। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर उछालना चाहे, एक बार फिर से विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटकाए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 बॉल्स। तो लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ, और ऐसा कहना पड़ेगा शाम के 6:27 इस वक्त बच चुके हैं, और यहाँ पर आज का अंतिम मैच इस वक्त प्रगति पर। अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए गेंदबाज इस वक्त तैयार, तंजीम गेंदबाजी करते, फुल टॉस, गेंद को खेला, सीधे पहुंचे कवर पॉइंट पर, रिवर्स शॉट खेला था लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, और इसी के साथ 1 विकेट यहां पर गिर चुका है। तो किस तरीके से शॉट को खेला था मॉनिटर पर एक बार देखा जाए तो यहाँ पर देखिए लेग स्टंप, लेग साइड पर आराम से गेंद को डिस्पैच कर सकते हैं अगर स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक खेलते तो, लेकिन इस बार उन्होंने खेला विद अ रिवर्स शॉट, विद अ रिवर्स बैट, और इस बीच गेंद तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए, और आसानी के साथ गेंद पहुंची ऑफ साइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर के हाथों में। 1 विकेट गिर चुका है, 8 गेंदें बाकी हैं, 4 रन चाहिए। 4 रन टू गेट इन रिमेनिंग 80 डिलीवरीज। नए बल्लेबाज नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, मुब्बा इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद टफ स्कूप, गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जस्ट 3 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 7 बॉल्स। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, 1 रन नहीं मिलेगा, यहां पर विकेट गिर चुका है। तो जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास और विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। अब अंतिम ओवर बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए। जस्ट 3 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग लास्ट ओवर। 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, तो यहाँ पर इस वक्त 3 रन बनाने, तो सतीश यहाँ पर अंधेरा सा छाता हुआ इस वक्त, तो 3 रन बनाने के लिए इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर, किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनानी होगी। हालांकि मैं समझता हूँ, मैं कहूँगा यह चमत्कारी गेंदबाजी इस मैच में जॉली फ्रेंड्स को अब इस अंतिम ओवर में वापस ला सकती है। Absolutely, but what could be an easy victory for 9th block? They're themselves making a little bit mistake here, isn't it? You can't underestimate cricket, and a small leakage can sink a big ship. If you underestimate, if a 3 runs to get from 6 ball, if he takes it lightly, they will definitely go into big trouble. And that's what is really important for the team. Imran, of course, is a very experienced captain. You know exactly, because you know what the game is all about, the cricket is all about. Not to underestimate. Getting a 3 runs in 6 balls, of course, is very easy. And playing 2-3 dot balls in the beginning, it makes a little bit difficult for team 9 block. बिल्कुल सतीश, पहले 2-3 गेंद अगर लगातार डॉट गेंद गिरते हैं तो यहाँ पर दबाव आ सकता है, लेकिन पहली गेंद पर इस गेंद को, इस मैच को समाप्त कर चुके चौके के साथ बल्लेबाज। और इसी के साथ नजर 9th block are through to the semi-final of this competition, defeating Jolly Friends Bajal and by 7 wickets with the 5 balls to spare। तो सब मैचेस यहाँ पर आज समाप्त हो चुके हैं। तो सतीश, बेहतर दिन रहा कल के मुकाबले आज के मैचेस बेहतर रहे, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि कल श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन है, और कल भी एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
Absolutely, Gopi. Not only us, but even all spectators wanted to be the better day tomorrow because there is a decider day and final day of this cricket tournament. And wait and see which team will going to become the champions of this prestigious cricket tournament. But first of all, it's congratulations for the team. Nazar ninth block for their outstanding performance and they grab the places in the semi-final and wait and see which team will going to get the place which team will going to get the place in the semi-final for tomorrow's match. Just like we mentioned earlier, 9 matches to be played tomorrow. And the first match will be played between Weldon Calicut versus Mother India Boliar. The time which is given for them is 8:30. And that means they need to report 8:15 a.m. in the morning, and so that we need to complete that 9 matches before the dark. So thank you very much for each and everyone for your support, and looking forward the same support from all the spectators for the final day of cricket tournament as well. Now it's a time to announce the man of the match of the quarter-final. It goes to the one who really bowled magnificently in the last over. And throughout the tournament, he bowled very well the last over, the very crucial over. And it's Uzaif are the man of the match for his fantastic bowling performance. And I request Uzaif to come and collect your man of the match award from our chief guest. Thank you very much. Congratulations for the man of the match winner. And I request our organizers, Naushad will go into. I request Naushad, the manager of YFC Bajal, will go into present this man of the match award for Uzaif for his outstanding performance from the ball magnificently, and responsible for their team for the victory. Congratulations! Thank you very much. Naushad. And that's it from the day number 2 of this prestigious cricket tournament. From the commentary box, myself, Satish Salyan in English, Master Gopi in Hindi, saying goodbye. See you tomorrow, and tomorrow morning exactly at 8:30 a.m. Till then, we are saying goodbye. Thank you. Thanks a lot. For recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel